Hello friends, let's talk about this animation over here. Super nice. ये चीज आला आला. The first thing is the timing. I guess the timing could be better. तो अभी क्या हो रहा है कि वो इस पोज में आ रहा है और अचानक ही एक्शन शुरू हो गया. तो तुम इसको क्या कर सकते हो, लाइक वो यूं आया, नेक्स्ट कैमरा थोड़ा सा रुका और उसके बाद एक्शन किया. तो टाइमिंग वाइज हम लोग उसको थोड़ा सा इम्प्रूव कर सकते हैं इस तरह से. उसके बाद तुम्हारी ओवरऑल टाइमिंग बहुत अच्छी नजर आ रही है. लाइक इफ वी सी द बीट्स दे आर लाइक ये टाइमिंग तुम्हारी बहुत अच्छी है एक्शंस की. इवन टाइमिंग नहीं है, विच इज गुड थिंग. तो ओवरऑल अगर फ्रेजिंग वाइज और टाइमिंग वाइज देखा जाए तुम्हारा शॉट गुड है. अब हम बात करते हैं इसके पोजेस की. तुमने पोजेस कैसे बनाए उनकी डबल चेक करते हैं. लाइक दिस पोज इज टू सिमेट्रिकल, लाइक everything is too symmetrical. Maybe you can bring this leg front and back. इसकी सिमेट्री को तुम ब्रेक करने की कोशिश करो a little bit. ठीक है. इसका एक्सप्रेशन सिमेट्रिकल है, इसकी बॉडी सिमेट्रिकल है, एवरीथिंग इज टोटल सिमेट्रिकल. ओके, वी कैन इम्प्रूव दैट पोज. यू हैव नाइस फ्लो ओवर हेयर. उसके बाद इस पोज में हम लोग चले जाते हैं. इस पोज में मुझे लगता है कि उसकी एल्बोज थोड़ी बाहर आ सकती हैं और इस पोज को थोड़ा सा बेहतर किया जा सकता है सिल्हूट वाइज. अभी उसकी जो सिल्हूट है वो क्लियर नहीं है, तो मे बी यू कैन ब्रिंग दीज एल्बोज आउट. नेक्स्ट पोज इज दिस वन. दिस वन इज वर्किंग सुपर फाइन एंड लाइक यू हैव वेरी नाइस फ्लो ओवर हेयर. ये जो लाइंस जा रही हैं, आई रियली लाइक दैट. और उसके बाद आई विल वर्क ऑन दिस हैंड पोज. दिस हैंड पोज लुक लाइक इट इज अ लिटिल लाइक टू ट्विस्टी. तो इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं. ये जो हैंड पोज है इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हो. इसकी फिंगर्स वगैरह को तुम बेहतर बना सकते हो यहाँ पे. तो इसकी जो ओवरऑल फिंगर्स हैं उनकी शेप में भी कुछ यूं होगी. इसी तरह फ्रंट हैंड है, उसकी फिंगर्स की पोज को, उसकी जो ओवरऑल फील है उसको बेहतर किया जा सकता है. अभी दे आर लाइक दिस, बट इनका ओवरऑल फ्लो तुम बेहतर कर सकते हो. यू कैन ट्राई डिफरेंट लाइक पोज, गुड पोज विद बेटर सिल्हूट. अभी फिंगर्स की जो सिल्हूट है वो हाइड हो रही है यहाँ पे. रियली ट्राई टू क्लियर दैट पोज. नेक्स्ट पोज, आई रियली लाइक दिस सेक्शन, ब्यूटीफुल. इस पोज में कैरेक्टर थोड़ा सा बैलेंस आउट है इसका, इसको बेहतर किया जा सकता है. इसको थोड़ा सा पीछे ले आओ. और इसके अलावा जो आर्म्स हैं उनकी सिल्हूट क्लियर नहीं है, उसको तुम बेहतर कर सकते हो. तो मे बी इसकी आर्म कुछ यूं आएगी इधर, और इसकी ये वाला फुट है, इट इज ओके. अब हम इस पोज के बारे में बात करते हैं. इस पोज में चीजें बहुत प्यारी है. लाइक दिस लेग पोज इज सुपर नाइस. दिस ओवरऑल लाइक दिस फ्लो ऑफ द बॉडी इज सुपर नाइस. इसमें सबसे पहले तो आई डायरेक्शन को तुम अच्छा कर सकते हो. उसके बाद इसकी जो आर्म है, यू कैन रियली ब्रिंग दिस आर्म ओवर हेयर मे बी इन दिस एरिया. और जो फ्रंट आर्म है मे बी इसको तुम यहाँ पे लेके आ सकते हो. ओके, एंड द हेड इज देयर. ओवरऑल दिस पोज इज सुपर नाइस. इसको थोड़ा सा ट्विक कर लो. अब हम बात करते हैं कि ओवरऑल इन पोजेस के दरमियान जो ट्रांजिशन है वो कैसी होनी चाहिए. तो आइए उसके बारे में बात करते हैं. ओके, लेट्स टॉक अबाउट दिस चंक, this movement, overall movement from this pose to that pose. तो इसमें ओवरऑल हम अगर गौर करें तो एवरीथिंग इज मूविंग इन सिमेट्रिकल मैनर. ये जो आर्म है इनकी जो स्पेसिंग है इट इज टू बिग. इसको शोल्डर को इन्वॉल्व नहीं किया आपने, तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको सिमेट्री को ब्रेक कर सकते हैं बाय जस्ट लीडिंग वन थिंग फर्स्ट एंड देन अदर थिंग विल फॉलो. तो इंस्टेड ऑफ के बोथ आर्म दे मूव लाइक इन अ सेम फ्रेम, आप क्या कर सकते हो, ऑफसेट डाल सकते हो मे बी 1 और 2 फ्रेम का. तो उसमें क्या फ़र्क पड़ेगा कि आपकी एक आर्म जल्दी जाएगी और दूसरी बाद में आएगी, तो वो हेल्प करेगी सिमेट्री को ब्रेक करने में. तो यहाँ पे जैसे आपकी यहाँ से पोज से हम लोग चले गए एंटिसिपेशन में. तो यहाँ पे यूज द लीड एंड फॉलो रूल. जस्ट लीड विद वन थिंग एंड देन अदर थिंग विल फॉलो दैट. और हम इस एंटिक में चले जाएंगे. यहाँ पे आप अच्छा सा पोज बना लें और उसके बाद अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई कि क्या लीड करेगा क्या फॉलो करेगा. तो उसकी बेस पे हम लोग नेक्स्ट पोज में जाएंगे. द नेक्स्ट पोज इज ओवर हेयर. उसके दरमियान हमें आइडेंटिफाई करना है कि उसकी हिप कैसे मूव कर रही थी, क्या चीज़ लीड कर रही थी. मे बी ओवर हेयर द एल्बो विल लीड एंड अच्छा, लीड एंड फॉलो में हम ऑपोजिट एक्शन को हमेशा माइंड में रखते हैं. इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि कोई एक चीज़ जब ऊपर की तरफ मूव करती है तो हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम थोड़ा सा नीचे की तरफ मूव कर सकते हैं, तो हमें ऑपोजिट एक्शन मिल जाता है. लाइक ओवर हेयर
you can just maybe this arm will move first and then this arm will maybe come from down there and then it will come up. तो हमें आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको हम लोग थोड़ा सा रोक सकते हैं या उसको ऑपोजिट एक्शन दे सकते हैं. अभी हर चीज़ ऊपर की तरफ जा रही है एट द सेम टाइम. यहाँ पे हम लोग एसिमेट्री इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं. अगेन ट्राई टू ऑफसेट डिफरेंट बॉडी पार्ट्स विद ईच अदर. मे बी इसकी आर्म जो है वो पहले चली जाए, मे बी उसका हेड पहले मूव करे, उसके बाद सेकंड पे उसकी आर्म मूव करे, फिर थर्ड में उसकी सेकंड आर्म मूव करे, और नंबर 3 पे मे बी उसकी हिप है, 4. इस तरह यू कैन जस्ट नंबर दैट थिंग एंड देन ट्राई टू लीड दैट पार्ट फर्स्ट एंड देन अदर थिंग विल फॉलो दैट. यहाँ पे आपकी आर्क्स बेहतर सकती है. लाइक दिस गाय इट कम्स अप देयर एंड देन यहाँ पे इसकी आर्म स्टक हो गई है और उसके बाद यहाँ पे आ जाती है और यहाँ पे चली गई. और इसकी ओवरऑल स्पेसिंग को आप अच्छा कर सकते हो. लाइक इट शुड बी अ नाइस फ्लो फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर पोजीशन. राइट नो इट इज लाइक स्टकिंग देयर फॉर सम फ्रेम एंड देन मूव सडनली. तो हमेशा स्पेसिंग का हमेशा ख्याल रखो. यू हैव ब्यूटीफुल फ्लो ओवर हेयर. जस्ट यहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, ये जो ओवरऑल आपकी रिस्ट है ये ब्रेक हो रही है. सेम फॉर दिस गाय. तो इसको हम बेहतर कर सकते हैं, इस पोज को बेहतर कर सकते हैं. लाइक इट इज़ आल्सो टू लाइक साइड वेज. यहाँ पे आर्म जैसे उल्टी हो गई, लाइक इट इज़ ब्रेकिंग. तो मे बी अगर आप आर्म को क्योंकि ऊपर से नीचे लेके आ रहे हो तो आप इसको यूं में भी कर सकते हो. लाइक इट्स एल्बो विल लीड द एक्शन एंड देन द रिस्ट विल फॉलो दैट. सेम ओवर हेयर, ऑफसेटिंग एंड ऑल दैट. यहाँ पे एल्बो बाहर आ जाएगी, वही चीज़ सेम बात हमने जो पहले की है. और यहाँ पे maybe you can vibrate a little bit because there is anticipation over here. उसके बाद उसने big action लेना है तो यहाँ पे कुछ indication होनी चाहिए कि कौन सी चीज़ ली. Like over here it is beautiful because you lead with the body, the head is staying there. It is very nice thing because you always try to do that. Like एक बॉडी पार्ट लीड करेगा, दूसरा फॉलो करेगा. लेकिन अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, एक ही फ्रेम में बॉडी मूव कर रही है बहुत तेज़ी से. तो यहाँ पे ईज आउट की फीलिंग लेके आ सकते हो. Maybe 2 or 3 frames you can just ease out from that one. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है उसका इमोशन ड्राइव करेगा मोशन को. तो हमेशा हम एक और काम ये कर सकते हैं कि हम इमोशन से चीज़ें लीड कर सकते हैं. तो इमोशन कैन ड्राइव एवरीथिंग. लाइक सबसे पहले सबसे नंबर 1 पे क्या हो, इमोशन चेंज हो, उसका इमोशन चेंज हो, उसके बाद उसकी बॉडी मूवमेंट आएगी. इमोशन से लीड करते हैं, फिर उसका एक बॉडी पार्ट मूव करेगा, फिर दूसरा तीसरा, ऐसे हम लोग थोड़ी सी ऑफसेटिंग के साथ हम चीज़ों को शुरू करते हैं. ओवर हेयर द स्पेसिंग इज़ टू ह्यूज. और यहाँ पे आप में भी इस लेग को थोड़ा सा नीचे की तरफ रख सकते हो. यहाँ पे वही चीज़ है कि आर्म को डिले करो थोड़ा सा. एक आर्म नीचे आएगी पहले, फिर दूसरी आएगी. दिस पोज कैन बी मोर क्लियर. राइट नाउ इट इज़ नॉट क्लियर इनफ. लाइक यहाँ पे क्या हो रहा है हमें क्लियर नहीं है, तो हम उसको बेहतर कर सकते हैं. इधर ये मूव अनक्लियर है कि यहाँ पे क्या हो रहा है. उसने यूं पंच मारा, उसके बाद यहाँ पे इसकी आर्म कुछ यूं, इसकी आर्म्स कुछ अजीब लग रही हैं. यहाँ पे अनक्लैरिटी है, इसमें सिंप्लिसिटी नहीं है. तो यहाँ पे ये लाइक यू कैन जस्ट वर्क ऑन दिस पार्ट बिकॉज ये यूं आया और उसके बाद यूं जिग-जैग मूवमेंट आ रही है विदाउट एनी रीज़न. और यहाँ पे भी आप इसकी आर्क्स को डिफाइन कर सकते हो, बेहतर कर सकते हो. यहाँ पे वही चीज़ है, वॉल की हिट है. वॉल हिट क्या है कि लाइक ये एक लेट्स एक सिलेंडर है और करेक्टर की जो मूवमेंट है विद इन दैट वॉल है. लाइक मे बी वो ऊपर से नीचे भी हो सकती है, राइट से लेफ्ट भी हो सकती है, या मे बी करेक्टर ऊपर जाके एक जगह पे रुक जाता है तो हम कहते हैं कि ये वॉल हिट हो गई है. तो ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक दैट वॉल. मे बी अगर करेक्टर नीचे आ रहा है तो हम लोग आर्क्स को इंट्रोड्यूस करवा लें, ठीक है. और नीचे जब हिट नहीं करे अचानक, क्योंकि ईज आउट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ईज इन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसको माइंड में रखते हुए हम लोग maybe we can add up like 3 or 4 frame of ease out from that pose. तो उससे wall hit की feel नहीं आएगी. And also like arcs, they are super important. Maybe always try to find an interesting path of action for the overall motion. तो यहाँ पे maybe ये जो arm है ये maybe overshoot करके वापस आएगी. Like over here it is like stucking there. तो maybe you can just overshoot and settle back. You can just make it like ease in for that pose. तो आपको figure out करना है कि ये arm जब आएगी तो ये कैसे आएगी. अभी ये ना स्पेस में यूँ स्टक हो गई है. सेम यू हैव टू इम्प्रूव द पोज ओवर हेयर. लाइक उसकी आर्क्स कैसी होंगी, वो एक जगह से ट्रैवल कर रहा है दूसरी जगह, तो वो कैसे करेगा, कौन सा पाथ हम एंटिक ऐड करेंगे, ओवरशूट करेंगे, या हम लोग ईज इन ईज आउट करेंगे सिंपली. और मे बी वी विल यूज द अदर पाथ. मे बी एंड पे क्या होगा, एंटिक करने के बाद वो यूज स्टैगर करेगा.
मे बी यहाँ पे एंटी की, उसके बाद स्टैगर की फील डाल दी। तो यू हैव टू आस्क क्वेश्चंस, ईच एंड एवरी मूव शुड हैव डिफरेंट लाइक आंसर्स। एंड सेम ओवर हेयर मैन, जस्ट ट्राई टू फिगर आउट डिफरेंट शेप एंड यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा बॉडी पार्ट लीड कर रहा है, कौन सा फॉलो कर रहा है। इट इज ऑल अबाउट चॉइसेस। ट्राई टू फाइंड द इनर थॉट फॉर द करेक्टर। अभी क्या फील कर रहा है, क्या उसके माइंड में चल रहा है, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट थिंग टू आइडेंटिफाई। उसके बाद वही चीज़ है, ये वॉल से हिट कर रहा है, अगर यहाँ पे आप लाइन ड्रा करें तो दिस करेक्टर इज मूविंग इन स्ट्रेट मैनर, तो because we can call it is a wall hit or something like that. This is super nice because you lead with the like this arm. It is super nice. This is what I am talking about. अच्छा, यहाँ पे हाइपर एक्सटेंड हो रहा है आपकी लेग को, यहाँ पे आपकी लेग हाइपर एक्सटेंड हो रही है, तो यू कैन जस्ट मेक इट बेटर। द बॉडी शुड गो बैक एंड देन दिस आर्म, ट्राई टू आइडेंटिफाई द वेट शिफ्ट, बेटर वेट शिफ्ट। आई थिंक यू कैन डू दैट। तो यहाँ पे वेट शिफ्ट इज नॉट गुड इनफ। सेम, ट्राई टू ट्रैक द आर्क्स। द बेस्ट थिंग यू कैन शूट द रेफरेंस एंड देन यू विल हैव द बेटर आइडिया कि यहाँ से इस पोज से दूसरे पोज में ये कैसे जाएगा। इधर आपकी लेग ब्रेक हो रही है लाइक, एंड फॉर दिस वन यू कैन जस्ट मेक इट मोर क्लियर ओवर हेयर, लाइक मे बी दिस आर्म को यहाँ पे ले जाएं, इसकी सिलवेट क्लियर कर लें, इसमें एंटिक ऐड कर लें। आई डोंट माइंड कि उसने यूं किया है, इट इज सुपर नाइस। यू कैन कीप दैट वन, बट मे बी यू कैन जस्ट ऐड एंटिक ओवर हेयर, सम काइंड ऑफ एंटिक, मे बी नॉट द सेम वन बट डिफरेंट काइंड ऑफ एंटिक यू कैन ऐड ओवर हेयर। तो यहाँ पे आपकी जो ओवरऑल सिलवेट है उसको हम लोग क्लियर कर सकते हैं, बिकॉज दिस आर्म इज ओवर हेयर, दो ये इतनी क्लियर नहीं है। ट्राई डिफरेंट पोज फॉर दिस आर्म ओवर हेयर। नेक्स्ट सेम, एंटिक को मजीद हमने टाइम दिया, थोड़ा सा और टाइम दिया, और उसके बाद इस आर्म को पीछे रखा और हमने हेड से लीड किया था। अभी आपका जो हेड है ना वो कुछ यूं ऐसे यूं मूवमेंट आ रही है। ट्राई टू फिगर आउट के इसकी जो हेड की जो ओवरऑल पाथ ऑफ एक्शन है वो कैसा होना चाहिए। मे बी ओवर हेयर योर लेग कुड बी ओवर हेयर, तो इसको डिले करने का फायदा क्या होगा, उसमें मजीद पावर आएगी लेग में। सेम फॉर दिस वन, ऑलवेज ट्राई टू आइडेंटिफाई बेटर पाथ ऑफ एक्शन और बेटर आर्क्स। अच्छा, यहाँ पे आपकी जो लेग है वो ब्रेक हो रही है, इट इज लाइक गोइंग बैक लाइक दिस, तो मे बी यू कैन जस्ट ऐड अ लिटिल बिट बेंड, मे बी यू कैन ट्राई दैट वन। सेम ओवर हेयर, आपकी आर्क्स, आपकी सिलवेट क्लियर नहीं है, बट ओवरऑल दिस वन इज सुपर नाइस। आई रियली लाइक दिस पार्ट। This part is nice, head is nice, this part is super nice, but यहाँ पे थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है, इसको थोड़ा सा पका लो, थोड़ा सा अच्छा कर लो, बेहतर कर लो। तो overall move from this pose to that one is like this feel like as floaty. You can just you can introduce better spacing over here. This one over here he can just look कि क्या आ रहा है। अभी ना वो कहीं पे देख रहा है, but it is unclear कि उसकी आई डायरेक्शन क्या है। तो मे बी यू कैन इंट्रोड्यूस सम नाइस पोज ओवर हेयर, हेड पोज ओवर हेयर विद एक्सप्रेशन टू रियली आइडेंटिफाई ओके दिस थिंग इज कमिंग हेयर ओवर हेयर एंड you will hit that guy. You can always like have better arcs for this arm. This feels like you can इसमें थोड़ा सा और मोहब्बत ऐड करो, थोड़ा सा प्यार ऐड करो, like over here this pose is super nice. इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है, आई रियली लाइक दिस एरिया ओवरऑल। यू कैन इम्प्रूव दैट वन बिकॉज ओवर हेयर दिस फील लाइक द हेड हैज लाइक अ पिवट ओवर हेयर। यहाँ पे हेड में पिवट लग रहा है और बॉडी की ओवरऑल पोजिंग में इम्प्रूवमेंट आ सकती है, तो इस पार्ट में थोड़ी सी मोहब्बत ऐड करनी है। और दिस सिलवेट ओवरऑल आर्क्स, दिस आर सुपर ब्यूटीफुल, आई रियली लाइक दैट। ये ओवरऑल पोज बहुत प्यारा लग रहा है मुझे। और उसके बाद वही चीज़ है, लाइक यू हैव टू आइडेंटिफाई कि उसका हेड कैसे मूव करेगा, उसकी स्पेसिंग क्या है। ये लेग का पोज बहुत अच्छा है, और उसके बाद यू हैव टू आइडेंटिफाई कि ये लेग यहाँ पे आई और यूं इसकी आँख कुछ यूं मान रही है ऐसे। यूज अ स्मीयर फ्रेम और समथिंग लाइक दैट टू रियली आइडेंटिफाई ओके यहाँ पे मे बी इसका फुट यहाँ पे एक स्मीयर फ्रेम ऐड कर दो, इसको डुप्लीकेट करके यू कैन जस्ट इंट्रोड्यूस न्यू आर्क्स ओवर हेयर टू रियली सेल द आइडिया। You have to introduce beautiful arcs over here. उसको हिट करने के बाद क्या होगा, मे बी इट विल बी zigzag like this, और ये ओवरशूट करेगा और क्या करेगा, इसको हमने आइडेंटिफाई करना है। तो उसको हिट किया उसने, उसके बाद मे बी वी कैन ऐड अ स्ट्रैगर ओवर हेयर। तो अभी ये हो रहा है कि आपका जो आर्म है, अभी ये हो रहा है कि आपकी जो लेग है वो थोड़ा सा ओवरशूट करके सेटल बैक हो रही है, बट देयर इज नॉट मच गोइंग ऑन। Again, this pose can be improved. Right now it is not clear enough. यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है इस एरिया स्पेशली ना, तो स्पेशली जो उसकी बैक आर्म है उसके बारे में आप सोच सकते हो कि वो कहाँ पे आए। It would be like down there, something like that. तो overall this pose is strong, but इसमें थोड़ी सी सिलवट बेहतर कर लो, it will work. अच्छा, यहाँ पे जैसे आर्म की मैं बात कर रहा हूँ, तो
ट्राई टू फिगर आउट आर्म पोजीशन, मे बी ये जो आर्म है ये थोड़ा सा यूं जा सकती है और मे बी इट विल कम डाउन देयर, और उसकी पोजीशन को बेहतर कर सकते हो. लाइक ट्राई टू फाइंड डिफरेंट ऑप्शन फॉर दिस आर्म टू मेक इट लुक बेटर. यहाँ पे आपका जो माउथ है वो अचानक बंद हो रहा है, बड़ी तेजी से बंद हो रहा है. लाइक यू कैन जस्ट ईज आउट फ्रॉम दैट पोज. Super nice. Okay, let's talk about expressions. Expressions कैसे हैं आपके? You can really work on the expressions because over here you have a beautiful chance over here कि तुम identify कर सकते हो extreme expressions. यहाँ पे maybe he will be angry in the kind of pose. He's not angry but he is just super serious over here. He is ready to do something to really try to push that pose. तो maybe you can exaggerate overall expression over here. तो let's say अभी यहाँ पे normal pose कुछ यूँ है, तो जब ये नीचे यूं आएगा तो यहाँ पे इसको तुम थोड़ी देर और होल्ड करो, यूं सीरियस पोज लेके आओ इसका कि ही सुपर सीरियस फॉर हिज वर्क, ही इज सुपर सीरियस फॉर द लाइक ही इज सुपर सीरियस टू डू समथिंग स्पेशल. यहाँ पे वही चीज़ है, यू कैन होल्ड दैट पोज फॉर लिटिल बिट, मे बी 5 से 6 फ्रेम, मे बी 7 फ्रेम होल्ड करो, उसके बाद एक्शन को स्टार्ट करो. लाइक दिस एक्सप्रेशन ओवर हेयर इज सिमेट्रिकल, यू कैन ब्रेक दैट वन. लाइक ये पोज ना, कुछ ये वाला जो एंग्री पोज है ना, ये काम नहीं करता उतना अच्छा, बिकॉज ही इज अ गुड गाय, ही इज नॉट लाइक अ बैड गाय. तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ओवरऑल आईब्रो को थोड़ा सा नीचे लेके आ सकते हैं, ठीक है, कुछ यूं में भी, और यहाँ पे एसिमेट्रिकल थोड़ी सी फीलिंग ऐड कर दो. सेम यहाँ पे एक्सप्रेशन चेंज नहीं हो रहा, लाइक वो आई ब्लिंक कर रहा है लेकिन ओवरऑल इसके आईब्रोज ज्यादा मूव नहीं कर पा रहे. तो यू कैन ऑलवेज ट्राई टू ब्रिंग देम डाउन बिकॉज आईज आर क्लोजिंग. तो इनको आपस में बाइंड रखना है बिकॉज एवरीथिंग इज कनेक्टेड. तो आईब्रो जब आई ब्लिंक करेगा तो हम रियली लाइक स्क्विश दैट पोज, लाइक रियली मेक दैट रियली स्क्विशिंग, मे बी इसके लिप्स ऊपर आ जाए और वी कैन रियली स्क्विश दैट पोज और ओवरऑल एक्सप्रेशन को स्क्विश कर सकते हैं. और यहाँ पे आईब्रोज को इन्वॉल्व कर सकते हो, अभी उनकी ना पोजीशन चेंज नहीं हो पा रही. सेम ओवर हेयर, आईब्रोज और आईज को एज अ यूनिट लेके चलो. अगर आईज ब्लिंक करेंगी तो मे बी यू कैन मूव अ लिटिल बिट लाइक आईब्रोज ओवर हेयर. उसकी स्माइल में थोड़ा सा ईज आउट ईज इन ऐड कर सकते हो. या ओवर हेयर तुम्हारे आईब्रोज ना यूँ स्ट्रक हो, एक्सप्रेशन आपके स्ट्रक हो गए हैं, तो यहाँ पे मजीद थोड़ी सी मेहनत कर लो, मोहब्बत कर लो इसके साथ, एंड यू विल बी ऑसम ऑलरेडी. एंड पे जो एक्सप्रेशन आपने डाला है, इट इज सुपर नाइस. आई डॉट is very nice, this thing is looking very nice. बस यहाँ पे आपका आईब्रो थोड़ा टूट रहा है. Try to find out better shape for this guy over here. Okay guys, again the first thing is the rhythm of the shot. rhythm कैसा है, overall timing कैसी है, उसके बाद हम poses को improve करते हैं, उनकी silhouette अच्छी होनी चाहिए, they should be super clear. और उसके बाद ट्रांजिशन की हम बात करते हैं. ट्रांजिशन में क्या होगा कि यू हैव टू फिगर आउट के कौन सी चीज़ लीड कर रही है, कौन सी फॉलो कर रही है, और उसकी ओवरऑल पाथ ऑफ एक्शन क्या है चीज़ों का. लाइक आई ऑलवेज ट्राई टू हैव लाइक बेटर आर्क्स फॉर एवरीथिंग. ट्राई टू आइडेंटिफाई के चीज़ों को ईज इन ईज आउट के साथ रखना है, एंटिक ऐड करनी है, ओवरशूट करना है, स्टैगर ऐड करना है. तो यू हैव टू फाइंड बेटर आर्क्स फॉर एवरीथिंग एंड ट्राई टू आइडेंटिफाई बेटर स्पेसिंग एंड ओवरऑल ट्राई टू एग्जैजरेट थिंग. और हमेशा वेट शिफ्ट का ख्याल रखो कि एक चीज़ एक पोज से दूसरे पोज में जा रही है तो वो कैसे जाएगी. तो उसमें फिजिकलिटी का ख्याल रखें. देयर शुड नॉट बी लाइक यहाँ पे कुछ जादू से वो चीज़ें नहीं मूव कर रही, देयर इज फिजिक्स इन्वॉल्व्स इन सम वे. तो यू हैव टू आइडेंटिफाई दैट थिंग. बट ओवरऑल मैन योर शॉट इज ऑलरेडी लुकिंग ऑसम. इसमें वही चीज़ है, थोड़ी सी डिटेल ऐड करो, थोड़ी सी लाइक कुछ एरियाज पे यू कैन ऐड मोर लव, एंड ओवरऑल इट इज ऑलरेडी सुपर गुड. लेट्स वॉच इट वन मोर टाइम गाइस. या सुपर नाइस पीस, super nice. Okay man, best of luck. Hello friends, today I will review this animation. This is awesome piece by Ashar Khan. He's super good animator. He wanted my feedback. Okay, let's start. पहली चीज मैं देखता हूँ एक्टिंग कैसी है, सब टेक्स्ट कैसे है और सब परफॉर्मेंस कैसी है इसकी. You're not worth the trouble it would take to hit you. You're not worth the powder it would take to blow you up. You are an empty, hollow shell of a woman. He is super angry. Oh, ये डरी हुई है बेचारी. ये भी रिलेशनशिप का एंड चल रहा है मे बी. It is super clear, acting wise, emotion wise, it is super clear that these guys they cannot live together anymore. This pointing finger is the
the last thing people do, like super angry people that do this, तुमने ये कर दिया, तुमने वो कर दिया, तुम बुरी हो, ये हो, इसमें भी नफरत है, डिस्गस्ट, ये गंदा है, ये थोड़ी सी डरी हुई है लेकिन अंदर से ये ना नफरत करती है, इसे फुल नफरत का इज़हार कर रही है। तो सबटेक्स्ट इसका क्या हुआ? I really love the acting choices you put in. They are super good. They are on the spot. Look at this frustration at the start. He is like maybe controlling the emotion and then just release it. Subtext के बारे में थोड़ी मज़ीद बात करता हूँ. Subtext is the inner feeling. Like most of the time we say something else but we feel differently. और एज अ ह्यूमन हम लोग अपने इमोशन पे कंट्रोल करते हैं जब हम पब्लिक में होते हैं. लेट्स से वी आर सुपर एंग्री बट वी कंट्रोल दैट एंगर. और कोई कहता है ये कैसा लगा तुम्हें, हम कहते हैं अच्छा है. सो सबटेक्स्ट क्या है? अंदर में वो डिसलाइक की फीलिंग है बट ही इज सेइंग आई लाइक इट. लेट्स एक बच्चा, छोटा सा बच्चा, हम उसको कहते हैं कि तुमने ये काम किया, और वो बोलेगा मैंने नहीं किया. छोटे जो बच्चे हैं वो अपनी इमोशन को और बॉडी लैंग्वेज को कंट्रोल नहीं कर पा रहे. उनके लिए झूठ बोलना मुश्किल है, लेकिन बड़े लोगों के लिए हमारी आदत है भाई. ऑनेस्टली हम लोग झूठ बोलते हैं, हम लोग इमोशन को कंट्रोल करते हैं. अक्सर हम लोग जो अल्फाज बोलते हैं और जो हमारा इमोशन है वो मैच नहीं कर रहे होते. इसकी एक और एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से आई एम सुपर हंग्री बट मुझे यहाँ पे खाने के लिए ना करनी है. मुझे भूख लगी है लेकिन मैंने ना करनी है, तो मैं कैसे करूंगा? कोई पूछता है आपने खाना खाना है? नहीं, मैंने नहीं खाना. तो वो अंदर वो आपकी बॉडी कह रही है कि यार ये खाना मैंने, लेकिन आप मुंह से क्या बोल रहे हो? नहीं खाना. अक्सर औकात हम लोग झूठ बोलते हैं बट हमारी बॉडी लैंग्वेज में कुछ क्लूज मिल जाते हैं जिसकी वजह से हम लोग कह सकते हैं यार ये तो ये नहीं चाह रहा. अब हम इस एक्टिंग पीस की बात करते हैं. इसमें हमारा सबटेक्स्ट सुपर क्लियर है. इनकी वो कह लें कि रिलेशनशिप का एंड है, पीक चल रही है, इसके बाद ब्रेकअप है, उसके बाद और वापसी का रास्ता नहीं है. मे बी ये कुछ ऐसा है. अगर हम 0 से 10 लें तो किसी भी इमोशन का एक स्केल होता है 0 to 10. लेट्स से आई एम एंग्री, उसका स्केल आहिस्ता आहिस्ता मैं बढ़ाता हूँ. शुरू में एंगर कुछ यूं थी, फिर उसका बढ़ गया स्केल सुपर एंग्री. तुम सो मैंने क्या किया, अपना एंगर का स्केल बढ़ा दिया. इसी तरह हैप्पीनेस का स्केल है, इसी तरह दूसरे जो इमोशंस हैं उनका स्केल है. तो हमें पिक करता होता है कि हम लोग किस स्केल पे लेके चलें चीज़ों को. इमोशन का स्केल कौन सा चल रहा है, क्या इमोशन को हम लोग कंट्रोल कर रहे हैं या नहीं कर पा रहे. तो इसी तरह हम लोग देखते हैं कि सिचुएशन क्या है कैरेक्टर की, वो किस सिचुएशन में है और कितना अपने इमोशन को वो ओपनली एक्सप्रेस कर पाता है. अमूमन हम किसी भी सिचुएशन में देखते हैं कि हमारे जो आउटर एक बलून होता है. लेट्स से वी आर इन द टेंस सिचुएशन, आवर बलून इज टाइट, वी कैन नॉट मेक बिग एक्सप्रेशंस ओवर देयर. हमारे जेस्चर्स भी छोटे होते हैं, लेकिन जो ही हम लोग एक रिलैक्स सिचुएशन में होते हैं हमारे जेस्चर्स भी बड़े हो जाते हैं, हम लोग ईजी फील करते हैं, ज़्यादा मूव करते हैं. तो इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे हो और वहाँ पे अपने इमोशंस का स्केल कैसे कंट्रोल करते हो और आप उस बबल को कितना एक्सपेंड कर पाते हो. लेट्स से यू आर इन गुड फ्रेंडशिप काइंड ऑफ रिलेशन, so you will always like try to open and maybe you can touch and all that. But if there is somebody who is like your boss or something, you always try to contain yourself or you try to manage your emotions and try to be calm and be like a good person. तो एनिमेशन करते हुए भी हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना है कि हमारा कैरेक्टर कहाँ पे है और कितने इमोशंस को एक्सप्रेस कर पाएगा. तो फर्स्ट चीज़ क्या थी? एक्टिंग कैसी है? सब टेक्स्ट परफॉर्मेंस सुपर ऑसम, इट इज़ टू द पॉइंट और इट इज़ सुपर क्लियर व्हाट दे थिंक, व्हाट दे वांट एक्चुअली. अब दूसरी बात, मैं आई डायरेक्शन हमेशा देखता हूँ एनिमेशन वाइज कि यार क्या आई डायरेक्शन ठीक है कैरेक्टर की. अगर हम लोग यहाँ पर लाइन ड्रा करें तो ये नीचे की तरफ नहीं देख रहा है. अगर मैं किसी में गुस्सा कर रहा हूँ तो मैं बिल्कुल आंखों से आंखें मिलाऊंगा. आई विल नॉट लुक अराउंड एंड आई विल नॉट लुक हेयर. If I'm angry and I anger like this, nobody will believe me. But if I'm angry, I really look at the person and तुमने ये कर दिया, you did this to me. और मैं blink भी नहीं करूँगा. Anger में हम लोग कोशिश करते हैं कि यूँ आंखें खुली रखें. This one is good. Yeah, he is looking at her. उसके बाद यहाँ पे ये लग रहा है कि वो थोड़ा सा उसकी लेफ्ट साइड पे देख रहा है. यहाँ पे ये लग रहा है ऊपर देख रही है. ये कदरे बेहतर है, ये नीचे ठीक है. इट्स ओके बिकॉज इट इज़ अ थॉट प्रोसेस. वी ऑलवेज लाइक लुक अप एंड देन डाउन एंड देन अप. इट्स ओके. दिस वन इज़ फाइन. दिस वन फील्स लाइक शी इज़ लुकिंग एट शोल्डर और समथिंग ऑन द राइट साइड ऑफ द पर्सन. इधर लग रहा है शायद ये ऊपर देख रही है, ये इस पर्सन को नहीं देख रही. तो आप क्या कर सकते हैं, आप ये डबल चेक करें कि आपका जो आई कंट्रोलर है वो वर्ड में है और वो कितना दूर है. लेट्स से ये जो फिंगर ये दूर है तो मेरी आइज़ कुछ यूँ है, लेकिन जो ही मैं इसको देखता हूँ और करीब करता हूँ तो मेरी आइज़ कुछ यूँ हो गई है.
तो आई की डायरेक्शन को हमेशा हमने माइंड में रखना है कि कितना दूर कैरेक्टर खड़ा है, कहाँ पे खड़ा है, और आईज वर्ड में है या नहीं है, क्योंकि अगर आईज अगर लोकल में होगी तो वो हेड के साथ यूं मूव करेंगी, तो ये नेचुरल बिहेवियर नहीं है आईज का, तो हमेशा उसको वर्ड में रखो। इधर बहुत ही ज्यादा स्क्विंट आपने कर दिया है, आईज को इतना स्क्विंट नहीं करते जब तक कि कोई रीजन ना हो, हम इतना स्क्विंट नहीं कर पा रहे। इधर ये थोड़ा सा यूं नीचे देख रहा है, इधर ये नीचे देख रहा है, शायद आंखों की तरफ देखना चाहिए था। तो आई डायरेक्शन वाइज हमें कुछ चीजें नजर आई हैं जिसको हम लोग फिक्स कर सकते हैं। अब आ जाती है आईज और आईब्रो की बात, कि आईब्रो और आईज क्या आपकी एक्टिंग को शो कर पा रहे हैं। अच्छा, आईब्रो, जब मैं आईज और आईब्रो की बात करता हूँ तो मैं चीक्स को भी इन्वॉल्व करता हूँ, बिकॉज दिस इज लाइक अ वन यूनिट। ओके, दिस इज टू मच पुश्ड पोज, यहाँ पे आपने बहुत ज्यादा पुश कर दिया चीजों को। दिस लाइक it is very hard to do that actually. You can ignore other feedback, I will come to that one later, but these eyes movement, they are like, you can have better pose for that, and this one is like super hard. This pose is super hard because आपकी cheeks ऊपर हैं और इस तरह से आंखों को खोलना is not possible. दूसरी चीज़ ये कि हमारे जो lips हैं वो pull करते हैं, like if I bring my lips up, cheeks उसके साथ involve हो रही है, या मैं squint कर रहा हूँ अगर, तो cheeks आ रही है उसके साथ। सेम यहाँ पे हमने रिलेशन का ख्याल रखना है, चीक्स का और ओवरऑल रिलेशन का हमने ख्याल रखना है, चीक्स का और माउथ की मूवमेंट इफेक्ट कर रही है चीक्स को। यहाँ पे इसको ब्लिंक करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ही इज सुपर एंग्री, सो इवन आई इफ आई डू ब्लिंक इट इज़ हार्ड टू ब्लिंक फॉर मी, तो इस तरह की फीलिंग है ये। और यहाँ पे आपकी आइज ज़्यादा क्लोज रहे, आपका हेड मूव कर रहा है लेकिन आइज क्लोज है, विच इज़ नॉट नॉर्मल। तो मैं हमेशा आई और आईब्रोज को पहले ले आता हूँ इमोशन में, ताकि वो उसको लीड करे इमोशन को। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये जो इमोशन है इसको 3 फ्रेम पीछे लेके आ सकते हैं, पहले लेके आ सकते हैं। इधर आपके आईब्रोज आपस में लिंक नहीं कर रहे, बिकॉज ओवर हेयर द इनर पार्ट इज मूविंग डाउन बट आउटर पार्ट इज नॉट इफेक्टिंग बाय दैट। तो हमेशा ये, अगर लेट्स से वी मूव दिस इनर गाय डाउन, द आउटर गाय अ लिटिल स्ट्रेच की फील आती है उसमें। तो यहाँ पे आपके इनर आईब्रो नीचे आ रहे हैं, आउटर आईब्रो नहीं मूव कर रहे हैं, जो कि नेचुरल नहीं है। उसके बाद ये नीचे मूव करते हैं, तो यहाँ पे अपर आईब्रोज और चीक्स एक साथ नीचे मूव कर रही है ना, तो हमेशा ये असल में एक दूसरे को काउंटर करते हैं। लाइक इफ आई डू दिस गाइज गोज अप, इफ आई ओपन इट अप दिस गाइज गो डाउन। तो हमेशा इन दोनों का रिलेशन कुछ ऐसा होता है। यहाँ पे जो ब्लिंक की स्पेसिंग है इसको आप बेहतर कर सकते हो, यहाँ पे ब्लिंक की स्पेसिंग ठीक नहीं है। सेम थिंग यू कैन वॉच माय ब्लिंक ट्यूटोरियल फॉर दैट। तो अमूमन जब ब्लिंक करते हैं तो फास्ट ब्लिंक होता है, उसके बाद स्लोली ओपन करते हैं हम लोग। यहाँ पे अचानक से हमारे आईब्रोज, जो इनर आईब्रो है वो ऊपर आ रहा है, जो कि नेचुरल नहीं है। यहाँ पे आप ईज आउट की फील डाल सकते हैं। यहाँ पे ये वाला जो एक्सप्रेशन है जैसे जैसे रुक सा गया है, इट इज़ नॉट फ्लोइंग प्रॉपरली, सो मे बी यू कैन improve this or you can just polish that one in the graph editor. अभी ये जैसे सीमेंट की तरह ना चिपक गया है ये इमोशन, तो अब आईब्रोज में हल्की सी मूवमेंट भी आप ऐड करोगे वो अच्छी लगेगी। यहाँ पे सेम बात जो हमने पहले की है कि अपर लिड बहुत ज़्यादा नीचे की तरफ है, हम लोग उनको इन्वॉल्व कर सकते हैं। तो ओवरऑल एक्सप्रेशन हम लोग यूज़ कर सकते हैं इसमें, बिकॉज ही इज स्टिल एंग्री बट ही इज़ आल्सो लाइक माइट मे बी ही इज क्राइंग और समथिंग। तो इसका इमोशन कुछ यूँ हो सकता है कि यू कैन ब्रिंग दीज आईब्रोज डाउन। तो अपर आईब्रोज को जब आप नीचे ले आएंगे तो ये इमोशन बेहतर लगेगा। ओके गाइस, लेट्स मूव टू लिप सिंक। लिप सिंक कैसी है? Here you can involve the tongue for your ना मिसिंग है, यहाँ पे टोटली मिसिंग है। यहाँ पे यू कैन ऐड दैट वन। ओ की शेप मिसिंग है, एल यहाँ पे एल की साउंड आ रही है, तो ट्रबल, ही इज टॉकिंग अबाउट, ही इज सेइंग ट्रबल, तो एल के लिए ऊपर आएगी टंग। यहाँ पे बोल रहा है ट्रबल विद, तो ओथ की साउंड मिसिंग है यहाँ पे, ओथ ओ ट्रबल विद ऐसे बोलेगा कि ओ से ई में आएगा विद। यहाँ पे ये जा आपका स्टक हो रहा है, लाइक बिग मूव है, बहुत ज़्यादा बड़ी मूव है यहाँ से। और यहाँ पे भी आपके एक्सप्रेशन में बिल्कुल ना ऐसे मतलब हार्डनेस आ रही है, तो यू कैन ऑलवेज ऐड ईज आउट फ्रॉम दैट वन। दिस वन इज सुपर बिग मूव। यहाँ पे आपका जा बिल्कुल रुक गया है, यहाँ पे यू ओ की शेप मिसिंग है, यू ओ। यहाँ पे बहुत बिल्कुल आप लिप्स को क्लोज कर सकते हो। अगेन दिस शेप इज स्टक हेयर। यहाँ पे जो लिप्स की मूवमेंट है इट इज़ टू बिग, यू कैन ऑलवेज ईज आउट फ्रॉम दैट वन। यहाँ पे जो आपकी अपर लिप है इट इज़ टू पॉइंटी ओवर हेयर, यू कैन राउंड अ लिटिल बिट। अभी ये इस तरह से अजीब सा कॉर्नर बन रहा है यहाँ पे, तो इस शेप को बेहतर कर सकते हैं, पीलिंग कर सकते हैं। यहाँ पे अगेन आपका जा रुक रहा है, बिल्कुल स्टक हो गया। यहाँ पे बोला है एम थी, तो एम थी में सिंक आउट ऑफ सिंक का हो रहा है। यहाँ पे एम थी ई की साउंड आनी चाहिए, यहाँ पे जा ओपन हो रहा है, जो कि उसको सिंक आउट ऑफ सिंक फील हो रहा है। यहाँ पे यहाँ पे जो एम थी है इट इज़ अ लिटिल आउट ऑफ सिंक। ई एम थी हालो, ई के बाद ए की साउंड आनी चाहिए। अभी ई की साउंड मिसिंग है और ए में हम लोग चले जाते हैं।
राइट ऑन द लोअर लिप इज द लिटिल, यहाँ पे बुरा लग रहा है ये, तो इसको शेप को बेहतर कर सकते हो। यहाँ पे एस की शेप बनेगी खूबसूरत सी। अभी लिप्स बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड हैं, इसको आप टोन डाउन कर सकते हैं। ये अगेन आपका जहाँ स्ट्रक हो गया यहाँ पे। एल की साउंड है, हेल, शैल, एल की साउंड आएगी, हेल। लिपसिंग के लिए बेहतरीन जो चीज़ है वो ये है हम लोग रेफरेंस शूट करें। इसकी एग्जांपल इस तरह से लेते हैं कि अगर एक लाइन बहुत तेज़ी से बोली जाए तो हमारे लिप्स ज़्यादा मूव नहीं करते, बट अगर मैं स्लो बात करूँ तो मेरे लिप्स बहुत ज़्यादा मूव कर रहे हैं। तो जो पेसिंग है वो हमेशा उसकी डिलीवरी को चेंज कर देती है। और दूसरी चीज़, करेक्टर क्या बोलने जा रहा है उसकी एंटिसिपेशन हम लोग में, जैसे वो कह रहा है वुमेन, वू की साउंड निकलने से पहले ही मेरे लिप्स उधर आ जाते हैं, वुमेन। तो शुरू में मैंने क्या किया, जो वर्ड आ रहा है उसकी शेप पहले से बना ली, और एंड पे क्या किया कि जो उसने डिलीवर किया वुमेन, एंड बोल दिया उसने, फिर भी मेरा माउथ वहाँ पे रुका हुआ थोड़ी देर के लिए। तो शुरू में और एंड पे हमें उन शेप्स को रोकना होता है। और बी पी की जो साउंड है उसको 2 फ्रेम दो। जो एल की साउंड है, ठ की साउंड है, थ, ड, इसमें टांग ऊपर आती है हमेशा। उसके बाद आती है एफ की साउंड, उसमें जो लोअर लिप है यूँ टच करता है जो अपर टीथ है। और एक और बात आ जाती है कि इतना जा को ओपन करना है। अगर मैं तेज़ी से बात करूँ तो मेरा जा ज़्यादा ओपन नहीं हो रहा, लेकिन अगर मैं स्लो बात कर रहा हूँ तो मेरा जा शायद बहुत ज़्यादा ओपन हो रहा है। लेकिन मैं बहुत ज़्यादा एग्जैजरेटेड करके बता रहा हूँ। And again, you can always go to Google and just Google that lip sync shapes and you will find the good shapes for that. अब हम बात करते हैं बॉडी की एनिमेशन की। बॉडी की एनिमेशन ऐसी है कि आप पहले भी कर सकते हैं और बाद में भी कर सकते हैं। इट इज़ योर पर्सनल टेस्ट। मैंने दोनों तरह करके देखा है। आई फील लाइक व्हेन आई एनिमेट इमोशन फर्स्ट, आई ऑलवेज कीप द बॉडी लाइक सेकेंडरी थिंग, और अक्सर मैं उसको एनिमेट अच्छा नहीं कर पाता या इसको कम एनिमेट करता हूँ। अब हम बॉडी की एनिमेशन की बात करते हैं तो यहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें नजर आई हैं जिसकी हम बात करें। सबसे पहले हम स्पाइन और हेड को देख लेते हैं कि वो कैसे काम कर रहा है। अगर हम लोग ओवरऑल बॉडी की बात करें तो वहाँ पे आपकी स्पेसिंग बेहतर हो सकती है, आपका फ्लो बेहतर हो सकता है, आपकी जो बॉडी है ओवरऑल स्टक हो रही है कुछ पॉइंट पे। आइए इसको फ्रेम पे फ्रेम देखते हैं। यहाँ पे आपकी बॉडी पिवट बना रही है, यहाँ पे हेड की स्पेसिंग बेहतर हो सकती है। इधर अगेन आप ये वॉल से हिट कर रहा है, ये वाला पार्ट, दिस पार्ट इज हिटिंग द वॉल, दिस पार्ट ओवर हियर इज स्टकिंग इन द स्पेस, इट इज हिटिंग द वॉल। तो यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव इट फ्रॉम द ग्राफ एडिटर। यहाँ पे आपकी बॉडी स्टक हो रही है, यहाँ पे स्पेसिंग वाइज आपकी बॉडी स्टक हो रही है, यहाँ पे 2 फ्रेम्स के लिए। यहाँ पे आपकी बॉडी रुक रही है, फिर यहाँ पे आपकी बॉडी यूँ अचानक से एक ही फ्रेम में यूँ नीचे आती है और आगे की तरफ कैमरे की तरफ आ रही है। सो यू कैन ऑलवेज इम्प्रूव द फिजिकलिटी ऑफ दैट। यहाँ आपकी आर्म अचानक से यूँ स्पेसिंग बढ़ रही है इसको आप कंट्रोल कर सकते हैं। लाइक यू ऑलवेज ट्राई टू ऐड ईज इन एंड ईज आउट इन द स्पेसिंग इज सुपर इंपॉर्टेंट गाइस, super important thing. You cannot just move things in one frame. There should be ease in and ease out and proper arcs for that. Like in one frame this guy is like moving his arm from here to here. उसके बाद इसकी overall nose की जो spacing है it is not good enough. You can maybe improve that one. यहाँ पे आपकी स्पेसिंग यूँ अचानक से तेज़ है और उसके बाद बिल्कुल यूँ कम है, और उसके बाद यहाँ पे इवन स्पेसिंग है कुछ देर के लिए। सेम फॉर दिस आर्म, this arm is moving from this frame to this frame in one frame, so maybe you can add better spacing and better flow from that. यहाँ पे आपकी एल्बो एक फ्रेम में यहाँ से यूँ आ रही है और फिर यहाँ पे रुक जाती है, स्टक हो जाती है, तो कुछ यूँ ऐसे आपकी आँख बन रही है, it is not good, so maybe you can improve that one. For this finger, this feel like it is broken, you can make this better a little bit. Over here it feels like it is touching somebody like this, so maybe this one is too compressed. So इसको आप बेहतर कर सकते हैं। When we touch something, our finger like really like bend like this, but normally they don't. तो इसको आप थोड़ा सा कम कर लो। यहाँ पे स्टक हो रहा है, वॉल हिट है, अगेन आर्क्स अच्छी नहीं है। ये पोज बेहतर हो सकता है। The wrist feel like it is broken here. It is too much twist on the wrist. तो यहाँ से यूँ आ रहा है, इसकी फिंगर और स्पेसिंग को आप बेहतर कर सकते हैं। या इन फिंगर्स में थोड़ी सी लाइफ ऐड कर सकती है, राइट, बट फील लाइक दे स्टक ओवर देयर, सो यू कैन ऑलवेज ऐड कंप्रेशन। यहाँ पे आपकी स्पेसिंग और आर्क्स बेहतर हो सकती है, बिकॉज दिस फिंगर इज कमिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर एंड देन डाउन देयर। तो इसकी प्रॉपर आर्क्स आप बना सकते हैं। यहाँ पे आपकी आर्म अगेन पिवट बना रही है, इसको बेहतर कर सकते हैं, बिकॉज इट इज़ फील लाइक अ डोर नॉब काइंड ऑफ फीलिंग। अब हम इस लड़की की बात करते हैं। ओवरऑल इसकी जो बॉडी की मूवमेंट है उसमें मैंने फील किया कि वी डोंट फील लाइक शी इज़ मूविंग बैकवर्ड्स। तो इसके लिए आप रेफरेंस शूट करें, आप देखें कि आपकी बॉडी मूव असल में कैसे करती है, बिकॉज अपवर्ड चेस्ट ऑलवेज ट्विस्ट अ लिटिल बिट व्हाइल स्टेपिंग बैक।
Even this is a medium shot, we still feel there is something wrong, the stepping is not good enough. यहाँ पे आपकी पूरी body ऊपर की तरफ move कर रही है, hitting the wall, the head is hitting the wall over here. The hitting the wall means like the body goes up and then it is stuck. There is not ease out from that and ease into that position. और अभी सब कुछ ऊपर जा रहा है, like everything is moving upwards over here. So you can always find something to go down and then other body parts that goes up. यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, इट इज नॉट नेचुरल इनफ. ऐसी फीलिंग आ रही है जैसे हेड उसका मूव कर रहा है और बॉडी ज्यादा से मूव कर रही है. दे आर नॉट फीलिंग लाइक अ यूनिट. यहाँ पे ये जो मूवमेंट है ये कुछ ज्यादा हो गई है. इसमें हमें ईज आउट और ईज इन की फीलिंग को लेके आना है. लाइक दिस वन इज टू मच. अच्छा, यहाँ पे जो आर्म की मूवमेंट है, इट इज नॉट नेचुरल. यू ऑलवेज कीप इन माइंड दैट लोअर आर्म एंड अपर आर्म दे मूव टुगेदर. इन चीजों को हमने कनेक्ट रखना है, इन्वॉल्व रखना है. वी कैन नॉट मेक अ पिवट लाइक दिस एट एनी पॉइंट ऑफ एनिमेशन. लाइक यू हैव टू इन्वॉल्व दैट. Again guys, first thing is acting, subtext, performance is super awesome. आई डायरेक्शन पे काम हो सकता है. आईब्रोज और आई इनका रिलेशन हमने माइंड में रखना है. इनको स्क्विश एंड स्ट्रेच करते हुए जब हम ब्लिंक करते हैं तो आईब्रोज को इन्वॉल्व करते हैं. जब आईज खोलते हैं तो हमारा आईब्रो और एवरीथिंग इज कनेक्टेड. उसके बाद हमने लिपसिंग की बात की. लिपसिंग इज आउट सम प्लेसेस. अब हमने एक बात करनी रह गई, वो है इसकी पॉलिशिंग, ओवरऑल फेशियल की पॉलिशिंग. तो फेशियल की पॉलिशिंग के लिए हमेशा थिंक अबाउट एवरीथिंग इज कनेक्टेड विद ईच अदर. द सेम थिंग, एवरीथिंग इज कनेक्टेड. एवरी फेशियल पार्ट इज कनेक्टेड. My smile is connected with the cheeks. Cheeks are connected with the lower lid, and everything work like a unit. The next thing is body animation. Your poses are good, but your overall transition it needs work. You can always improve that one. Work on your spacing, work on your transitions, work on your like overall flow of the body. बॉडी आपस में कनेक्टेड हो, कहीं पे पिवट ना बनाए, कहीं पे वॉल पे हिट ना करे. So everything should work like flow like a butter. But yeah, overall your animation is awesome, man. The acting choices you use, the like feeling is there, and you told me you want to animate that feeling, so you already succeed. But just polish this one and make it to next level. Okay man, take care. Okay, today I will talk about this dragon. The animation is looking super good. There is some feedback you can do to really improve that. I want to start right now. The first thing I will talk about the root. Second will be the wing, and then hip and leg, chest, neck, head, tail, details. So everything I will talk about today. So let's start that one, guys. I always check the flow and the rhythm of the shot, how it's going on. Let's play this. So it will be like big moment. She's landing, and then anticipation and gathering the energy, and then roar. So your shot will be much appealing after do that. Right now, she's just landing and then roar. There is no gathering up and gathering that energy and then releasing that one. So if you want to sell the impact, you can do that. And let's talk about the flow of the shot. She's coming and then she's stuck here without going forward because she is in the momentum. She should carry that momentum और उसको continue करना चाहिए आगे की तरफ. Right now, she come down and stuck there. Her hip is stuck over here. She don't move forward. She just roll over there. हमेशा हम momentum के लिए देखते हैं कि character आ कहाँ से रहा है. Let's say the character is landing from the top. It's coming down. Then maybe we can just use that as an excuse and we can say, okay, she's not moving forward. But let's say this character is moving from right far. मोमेंटम से आ रहा है और इसको मोमेंटम को कैरी करने के लिए उसको आगे मूव करना पड़ेगा, वरना वो रुक नहीं सकता ना. जैसे मे बी दिस ट्रेन अचानक नहीं रुक जाती. ट्रेन के आप ब्रेक्स लगाते हैं, उसके बाद मे बी वो 10, 15, 20 सेकंड बाद रुकेगी. तो दिस इज लाइक अ बिग क्रीचर गाय बिकॉज दिस इज अ बिग ड्रैगन. तो इसको वेट को शो करने के लिए हमें मोमेंटम को और उसकी हैवीनेस को माइंड में रखना है. बिकॉज ऑफ दिस ड्रैगन इज डोंट लुक हैवी. और पोजिंग वाइज हमेशा लाइन ऑफ एक्शन का ख्याल रखो. लाइक दिस ड्रैगन वाज फ्लाइंग लाइक दिस एंड देन उसकी बॉडी जो लोअर बॉडी है वो पहले आई, अपर बॉडी अभी ऊपर है बिकॉज ऑफ द विंग्स. शी इज यूजिंग दैट विंग्स टू रियली कैरी हर वेट. एंड देन उसकी टांगे पहले आई और उसके बाद उसने जब टांगे टच करी जमीन को तो उसके विंग्स ने खुद को समेटा. एंड देन दिस अपर बॉडी विल कम डाउन एंड देन डू दिस and then goes into the roar. तो इसमें रिवर्सल्स का ख्याल रखना है हमें. यहाँ पे इसकी सी शेप कुछ यूं है, then S shape and then C and then S shape and then reversal and this concave convex feeling of the overall body.
नेक्स्ट थिंग इज विंग्स। विंग्स क्या करते हैं हमेशा, विंग्स जब नीचे आते हैं तो वो स्लो आते हैं, जब ऊपर जाएंगे तो यूं वो मतलब खुद को समेटेगी, देन ऊपर लेके जाएगी जल्दी। तो हमेशा नीचे आने की स्पीड कम होगी, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एयर डाउन देयर, शी हैव टू पुश थ्रू एंड देन गो अप। तो ऊपर जाने का फास्ट होगा, नीचे आने का स्लो होगा। दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग वी हैव टू टेक केयर व्हाइल एनिमेटिंग बर्ड्स। ये क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मतलब प्रेशर है एयर का, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्रेशर है, तो इसको तुम यूं थोड़ा सा ऊपर बेंड कर सकते हो। विंग्स का नीचे आना हमेशा ज़्यादा टाइम लगेगा और ऊपर जाना कम टाइम लगेगा, क्योंकि नीचे एयर प्रेशर है। तो अभी इसका पोज कुछ यूं होने की बजाय कुछ यूं होगा, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ एयर प्रेशर ओवर हेयर। तो ये उसके ऊपर यूं मतलब एयर के ऊपर यूं मूव कर रही है, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ प्रेशर, योर विंग्स शुड फ्लो थ्रू दैट प्रेशर एंड गो अप। यहाँ पे बिल्कुल वॉल्यूम हमें नज़र नहीं आ रहा विंग का, तो उसको वॉल्यूम को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको अच्छी से शेप दे सकते हैं यहाँ पे। ओवर हेयर दिस गाय विल कम लेटर मे बी, बिकॉज दिस इज टू मच मूवमेंट गोइंग बैक। सेम फॉर दिस वन, बिकॉज दिस थिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज शी इज़ लैंडिंग डाउन, तो उसको परों को भी बचाना है, बिकॉज उसके पर जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो उसको समेटना है उसको मे बी पहले, और उसके बाद वो रखेगी यूँ नीचे, इंस्टेड ऑफ के वो सीधे यूं लेके आके रख दे। तो अभी आप उसको मजीद उसके साथ प्ले कर सकते हो विंग्स के साथ। यहाँ पे इसको फोल्ड करें, उसके बाद एक विंग पहले आ जाए, दूसरे को फोल्ड भी कर रही है। अच्छा, यहाँ पे जो फिंगर्स हैं वो कुछ ज़्यादा कार्टूनी हो रही है, तो हमेशा वेट को शो करने के लिए बजाय यूं लेके आने के, हम लोग पहले फिंगर्स को लेके आते हैं और उसके बाद कंप्रेस करते हैं यूं, तो वेट की फीलिंग आती है। यूं ऐसे वेट की फील नहीं आती। दिस इज़ नॉट हैवी, दिस इज़ हैवी। और उसके बाद सेकेंडरी एक्शन हम लोग डाल सकते हैं, लाइक वो नीचे आया, उसके बाद जैसे एल्बो का शेप होता है इसी तरह हम लोग उनमें सेकेंडरी एक्शन के तौर पे चीज़ें ऐड अप कर सकते हैं। सेम फॉर दिस विंग विल कम डाउन एंड वी कैन हैव ब्यूटीफुल शेप्स ओवर हेयर। दिस थिंग शुड बी ब्यूटीफुल। राइट नाउ दे आर लाइक टू डाउन मे बी, तो एल्बो को थोड़ा सा ऊपर लेके आ सकते हो आप। जब वो रोल करता है मे बी यू कैन गो अ लिटिल फॉरवर्ड एंड देन यू हैव टू शो द एनर्जी ओवरऑल। राइट नाउ ये वो यहाँ पे यूँ आती है, रोल करती है, तो यू कैन ऑलवेज स्टेप फॉरवर्ड एंड देन रोर टू रियली एम्फसाइज दैट रोर एक्चुअली। ओके, नेक्स्ट चीज़ उसकी हिप और लेग्स। अच्छा, हिप और लेग आपस में कनेक्टेड हैं, तो उसमें हमें वेट भी सेल करना है। अच्छा, यहाँ पे आपकी ये जो मूव है ये इतनी हैवी नहीं लग रही है और आपस में कनेक्टेड नहीं लग रही टांग की मूवमेंट, तो उसको बेहतर कैसे कर सकते हैं, हमेशा हम लोग माइंड में रखेंगे अपर लेग और उसकी लोअर लेग आपस में यूं पैरेलल रहने की कोशिश करें। राइट नाउ दे आर नॉट पैरेलल, दिस गाय गोइंग देयर एंड दिस वन ओवर हियर। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपने ओवरलैप डाल दिया, ये वाला ओवरलैप लेके आने के लिए ना, बिकॉज दिस इज अ बिग क्रीचर, यू हैव टू यूज इट्स हिप एंड एवरीथिंग। राइट नाउ इट इज़ दिस, ये अलहदा से सेपरेटली जा रहा है, तो इसमें चीज़ बॉडी को इन्वॉल्व नहीं आपने किया, और इतना ज़्यादा यहाँ पे ये टूटा हुआ भी लग रहा है। दिस वन लुक बेटर और दिस वन फील लाइक इट्स ब्रोकन। सेम ओवर हियर, टू मच मैन। This one same, the fingers come first, parallel, and then it will touch like this, always involve hip. Same over here, आपकी leg बहुत ज़्यादा disconnect की feel दे रही है, you have to respect this parallel kind of feel। और क्योंकि वो उसके ऊपर weight आ रहा है, तो ये शायद इस तरह से rotation इसकी नहीं आएगी, अभी ये कुछ यूँ rotation आ रही है इसकी, it is not natural। And always you can twist these hips and always try to make them appealing, like right now it is flat। हिप और लेग की बात कर ली, हम बात करते हैं चेस्ट की। जो चेस्ट है वो विंग के साथ कनेक्टेड है। इफ आई मूव माय आर्म, द चेस्ट इज अफेक्टेड बाय दैट। तो हमेशा इस चीज़ को अपने माइंड में रखना है कि उसके विंग्स कहाँ पे मूव कर रहे हैं। तो मे बी जब वो यहाँ पे आती है like over here, when the wings goes up the chest goes down, and then जब विंग्स नीचे आते हैं तो चेस्ट उसकी ऊपर जा सकती है। काउंटर एनिमेट करना अपने उसकी विंग्स की पोजीशन को लेके, और जिस तरह से हमारी आर्म मूव करती हैं और चेस्ट इन्वॉल्व होती है, उस तरह ये भी इन्वॉल्व नहीं है। यहाँ पे ट्विस्ट की फील नहीं है यहाँ पे चेस्ट पे। और सेम ओवर हेयर, इट कैन रियली गो डाउन एंड अप, you can really animate this thing separately। So this chest will come down and up, and then over here जब वो roar करती है तो you can really vibrate that thing। The next thing, neck and head is super important guy। This always counterbalance, like जब वो ड्रैगन ऊपर जा रही है तो वो ओवरलैप करेगा, उसके बाद नीचे आ रही है तो यूँ ओवरलैप करेगी, तो उसमें ऑपोजिट एक्शन और हमेशा ओवरलैपिंग की फीलिंग को हमने इंट्रोड्यूस करवाना है। वही चीज़ जब वो नीचे आता है तो यहाँ पे हेड नेक को यूज़ करो। दिस आर लॉट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी ओवर हेयर। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी है अच्छी खासी। यू कैन बेंड दिस गाय एंड देन कम डाउन एंड देन अप। यहाँ पे रोर कर रहा है तो अभी यूँ रोर कर रहा है स्ट्रेट। इसको आप थोड़ा सा मजीद इंटरेस्टिंग कर सकते हो, लाइक
अभी वो एक ही जगह पे यूं आगे की तरफ आ रहा है, उसमें वेट नहीं है. यू कैन ऑलवेज इंट्रोड्यूस द वेट एंड आर्क एंड वाइब्रेशंस एंड लॉट ऑफ स्टफ मैन, लॉट ऑफ जूसी स्टफ. कूल. नेक्स्ट थिंग, टेल. टेल इज आल्सो कनेक्टेड विद द स्पाइन. यहाँ पे आपकी टेल टूट गई है, तो इसको हमेशा माइंड में रखो कि जो लोअर पार्ट है मे बी इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन अपर पार्ट. लाइक ओवर हियर इट इज ब्रोकन. जो टेल हमेशा बैलेंस करती है चीज़ों को. लेट्स से ड्रैगन को बैलेंस की जरूरत पड़ी तो उसने बैलेंस करने के लिए टेल को फ्लिप किया. सो इट इज लाइक अ कैट, मे बी लाइक अ बिग एनिमल काइंड ऑफ फीलिंग. तो हमेशा टेल बैलेंस की फील देती है या अटैक कर, मे बी शी कैन अटैक विद दैट. बट यहाँ पे ये बैलेंस के लिए यूज़ करेगी, तो मे बी टेल नीचे आ सकती है यहाँ पे इधर. लाइक दिस मूवमेंट इज टू बिग एंड ह्यूज and this tail is like stucking over here in the air without any weight over here. So this thing you have to keep in mind. This thing is heavy. It's connected to the spine and yeah, just work on this one. टेल हमेशा एंड पे करो. पहले बॉडी को पॉलिश कर लो, टेल को बाद में तुम इम्प्रूव कर सकते हो. अमूमन मैं क्या करता हूँ, जो पहले 3 जॉइंट है उनको पहले एनिमेट करता हूँ और उसके बाद लोअर को एनिमेट कर देता हूँ. उसके बाद ट्वीक्स के लिए हम लोग मजीद उस पर मेहनत कर सकते हैं. बट टेल्स दे ऑलवेज कम एट द एंड ऑफ द शॉट बिकॉज आपकी एनिमेशन फाइनल हो जाती है. उसके बाद आप टेल्स को ज़रूरत के मुताबिक मूव कर सकते हो. ऑसम हो गया. डिटेल की चीज़ें. डिटेल क्या, जिगल्स, शेक्स, मसल है इसमें शेक्स ऐड करो, मसल ऐड करो. जब वो नीचे आता है, यूँ नीचे आया और ढुस रखा, तो यहाँ पे बैली शेक ऐड कर दो. belly because there's like a lot of flesh hanging down there man. Use this thing. Yes, over here chest में नीचे जो उसको क्लस्टर लगा लो, थोड़ा सा वो स्क्रिप्ट वगैरह यूज़ कर लो. लॉट ऑफ ऑनलाइन स्क्रिप्ट्स यहाँ पे लगा लो. थोड़ा सा उसमें मज़ीद शशके ऐड करो. दे शुड लुक फ्लैशी एंड लाइक वी वांट टू ईट दैट ड्रैगन, समथिंग लाइक दैट. इसकी एग्जांपल देखते हैं. ओके गाइस, लेट्स वॉच दिस मैन. दिस ड्रैगन, दिस थिंग इज सुपर हैवी. ओह मैन, लुक एट दिस थिंग. लग रहा है कि नीचे काफ़ी ज़्यादा एयर है जिसको ये पुश कर रहा है. विंग के साथ उसकी चेस्ट भी इन्वॉल्व है. इस लैंडिंग को देखते हैं. लुक एट द फिंगर्स एंड these things, lot of detail in the chest and the neck and everything is moving like a unit. Lot of fleshiness here. और लैंड करने से पहले वो फोल्ड कर रही है चीज़ों को. फोल्ड करने के बाद उसने रखा और उसके बाद इम्पैक्ट की फील है और वो उसके बाद स्प्रेड की फील है. द ओवरऑल thing is like overlapping and then has secondary actions over there. Look at the neck man, it is super active and everything is like connected with each other. There is no disconnection. Same for the tail, it cannot go like this. They are down there because they are hanging and they are like super heavy. So यहाँ पे उसने यूँ रेडी किया खुद को. यहाँ पे पाँव पहले आया, उसके बाद उसकी जो चीज़ें बाद में आई और उसके बाद उसने गैदर किया खुद को और उसके बाद ये रोर किया और उसमें चेस्ट को इन्वॉल्व किया. उसके बाद उसकी टेल मूव हो रही है. बट दिस थिंग इज लाइक सुपर हैवी गाय. दिस थिंग इज लाइक बिग ट्रेन और समथिंग लाइक दैट. अगेन समराइज करते हैं. सबसे पहले रिदम ऑफ द शॉट इज सुपर इंपॉर्टेंट. चीज़ें आ कैसे रही हैं, द रिदम शुड बी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस गाय विल लैंड, गैदर एनर्जी एंड देन रोर. After that we will animate root and then we will talk about the wings. और उसके बाद हमने hip की बात की, legs की बात की कि hip और legs एक दूसरे के साथ connected हैं. They should look heavy, they cannot broke. After that हमने बात की chest की. Chest should always work with the wings और wings हमेशा नीचे आते हुए slow आएंगे because there is a lot of air down there and then they will come up faster. जब हम उसको लैंड करेंगे तो हम गैदर करेंगे, उसके बाद हम उसको विंग्स को नीचे रखेंगे. अब उसके बाद हमने बात की नेक और हेड की. इट इज कनेक्टेड विद द स्पाइन, इट शुड लुक हैवी, इट हैज लॉट ऑफ एनर्जी. उसके बाद टेल भी हमने देखी. टेल को हम एंड पे एनिमेट करते हैं. ये कनेक्टेड है उसकी स्पाइन के साथ एंड इट कैन नॉट बी ब्रोक. इट शुड लुक हैवी. और उसके बाद डिटेल्स, जिगल्स ऐड करो, मतलब मसल्स वगैरह की फील ऐड करो, हैवीनेस ऐड करो. जहाँ पे आपको लगता है कि यहाँ पे फ्लैशीनेस ऐड की जा सकती है वहाँ पे फ्लैशीनेस ऐड करो. ओके मैन, आज के लिए इतना ही. नेक्स्ट टाइम मिलते हैं. टेक केयर. Today we will review animation done by Mohammad Raza Changizi. He is super good animator. He just wanted fresh eye. तो आइए इस एनिमेशन को देखते हैं. So cute, बहुत क्यूट करेक्टर है. यूँ आता है, यूँ जंप करता है और सेकंड जंप किया
और पत्थर ज़मीन से निकला और ये मारा उसको। तो सबसे पहले अगर हम इस एनिमेशन को देखें तो इसमें मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही है। सबसे पहले जो चीज़ है वो है कैमरा। तो कैमरे को अगर हम देखें तो वो मूव कर रहा है विदाउट एनी पर्पस और रीज़न, या वो कैरेक्टर के साथ साथ मूव कर रहा है या उससे पहले मूव कर रहा है। तो हमेशा हम याद रखेंगे कि जब हम कैमरे को एनिमेट करेंगे तो हम लोग एक्शन को फॉलो करेंगे। हम लोग कैमरे को पहले मूव नहीं कर सकते, या हम लोग विदाउट एनी रीज़न उसको मूव नहीं कर सकते। दूसरी अहम चीज़ है कि जब ये किक करता है उसके बाद अचानक से वो 180 रूल को क्रॉस कर रहा है। 180 रूल क्या है इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। 180 रूल में होता है कि कैरेक्टर जिस साइड पे होता है हम लोग उसी तरफ कैमरा लगा सकते हैं, हम उसकी साइड को शिफ्ट नहीं कर सकते। तो अभी ये हो रहा है कि कैमरा उसकी राइट साइड पे था तो अचानक उसकी लेफ्ट साइड पे आ गया। तो हम लोग मेक श्योर करते हैं कि हम लोग अगर लाइन एक ड्रा करें उस कैरेक्टर की मूवमेंट पे तो कैमरे को हम एक ही साइड पे रखते हैं। जो ही कैमरा मूव करके इस लाइन को तोड़ता है तो ये हमने रूल ब्रेक किया है जिसको हम 180 रूल कहते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि कैमरे को एक ही साइड पे हम लोग रखें। मुझे लगता है कि हम शुरू में कैमरे को सीन रख सकते हैं, उसके बाद जब वो कैरेक्टर सीन में इंटर होता है उसके बाद हम लोग उसमें मूवमेंट ऐड कर सकते हैं। इसी तरह जब वो जंप करता है उसके बाद कैमरा मूव करना चाहिए। उसके बाद जब वो नीचे आना शुरू होता है तो हम लोग 2-3 फ्रेम का डिले डाल सकते हैं। सेम फॉर दिस वन। अभी कैमरा यूं अचानक से रुक जाता है तो हम लोग कोशिश करेंगे कि कैमरे की मूवमेंट को भी ना हम लोग थोड़ा सा कंटिन्यू रखें, ईज इन डाल दें इसमें। अभी ये एक ही फ्रेम में झटके से रुक रहा है और जब वो जंप करता है तो कैमरा पहले मूव कर रहा है, वो एंटीसिपेशन में है। और इसी तरह जब वो नीचे आता है तो दोनों एक साथ नीचे आ रहे हैं। और दूसरा ऑप्शन ये है कि हम लोग कैमरे पे ज़्यादा काम ना करें और जब हमारी एनिमेशन फाइनल हो जाए उसके बाद हम लोग कैमरे को ट्वीक करें। उसका फ़ायदा ये होता है कि हम लोगों को ऑलरेडी के एक्शन मिल जाता है जिसको हम लोग फॉलो कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं इसकी पेसिंग की। 1 2 3 4 इसकी जो पेसिंग है ऑलमोस्ट इवन है। हमेशा वैरायटी को मद्देनजर रखते हैं कि वेरिएशन कैसे डाली जाए। ये बड़ा सा जंप किया, फिर दूसरा बड़ा जंप किया और फिर उसने किक किया। तो ये जो जंप्स हैं इनको हम लोग डिफरेंट वेरिएशन दे सकते हैं। सो तो मे भी पहला जंप छोटा हो, उसके बाद उसके बड़ा और एंड पे बहुत बड़ा, या हम लोग डिफरेंट वेरिएशन ट्राई कर सकते हैं कि पहली दफ़ा आया, बड़ा जंप किया, फिर छोटा और फिर उसके बाद बड़ा जंप किया, या ग्रेजुअली जंप्स की जो हाइट है उसको हम लोग वेरी कर सकते हैं। सीन का की मूवमेंट है ये, जब एक हिट करेगा इसको तो हम उसको स्लोमो भी कर सकते हैं, ये भी ऑप्शन है। स्लोमो ना भी करें तो भी हम लोग इसको इस तरह से प्ले कर सकते हैं। अब हम आ जाते हैं इसकी आर्क्स की तरफ। जो जंप्स हैं उनकी जो आर्क्स हैं वो नहीं है, प्रॉपर नहीं है। तो हम कोशिश करेंगे जब भी आर्क को ड्रा करें तो प्रॉपर एक आर्क हम लोग उसको फॉलो करें। तो हम लोगों को इस चीज़ को मद्देनजर रखना है कि उसकी जो आर्क्स हैं सही बाउंसिंग बॉल वाली आर्क्स हो, अनटिल कि वो फ्लाई नहीं कर रहा। अगर वो फ्लाई कर रहा है खुद से तो ये चीज़ वैलिड है, लेकिन उसके लिए भी हमें कुछ ना कुछ सोचना पड़ेगा कि वो कैसे इस तरह उड़ पा रहा है। तो हमें कोई ना कोई रीज़न क्रिएट करना है। तो ऑलवेज कीप एन आई ऑन द आर्क्स। अब हम चलते हैं टाइमिंग की तरफ। तो जैसे भी आता है तो वो लैंड की जो टाइमिंग है, और अमूमन हम लोग देखते हैं कि टाइमिंग में वेरिएशन कैसे डालते हैं कि लैंडिंग जल्दी हो, उसके बाद जल्दी से लॉन्च हो, और एयर में हम लोग थोड़ा सा स्पेस दे देते हैं या हम लोग ज़्यादा टाइम दे देते हैं, उसके बाद वो नीचे आए। फिर इसी तरह दूसरा जंप और एयर में थोड़ा सा टाइमिंग ज़्यादा दे दी हमने, फिर वो नीचे आएगा और ये एंड पे किक मारी। अब हम बात करते हैं एंटी की और फॉलो थ्री की। मुझे ये लगता है कि जब वो सीन में फर्स्ट टाइम इंटर होता है, लेकिन जब हम स्ट्रेच करते हैं किसी भी कैरेक्टर को तो हम कोशिश करते हैं कि पूरी बॉडी को स्ट्रेच किया जाए। इसी तरह हम लोग जब लैंड करते हैं तो हम लोग ये मद्देनजर रखेंगे कौन सी चीज़ कहाँ से आ रही है और क्लियर सिलवेट बन पा रही है नहीं बन पा रही। तो जैसे अभी कुछ चीज़ें हैं जो कि सिलवेट उसकी क्लियर नहीं कर पा रही, इसी तरह हम लोग स्क्वाश एंड स्ट्रेच को यूज़ कर सकते हैं इसकी स्पेसिंग को जस्टिफाई करने के लिए, क्योंकि अभी यहाँ से यहाँ तक बहुत बड़ी स्पेसिंग है।
और दूसरी चीज़ हम लोग जब वो लैंड करता है तो मे बी हम लोग कुछ चीज़ें कुछ मतलब छोटे छोटे पत्थर यहाँ पे पड़े होंगे जो कि उसके इम्पैक्ट से नीचे गिर सकते हैं, जो कि एक एक्स्ट्रा वर्क है जिसको हम लोग इस आइडिया को सेल करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि ये लैंड किया इसने और उस पर इम्पैक्ट आया, तो ये जो इम्पैक्ट है ये बढ़ जाएगा इसका। अब हम देखते हैं कि यहाँ से यूँ उसने जंप शुरू किया तो इसमें एंटिक मिसिंग है, ऊपर की तरफ जंप लगा लेता है। दूसरा इसकी आर्क्स पे हम लोग काम कर सकते हैं अगर वो फ्लाई नहीं कर रहा। अगर वो फ्लाई कर रहा है तो दिस इज़ गुड, यू कैन कीप दैट वन। बस यहाँ पे जो ये स्ट्रेट इसकी आर्क होगी इसको आप लोग देख सकते हैं, हम लोग इसको एक कर्व की शक्ल दे सकते हैं। अभी ये बहुत स्ट्रेट है तो वी हैव टू कीप इट लाइक दिस। इसको हम लोग इसकी स्पेसिंग को ओवरऑल देखेंगे कि जैसे बाउंसिंग बॉल में यूँ ऊपर जाता है और यूँ नीचे आता है, इसको हम लोग प्रॉपर बाउंसिंग बॉल की तरह ट्रीट कर सकते हैं बॉडी को। इसी तरह ये जब स्ट्रेच हो रहा है तो ये टांग इसमें सिलवेट वगैरह क्लियर नहीं है, इसको हम लोग मज़ीद क्लियर कर सकते हैं। सेम यहाँ पे भी लैंडिंग का इशू है कि लैंडिंग के बाद उसको फॉलो थ्रू में नीचे जाना, मज़ीद बियॉन्ड जाना, फिर ऊपर आना, एंटिक करे और उसके बाद यूँ हवा में आए प्रॉपर आर्क के साथ हम लोग उसको नीचे। अच्छा, जब वो नीचे आ रहा है तो मुझे लगता है कि यहाँ पे हम लोग स्क्वाश का पोज डाल सकते हैं क्योंकि हमने ऑलरेडी यहाँ पे स्क्वाश किया, फिर स्ट्रेच किया करैक्टर को यहाँ पे और उसके बाद हम लोग यहाँ पे उसको स्क्वाश कर सकते हैं और यहाँ पे स्ट्रेच किया उसने और ये ज़मीन पे लगा ढुस। शायद उसकी टांगें इतनी ज़ोर से उसने मारी ज़मीन पे कि वो ज़मीन से एक पत्थर जो है वो यूँ निकल गया। दूसरी चीज़ हम लोग देखेंगे कि जब वो करैक्टर नीचे आता है तो उसको हम लोग एक आर्क में लेके आएंगे यूँ ऐसे। यहाँ पे हमें ये भी देखना है कि करैक्टर यूँ प्रॉपर नीचे से होकर यूँ ऊपर आया। नेक्स्ट जो बड़ी मूव है उसके लिए हमें देखना है कि एंटिसिपेशन में वो भी रोटेशन आपने ऐड की है तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मज़ीद इसको एग्जैजरेट कर सकते हैं, लेकिन आप पूरी बॉडी को इन्वॉल्व करोगे तो ये एंटिसिपेशन बहुत अच्छी लगेगी और भी अच्छा लगेगा अगर ये ऊपर देखता रहे जहाँ पे उसने जाना है, तो इसका एम हमेशा ऊपर ही रहे। तो इस मोमेंट में हम लोग मज़ीद होल्ड डाल सकते हैं। अभी ये जो एंटिक, क्योंकि एंटिक है यहाँ पे और फिर वो किक कर रहा है तो यहाँ पे आगे थोड़ा सा हम लोग होल्ड डाल सकते हैं और फिर ये किक करेगा। इसमें टांग एक बहुत बड़ी हो रही है, दूसरी छोटी हो रही है, तो हमें इस चीज़ को भी जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे हम लोग स्मेयर फ्रेम ऐड कर सकते हैं। हमें मतलब अगर हम इसी टांग को डुप्लीकेट करें तो या तो लाइन वाला स्मेयर ऐड कर सकते हैं या इस तरह का कुछ ऐड कर सकते हैं जो कि इसकी पाथ ऑफ एक्शन को एक्सप्लेन करेगा। ओके, और वही चीज़ हमें कैमरे को उस तरफ नहीं करना, 180 रूल को फॉलो करना है हम लोगों ने, क्योंकि अभी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है उसकी वजह से। और ये दूसरा ऑप्शन ये है कि जब हम 180 डिग्री रूल को ब्रेक करते हैं तो हम एक्शन को रिपीट कर सकते हैं, कि जैसे ये पत्थर को मारने वाला एक्शन हम लोग दूसरे एंगल से रिपीट कर दें तो माइंड में कंटिन्यूटी वाली फील आ जाती है। नेक्स्ट चीज़ आ जाती है हमारी, यहाँ पे जो नीचे आ रहा है करैक्टर, ये बहुत ज़्यादा सिमेट्री क्रिएट कर रहे हैं, स्पेशली अपर बॉडी। हमने देखना है कि कंटिन्यूटी में हम लोग कहाँ से आ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। दूसरा, जहाँ पे आपको सिमेट्री नज़र आती है इसको आप ब्रेक करें, और इसी तरह यहाँ पे लैंड करते हुए भी सिमेट्री क्रिएट कर रही है, तो कोशिश करें इसको सिमेट्री को ब्रेक कर दें। करैक्टर को आप रोटेट कर सकते हैं, एक बाजू ऊपर कर सकते हैं, एक को यूँ बेंड कर सकते हैं। तो क्योंकि ये ऊपर से आ रहा है इसको मज़ीद और नीचे जाना है, जैसे बाउंसिंग बॉल में होता है या जो रियलिस्टिक मूवमेंट, ऐसा हमें रियलिस्टिक मूवमेंट उसमें होता है, क्योंकि इतनी मोमेंटम से वो नीचे आ रहा है तो उसको मज़ीद नीचे आना है, तो उसकी बॉडी मज़ीद नीचे की तरफ आएगी, फिर ये ऊपर की तरफ आएगा। इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, मज़ीद चेस्ट को और लोअर बॉडी को इन्वॉल्व करके हेड की रोटेशन ऐड कर सकते हैं, इनमें भी एक ब्लिंक डाल दो, ऐसा कुछ हम लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम टांग को डिले कर सकते हैं एक फ्रेम के लिए और फिर ये किक करेगा। अभी ये हो रहा है कि सब चीज़ें एक ही फ्रेम में मतलब एक साथ हो रही है। हमेशा माइंड में हमने रखना है कि हमने एंटी को मिस नहीं करना और फॉलो थ्रू को मिस नहीं करना। फॉलो थ्रू क्या है, जैसे वो लैंड किया उसके बाद फॉलो थ्रू में बॉडी ने क्या किया, और हमेशा हम एक्शन करने से पहले प्रिपेयर होते हैं, उसके बाद हम एक्शन करते हैं और फिर रिएक्शन होता है। मोमेंटम को एनिमेट, हमेशा हम लोग बॉडी के मोमेंटम को मद्देनजर रखते हैं हम लोग, तो हम हमेशा देखते हैं कि बॉडी कहाँ से आ रही है, किस स्पीड से आ रही है, और उस स्पीड को हमें कैरी करना होता है। कैरी करके हम लोग एक्सपोज करते हैं, और हमेशा हम माइंड में रखेंगे कि बॉडी जनरेट करेगी पावर और उसके बाद रिलीज करेगी। तो उस पावर को जनरेट करने के लिए हमें एंटिसिपेशन या बॉडी को प्रिपेयर करना है या वो मोमेंटम क्रिएट करना है जिसको बाद में बॉडी रिलीज करेगी। तो
तो दोस्तों सम अप करते हैं। सबसे पहली चीज़ कैमरे की मूवमेंट को हमेशा माइंड में रखें कि वो फॉलो करे एक्शन को। उसके बाद हम लोग हमेशा याद रखेंगे कि शॉट की पेसिंग क्या है। तो हम लोग इवन टाइमिंग को ब्रेक करेंगे। अमूमन इवन टाइमिंग को रियलाइज़ करने के लिए क्या करते हैं, हम ब्रेक करते हैं किसी भी शॉट को और उसके बाद काउंटिंग शुरू करते हैं। लेट्स से 1 2 3 4। तो इस तरह की जो टाइमिंग है ये अमूमन इवन होती है, जो कि बोरिंग लगती है। तो हमेशा उसको ब्रेक करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग टाइमिंग को वेरी करते हैं डिफरेंट जंप्स की, जो हमने अभी यहाँ पे की है। तो हम लोग कहते हैं, तो अगर हम पेसिंग को माइंड में रखेंगे और शुरू में हम लोग इसको टैकल करेंगे तो हमारा शॉट अच्छा लगना शुरू हो जाएगा। और दूसरी अहम चीज़ है, फ्रेश आई के लिए हम चीज़ों को फ्लिप करके देख सकते हैं। अमूमन अक्सर प्लेयर्स अलाउ करते हैं कि हम लोग अपनी एनिमेशन को फ्लिप करके देख सकें, तो उससे भी हमें एक फ्रेश आई मिल जाती है और हमें अपनी कुछ चीज़ें जो नज़र नहीं आ रही थी उस एंगल से, हमने बार बार एक चीज़ को जब देख रहे होते हैं तो वो हमारी मतलब माइंड उसको उस तरह से डिटेक्ट नहीं करता, और अचानक से हम नए एंगल से देखते हैं तो हमारा माइंड फुल क्लिक करता है कि हाँ यार यहाँ पे गड़बड़ है, कोई मसला है। ओवरऑल एनिमेशन सुपर गुड है। इसको मज़ीद हम पॉलिश कर सकते हैं, हम कैमरास को बेहतर कर सकते हैं, लेकिन नो डाउट इट इज़ अ गुड स्टार्ट फॉर एनी एनिमेशन। तो दोस्तों नेक्स्ट टाइम मिलते हैं मज़ीद रिव्यूज़ के साथ। तो अगर आपको कोई रिव्यू देना है, आप प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू अप्रोच मी। आप बिल्कुल मुझसे कांटेक्ट करें और अपनी एनिमेशन मुझे दिखाएं। इससे मुझे भी सीखने को मिलेगा और औरों को भी सीखने को मिलेगा। जो दूसरे एनिमेटर हैं, जो यंग एनिमेटर हैं, वो भी आपकी एनिमेशन को देख के सीख सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट रिव्यू में। Let's play this animation over here. ये चीज जंप आ रहा, ये बैठा। Lot of work, man. It is lot of work. 4 lakh creature is super hard. और आपने जो क्वांटिटी एनिमेट की है, it is mind blowing. ओवरऑल अगर हम इसको देखें तो ये इसकी फिजिकलिटी में मुझे मसला लग रहा है। मे बी यू फॉलो द रेफरेंस, बट हेयर इट इज़ नॉट फील लाइक दैट। ये जंप आप बेहतर कर सकते हो। इफ़ यू सी इट हेयर, द वेट डिस्ट्रीब्यूशन इज़ नॉट करेक्ट। सेम जब ये जंप करते हैं तो अपर आर्म को ये करीब ले आते हैं, यहाँ पे ये बिल्कुल लॉक हो गया है। इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। इसकी स्ट्रेचिंग का एक पूरी फिजिकलिटी है, यू हैव टू फॉलो दैट। ओवरऑल यू हैव टू वर्क ऑन दिस जंप थिंग। इसके अलावा ये हमारा शोल्डर, इसमें पॉपीनेस आ रही है थोड़ी सी, तो स्पेसिंग वाइज इसको ओवरऑल देख सकते हैं। सेम यहाँ पे जब ये वेट रखता है तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा रोटेट हो रही है। तो मेरा मशवरा ये है कि स्टडी द रेफरेंस मैन, स्टडी द रेफरेंस कि ये चीज़ें मूव कैसे होती हैं असल में, रियल लाइन में ये कैसे चीज़ मूव होती है, और उसको तुम फॉलो करने की कोशिश करो। और जब ये वेट डालता है तो ये चीज़ थोड़ी सी बेंड होगी, नीचे की तरफ आएगी। एंड वी हैव टू रिस्पेक्ट द ओवरऑल एनाटॉमी ऑफ द लेग ओवर हियर। बट यहाँ पे ये जब ये वेट डालता है किसी भी टांग पे, तो पूरा उसकी वेट को वो कैरी करती है। इतना बेंड नहीं मिलता अमूमन टांग में। तो ये सीधी हो रहने की कोशिश करेगी ये टांग, क्योंकि इसमें सारा वेट आ रहा है, तो इस तरह से एल्बो बाहर नहीं आएगी। सेम ये पाँव इस तरह से नहीं रखते, ये यहाँ पे कुछ इश्यूज हैं हमारे पास। वी कैन ऑलवेज फिक्स दैट। आई कैन सी दैट यू हैव लॉट ऑफ क्वांटिटी, लेकिन यू कंप्रोमाइज द क्वालिटी। तो छोटा सा शॉट कर लो, इतना बड़ा शॉट नहीं करो। लाइक make it like maybe 100 frames, it is enough, but make it like super good, polish कर दो उसको। अब उसके बाद यहाँ पे ये जो जंप है ना, ये मतलब इस तरह से जंप, वही चीज़ रेफरेंस शूट करेंगे आपको आइडिया हो जाएगा। सेम लैंडिंग का है, और दिस थिंग इज सुपर हार्ड मैन, द लैंडिंग इज सुपर हार्ड। अभी उसने क्या करना है, अपना वेट फेंका और उसके बाद उसको कैरी करना है ओवरऑल, विच इज अ हेल ऑफ अ थिंग मैन। यू हैव टू स्टडी द रेफरेंस। देखो कि लाइन करते क्या है, उसकी हिप कैसे आती है, चेस्ट कैसे आती है। यहाँ पे ओवरऑल हमारा वेट आउट है, यहाँ पे बिलीवेबल नहीं है। लाइक यहाँ पे ये अंदर जा रहा है। रेफरेंस को हम लोग 100% फॉलो ना भी करें, लेकिन उसमें जो फिजिकलिटी है उसको हम लोग कैप्चर करना है, ठीक है। सेम ओवर हेयर, ये टांग यहाँ पे आ रही है, यहाँ पे ओवरऑल आपका जो टाइगर है, ये लाइन है या लाइनस है, ये ना मतलब बैलेंस नहीं है ओवरऑल। अमूमन ये लाइनें पैरेलल रहने की कोशिश करते हैं, तो हमें इस चीज़ों को माइंड में रखना है। ओवरऑल ये ऐसे लग रहा है कि ये पीछे की तरफ जा रहा है वेट, यहाँ पे दोनों टांगों पे वेट है। तो अगर हम उसको टॉप से देखें तो इट इज़ नॉट आई थिंक अपीलिंग इनफ। तो वी हैव टू फाइंड अ गुड लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेट एंड एवरीथिंग।
ये इस तरह से मूव नहीं करती, दे हैव टू बी पैरेलल विद ईच अदर लाइक दिस। स्टडी द एनाटॉमी ऑफ दैट, दिस इज एक्चुअली हमारा, जैसे हमारा फुट होता है तो ये फुट है उनका, तो ये हमारे पास टोज है एंड दिस इज नी एंड ऑल दैट, तो ये चीजें पैरेलल रहेंगी। दिस इज नॉट बैलेंस्ड इनफ। उसके बाद अचानक से हमारा टाइगर, हमारी लाइन जो है वो लाइनस है, वो यूं स्लाइड करके, ये फिजिकलिटी की कमी है। तो रेफरेंस जो आप शूट करेंगे या देखेंगे उसमें फिजिकलिटी को माइंड में रखना है। ओवर हेयर इट इज स्लाइडिंग लाइक दिस, इट्स नॉट पॉसिबल एक्चुअली। ये यहाँ पे क्या हो रहा है, नॉट क्लियर इनफ। अभी इसका वेट कहाँ पे है, किस लेग पे है और कौन सी लेग कहाँ पे है, बिकॉज दिस क्रीचर इज सो हैवी, बहुत हैवी होते हैं ये, उनको अपने वेट को संभालना है। इधर वेट नहीं है, सही जगह पे नहीं है, द वेट इज ओवर हेयर, द लेग्स आर ओवर हेयर, और यहाँ पे भी ये कैरी नहीं कर पा रहा वेट को। तो ये पोज वाइज तो मे भी अच्छा हो, लेकिन वेट वाइज ही अच्छा नहीं है। सेम यहाँ पे ये जो मूवमेंट है, इट इज हाइपर एक्सटेंड इन द लेग बहुत ज्यादा हाइपर एक्सटेंड हो रही है हमारी ये चीज, और ये तो बड़ा मुश्किल है इसका, बिकॉज फेस आई एनिमेट दिस गाय एंड दिस फेशियल इज सो नॉट गुड। तो फेशियल शॉट इससे करना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये जो फ्लिक करते हैं तो ये एक सर्कल में फ्लिक करते हैं, और यहाँ से रोटेट नहीं करता अमूमन हमारा ना, कान नीचे से रोटेट करता है, बेस से रोटेट करता है। जो अपर वाला पार्ट है वो शायद इतना फ्लेक्सिबल नहीं होता, लेकिन यहाँ पे जैसे कैट्स होती है उनकी नीचे से कान रोटेट करता है उस तरह से। इट इज कमिंग इन द मोमेंटम, उस मोमेंटम को कैरी करना है और उसको फिर गैदर करना है। इट इज द सुपर हार्ड शॉट एक्चुअली, सुपर हार्ड। दिस वन लाइक जंप एंड, और उसको बैठना तुमने ट्राई किया है। अगर मैं फर्स्ट टाइम मैं ट्राई करता तो मेरी एनिमेशन बहुत बुरी होती। आई नो यू कैन एनिमेट सुपर गुड, बट अभी क्या है कि फिजिकलिटी देख लो, ओवरऑल फिजिकलिटी को फॉलो करना है, इनकी मैकेनिक्स एनाटॉमी कैसी है चीजों की, उसको देख लो। नेक्स्ट हम आते हैं इस एनिमेशन पे। अगेन दिस वन इज लाइक वॉक साइकिल। इतनी लेग बेंड नहीं होती इनकी ना, ये इनको कैरी करना, वेट को कैरी करना इस तरह से कि ये पूरी लेग स्ट्रेट रहने की कोशिश करेगी। तो यू हैव टू स्टडी द वॉक साइकिल फ्रॉम द रियल एनिमल। इस पील ऑफ को तुम बेहतर कर सकते हो। अभी यहाँ से ये एक बहुत बड़ा एक जंप आ रहा है, जैसे यहाँ पे हम साइड से देखें तो इट इज लुकिंग गुड, बस ये स्पेसिंग कुछ ज्यादा है, तो मे बी हम यहाँ पे मजीद इसको थोड़ा सा बेहतर कर सकते हैं स्पेसिंग। सेम ओवर हेयर, दीज थिंग्स दे डोंट मूव लाइक दिस, और ये चीज टूट रही है, सेम फिजिकलिटी इज नॉट देयर। फ्रंट से आपका पोज बहुत बेहतर है, ये आपने माइंड में रखी है चीजें, लेकिन यहाँ पे ये हिट कर रहा है सामने से आते हुए। लाइक पाँव के लिए जब हम पाँव को सिलेक्ट करते हैं तो रोल का एक कंट्रोलर, उसको यूज नहीं करना, डोंट यूज दैट। दिस पीलिंग ऑफ और आगे यहाँ पे रखना इज सुपर हार्ड। जैसे यहाँ पे ये पाँव इस तरह से नहीं रखा जाता, तो वही चीज़ हम फिंगर्स को ज्यादा रोटेट नहीं कर सकते। हिप साइडवेज भी जा रही है, उसके अलावा रोटेशन वाइज भी उसमें चीजें आ रही है, कौन सी लेग में कितना वेट है और वो लेग का पोज कैसा होगा, इसका हमें ख्याल रखना है। दिस वन इज लाइक टोटली ब्रेकिंग अप एक्चुअली। नेक्स्ट वन इज द रन। ओके, यहाँ पे वही चीज़ है, इंटरसेक्शंस है बेशुमार, इनको फिक्स कर लें आप। यू ऑलरेडी डिड द डॉग रन, यू कैन डू टाइगर और दिस बिग कैट रन, यू कैन डू दैट। I will not go into detail, but always follow the reference. Okay, this one overall you have the feel, but the physicality is not there, and then the spacing is not there. But you have to find a good reference for that. The real tiger कैसे भागते हैं, उनकी टांगे कहाँ पे, एक फ्रेम को आप नेल करो, उसको अच्छा से बना दो। Like over here it is stucking over here, and ball hits हैं, spacing के issues हैं। Again man, as a first try you are amazing. These अमूमन creatures they are super heavy and they are lazy. They don't like take their legs to the highest point. तो हमेशा ये कम मूव करना चाहते हैं, क्योंकि इनको एनर्जी सेव करनी है, इनको शिकार करना है, इसको खाना है और मजे करने हैं। लेकिन जितनी मूवमेंट कम करेंगे वो एनर्जी सेव करेंगे। विदाउट अ रीजन दे डोंट मूव एक्चुअली। अगेन सुपर गुड मैन, बेस्ट ऑफ लक। लगे रहो, करते रहो, इसको करते रहो, बस रुकना नहीं है, बस करना है इसको। थोड़ा थोड़ा करो, अच्छा करो, दिखाओ, जिसने क्रीचर किया उसको दिखाओ, दोस्तों को दिखाओ, और उसको पॉलिश करो, पॉलिश करते रहो। 100 फ्रेम लो, 60 फ्रेम, कुछ फ्रेम छोटा सा चंक लो, उसको पॉलिश करो, अच्छा करो, उसके लेवल को बढ़ा लो। बस जितना तुम फीडबैक लोगे उतना अच्छा है। ओके, टेक केयर। Let's watch this. Yeah, it is looking good. There are some polishing notes we can add up. I feel like your spacing is out, like on some areas. So the first thing I will talk about the spacing of overall body parts. If you watch this leg over here, this over here, it is broken. So we can make it not so hyper extended, क्योंकि डॉग्स की जो लेग्स हैं वो ना मतलब इतनी ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हम लोग कर सकते। वी हैव टू रिस्पेक्ट द एनाटॉमी अंडर दैट। यहाँ पे हाइपर एक्सटेंड हो रही है, यू कैन ऑलवेज
फिक्स दैट। यहाँ पे आप वेट के लिए थोड़ा सा आप नीचे ज़्यादा बेंड कर सकते हैं ताकि वेट की फील आए। ओवर हियर यू कैन बेंड अ लिटिल डाउन टू हैव अ फीलिंग ऑफ वेट। यहाँ से यहाँ पे स्पेसिंग बहुत ज़्यादा है, लाइक अचानक से ना ये अगर आप देखें इसको तो बहुत तेज़ी से पीछे की तरफ टांग आई और यहाँ पे झटके से रुक गई है। तो यहाँ पे हमें स्पेसिंग को ठीक करना है, मे बी ये अलग थोड़ी सी यहाँ पे आएगी ताकि वो फ्लो बने स्पेसिंग का। यहाँ पे भी सेम वही है कि आपकी लग फ़ौरन यहाँ पे आ जाती है, इस फ्रेम से यहाँ पे जंप कर रही है, तो आपको मिडल में एक फ्रेम ढूंढना है इसकी स्पेसिंग को इवन करने के लिए या थोड़ा सा बेहतर करने के लिए। इवन करने से बेहतर लफ्ज़ है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए स्पेसिंग को। यहाँ पे आप थोड़ा सा पीछे लेके आ सकते हो। दिस वन इज गुड। सेम ओवर हेयर, दिस लेग इज एक्सटेंडिंग। इस लेग में भी सेम इश्यूज हैं, इसकी एनाटॉमी ब्रेक हो रही है। डोंट एवर डू दैट, ऑलवेज रिस्पेक्ट द एनाटॉमी ऑफ एनी क्रीचर। यहाँ पे आप थोड़ा सा बेंड कर सकते हो टू रियली शो द वेट इज देयर। दिस वन इज नॉट बैड बट मे बी वी कैन मेक इट ओवर हेयर स्पेसिंग को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। इसके अलावा यहाँ पे वॉल हिट कर आपका हेड स्पेसिंग का ख्याल नहीं रखा हुआ आपने, तो अमूमन मैं ये करता हूँ कि हेड के कंट्रोलर को बेक कर देता हूँ किसी भी लोकेटर के साथ वर्ड में, क्योंकि हेड इज़ कनेक्टेड विद द नेक विद द चेस्ट और यहाँ पे पूरी बॉडी का एक कनेक्शन है। तो ये जो हेड में रोटेशन आ रही है वो उसकी अपनी नहीं है बल्कि पूरी बॉडी इसको इफेक्ट कर रही है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कोई भी आप ग्रुप बना लो, लोकेटर बना लो माया में, उसको इसके साथ पेरेंट कर दो, तो जो वैल्यूज ग्राफ की आएंगी वो वर्ड के अकॉर्डिंगली आएंगी। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आप उसको हाइपर एक्सटेंड ना करो, उसको थोड़ा सा ट्वीक कर सकते हो बट डोंट गो क्रेजी विद दैट। सेम फॉर द चेस्ट एंड हिप, आई ऑलवेज हैव लाइक दीज 3 कंट्रोलर्स बेक टू लोकेटर्स और ग्रुप्स। उनकी जो वर्ड में जो उसकी ग्राफ एडिटर है उसको हम लोग स्मूथ कर सकते हैं, तो ये स्पेसिंग के इश्यूज खत्म हो जाएंगे आप। सेम दिस गाय इज हिटिंग द वॉल ओवर हियर, तो ऑलवेज यू हैव टू लाइक बाउंसिंग बॉल काइंड ऑफ फील। ये वाली फील भी आ रही है कि यहाँ पे रुक रहा है, यहाँ पे इसका पाउंड टूटा हुआ लग रहा है। यू हैव टू रिस्पेक्ट द एनाटॉमी। टू मच रोटेशन ओवर हेयर, यहाँ पे भी कार्टूनी लग रहा है, बहुत ज़्यादा रोटेशन नहीं ऐड कर सकते हम लोग। वी हैव अ रेंज ऑफ मोशन फॉर ईच जॉइंट फॉर द डॉग, वी हैव टू अंडरस्टैंड दैट। इधर बहुत ज़्यादा कार्टूनी हो रहा है, यहाँ पे नीचे की तरफ यूँ जा रहा है, इधर ये पीछे यूँ चला गया, रोटेट हो गया। इधर भी आपको स्पेसिंग का ख्याल रखना पड़ेगा, स्पेशली इन दिस एरिया। सेम नोट लाइक बिफोर, हाइपर एक्सटेंडिंग द लेग स्पेसिंग, मतलब ओवरऑल जो स्पेसिंग है उसकी आर्क्स है वो क्या है हमें देखना है। अब यहाँ पे स्टक हो रही है आपकी टांग, यू रुक रही है स्पेसिंग वाइज, तो यू हैव टू मेक द फ्लो लाइक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेसिंग एंड यू हैव टू मेक श्योर कि एवरी फ्रेम शुड बी इन प्रॉपर पोजीशन, उसका फ्लो बन जाए। अभी यहाँ पे ये स्टक हो रही है और फिर अचानक से झटके से आगे की तरफ आ रही है और फिर यहाँ पे ये पोज बहुत ज़्यादा हो गया। कॉन्टैक्ट पोजीशन हमें चाहिए, यहाँ पे ये नीचे लगेगी, अभी हवा में है। दिस वन वी हैव टू, दिस वन इज लुकिंग गुड एक्चुअली, दिस वन इज सुपर गुड बिकॉज यू रिस्पेक्ट द ओवरऑल एनाटॉमी ऑफ द डॉग, क्योंकि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे को पैरेलल रहती हैं। सेम फॉर दिस वन, इट इज़ लुकिंग गुड। यहाँ पे वॉल से हिट कर रहा है, यहाँ पे आपका पाँव वॉल के साथ हिट कर रहा है। ऑलवेज ट्राई टू फाइंड द हिट्स यू हैव ड्यूरिंग दैट। यहाँ पे स्पेसिंग का हमें ख्याल रखना है, अभी यहाँ पे स्पेसिंग खराब है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है कि यू हैव टू कंप्रेस द लेग ओवर हेयर। अब यहाँ पे हम स्पेसिंग की बात करते हैं इसकी हेड की। सेम अगर हम टिप को, नोज़ की टिप को देखें तो स्पेसिंग को हम अच्छा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अभी ये स्पेसिंग सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हुई, तो ऑलवेज ट्राई टू लाइक मेक अ प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पेसिंग। अब कभी अभी हो रहा है कि कहीं पे ये स्पेसिंग बहुत कम हो जाती है, फिर ज़्यादा हो जाती है, फिर ऐसे ना, मतलब अभी अनइवन सी स्पेसिंग है, ठीक है। सेम ओवर हेयर, द ओवरऑल स्पेसिंग इज नॉट गुड। ओवरऑल आर्क कुछ यूँ है, इसको आप ठीक कर लो। यहाँ पे आपकी आर्क यूँ आ रही है, इसको आप बहुत अच्छा सा बना लो, लाइक दिस। द आर्क शुड बी लाइक दिस विद प्रॉपर स्पेसिंग एंड ऑल दैट। ओके, अभी ये पाऊँ यहाँ से यूँ, ये ऐसे आ रहा है, आर्क उसकी ख़राब हो रही है। सेम फॉर दिस गाय ओवर हेयर, दिस पॉइंट इज स्टकिंग इन द स्पेस फॉर लाइक some frames. You have to respect a proper spacing here. Maybe अभी यूँ मतलब दरमियान में आ रही है, ये स्पेसिंग अच्छी है यहाँ पे। और उसके बाद यहाँ पे कुछ यूँ स्पेसिंग आ रही है, सेम थिंग स्पेसिंग, वी हैव टू वर्क ऑन दैट। इधर स्टक हो रहा है, पिन बन रही है, पूरी बॉडी मूव कर रही है। यहाँ पे जैसे पिन नहीं होती, जैसे आप कील लगा के कैलेंडर टांगते, उसी तरह एक पिन का कॉन्सेप्ट एनिमेशन में। तो उसमें होता है कि एक पॉइंट एक जगह पे रहता है, बाकी पूरी बॉडी उसके अराउंड घूम रही होती है, ये रोटेट हो रही होती है, इसको हम पिनिंग बोलते हैं। यहाँ पे इधर भी वॉल से हिट कर रहा है, यहाँ पे इसको हम लोग बेहतर कर सकते हैं, स्मूथ कर सकते हैं। अच्छा, जो आपकी पाँव की मूवमेंट है अभी बिल्कुल यूँ स्ट्रेट है, स्ट्रेट पाँव जा रहे हैं, आ रहे हैं, जा रहे हैं। वी हैव टू फाइंड द प्रॉपर आर्क फॉर दैट।
मे बी बाहर से आ सकते हैं अंदर की तरफ, यूं पाँव सीध स्ट्रेट हो जाए, फिर बाहर से आए, फिर अंदर स्ट्रेट हो जाए, पुश करें खुद को। तो देयर शुड बी अ प्रॉपर आर्क। यू कैन बी फ्रॉम इनसाइड, लाइक यूं मारा उसने, पाँव मारा, उसके बाद अंदर की तरफ से यूं आगे की तरफ आ जाए। तो यू हैव टू फाइंड द बेस्ट ऑप्शन फॉर दैट। अगर हम इसकी टिप को ओवरऑल ट्रैक करें, इवन कि इसकी शेप्स को बेहतर कर सकते हो, टेल की शेप्स को, दे आर नॉट लुकिंग बेटर येट। सेम अगर टिप को हम लोग ट्रैक करें तो यूं करके यूं आ रही है स्पेस, ओवरऑल इसकी आर्क अच्छी नहीं है, इट शुड बी ब्यूटीफुल आर्क। सेम हियर। जब आप इसकी हिप को पॉलिश करोगे बेक करके, अगेन मैं उसका तरीका बता देता हूँ। लाइक ये आउटलाइनर हमारा, हम उसमें ग्रुप बनाएंगे, एक कंट्रोल जी किया, उसको पहले पेरेंट किया इसके साथ। अब पहले तो अलाइन करना है उसको, ठीक है। फर्स्ट स्टेप इज अलाइन। पहली चीज़ हमने ग्रुप बनाया, उसको अलाइन किया इसके ऊपर, रोटेशन वाइज हर चीज़। उसके बाद हमने इसको चाइल्ड बना दिया इसका, तो ये चाइल्ड बन गया। अब इसके बाद सारी इन्फॉर्मेशन आ गई, जैसे जैसे टेल मूव कर रही है वैसे वो मूव करेगी। अब हमने इसको बेक कर दिया, तो जो भी यहाँ इस पॉइंट की इन्फॉर्मेशन है वो इसके पास आ गई। अब हमने क्या किया, उल्टा किया काम, हमने इसको चाइल्ड बना दिया इसका। अब इसके पास जो ग्राफ में इंफॉर्मेशन आ रही होगी वो बहुत खूबसूरत, मतलब उसको हम लोग ट्वीट कर सकते हैं, अच्छा कर सकते हैं, बिकॉज ओवर हेयर यू हैव लॉट ऑफ नाइस। दिस सेम रूल अप्लाई फॉर द हिप एंड चेस्ट एंड मे बी फॉर हैंड, यू कैन डू दैट। और जब तुम ओवरऑल स्मूथ कर लो उस ग्रुप को या इस पॉइंट को ग्राफ एडिटर में, तो उसके बाद हम लोग इस पॉइंट को या किसी भी कंट्रोलर को हम लोग बेक कर देते हैं, और हमारे पास इंफॉर्मेशन सारी इसके पास आ जाती है। तो उससे हमें क्या फ़ायदा होता है कि अच्छी स्पेसिंग मिल जाती है, अच्छी आर्क्स मिल जाती है। अगर इसके बारे में कोई क्वेश्चन होगा, यू कैन ऑलवेज कॉन्टैक्ट विद मी एंड आई कैन मे बी मेक अ डेमो इन माया फॉर यू। सेम अगर हम इसको ट्रैक करें तो कुछ यूँ इसकी ओवरऑल बन रही है स्पेसिंग, सेम थिंग मैन। ओवरऑल योर रन इज़ लुकिंग गुड मैन, ओवरऑल इट इज़ लुकिंग गुड, बट इसमें पॉलिश कर लो, थोड़ा सा अच्छा कर लो इसको, एंड awesome हो जाएगा। Hello friends, I am Irfan and today I will review this animation। तो आइए शुरू करते हैं। This animation is done by इक़्तिदार सिद्दीकी। आइए इस एनिमेशन को देखते हैं। ये चीज ब्यूटिफुल, there is lot of energy there, बहुत अच्छे कैमरा एंगल्स हैं, पार्टिकल्स है, इफेक्ट्स हैं। इक़्तिदार, योर एनिमेशन इज ऑलरेडी सुपर गुड। आई हैव सम फीडबैक, यू जस्ट वर्क ऑन दैट एंड इट विल बी सुपर ऑसम। ओके, शुरू करते हैं। द फर्स्ट थिंग आई रियलाइज दैट एवरीथिंग इज हैपनिंग इन द सेंटर ऑफ द फ्रेम। इन माई ओपिनियन आप रूल ऑफ थर्ड को माइंड में रखते हुए प्ले कर सकते हैं इन डिफरेंट पोजिशंस पे। मे बी करेक्टर शुरू में यहाँ पे हो और उसके बाद वो ट्रैवल करे, जंप करे और वो करीब आ जाए कैमरे के। अभी ये हो रहा है कि आपका करेक्टर यहाँ पे है और जंप करके ऊपर जाता है और सेम पोजीशन पे नीचे आ रहा है, विच इज नॉट इंटरेस्टिंग इनफ। सो यू कैन ऑलवेज फाइंड गुड पाथ ऑफ एक्शन फॉर योर एक्शन। उसके बाद हम 6 फ्रेम पे आ जाते हैं। दोनों बाजू एट द सेम स्पीड ऊपर आ रहे हैं, सेम स्पेसिंग, सेम स्पीड, इवन एवरीथिंग इज गोइंग अप ओवर हियर इन माय ओपिनियन, बिकॉज दिस गाय विल यूज हिज लेफ्ट हैंड टू रियली मेक दैट डिस्पेशन वर्क। तो आप इसके लेफ्ट आर्म को ज़्यादा मूव कर सकते हैं इंस्टेड ऑफ के दोनों आर्म को मूव करें। तो मे बी यहाँ पे आपका लेफ्ट आर्म पहले मूव होगा, ज़्यादा मूव होगा, और जो राइट आर्म है वो इतना ज़्यादा मूव नहीं होगा, और मे बी बॉडी बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगी। आई ऑलवेज ट्राई टू फाइंड ऑपोजिट एक्शन इन एनिमेशन। ऑपोजिट एक्शन से क्या मुराद है, आपकी बॉडी के सभी पार्ट अगर एक डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वो रोबोटिक एनिमेशन लगती है, इवन दो इट इज़ रोबोट। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि कुछ मुझे चीज़ें ऐसी मिल जाए जिसको मैं ऑपोजिट मूव कर सकूँ। तो मे बी ये वाला आर्म अगर ऊपर मूव कर रहा है तो बॉडी नीचे मूव कर सकती है, और आर्म भी थोड़ा सा नीचे मूव कर सकता है। और उसके बाद मैं स्पेसिंग को वेरी करता हूँ, लाइक एवरीथिंग शुड नॉट मूव इन द सेम स्पेसिंग, इट शुड बी डिफरेंट। यू कैन फाइंड बेटर ट्रांजिशन फॉर दैट। अभी दोनों टांगें एक साथ स्प्रेड हो रही है, हम इसको ऑफसेट कर सकते हैं। मे बी हम इसकी लेफ्ट लेग को सेम पोजीशन पर रखते हैं, बॉडी नीचे मूव करेगी और पहले ये टांग जाएगी, उसके बाद ये वाली टांग इधर आएगी। और हमें वेट और बैलेंस को माइंड में रखना है, हमें वेट शिफ्ट को माइंड में रखना है। दिस पोज इज लुकिंग ऑलरेडी गुड, बट पर्सपेक्टिव फाइंड आउट कर सकते हैं। मे बी एक टांग आगे है, एक टांग पीछे है, तो अभी एक ही प्लेन के ऊपर दो टांगे हैं,
जो इसको 2D इफेक्ट दे रही है. ट्राई टू ब्रेक दैट वन. यहाँ पे इसका पोज बहुत सिमेट्री में है. वी कैन ब्रेक दैट सिमेट्री बाय फाइंडिंग आउट कि करेक्टर कहाँ से आ रहा है और किस तरफ जा रहा है. बिकॉज इन दिस पोज हिज लेफ्ट आर्म इज डाउन देयर. वी कैन मेक दिस पोज बेटर बाय मूविंग दिस आर्म मे बी डाउन. ये आर्म थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी. वी कैन ब्रेक द सिमेट्री इन द लेग्स टू. तो हम इस पोज को थोड़ा सा बेहतर बना सकते हैं. तो हमेशा हम लोग एक्शन के फ्लो को माइंड में रखेंगे. करेक्टर कहाँ पे था और कहाँ पे जा रहा है. मैं हमेशा स्क्रब करके देखता हूँ कि करेक्टर कहाँ पे था और कहाँ पे जा रहा है, और उसके मुताबिक पोज को हम लोग एडजस्ट कर सकते हैं. आई रियली लव दिस वन मैन. बहुत अच्छा इफेक्ट आपने लगाया है. लव इट, सो गुड. द नेक्स्ट वन इज द स्पेसिंग फॉर द करेक्टर. अभी ऐसे लग रहा है जैसे यहाँ पे करेक्टर हाल्ड हो गया थोड़ी देर के लिए, तो मे बी वी कैन फाइंड अ गुड पाथ ऑफ एक्शन फॉर दी होल एक्शन. ऐसी फीलिंग आ रही है कि जैसे यूं करेक्टर ऊपर गया था तो यहाँ पे गायब हो गया और उसके बाद यूं नीचे आ रहा है. तो मे बी आपकी लॉन्चिंग को आप थोड़ा सा आगे की तरफ लीन कर सकते हैं और एक अच्छी सी ट्रैजेक्टरी बना सकते हैं. यू हैव टू डबल चेक इन पर्सपेक्टिव. ओवर हियर द करेक्टर फील्स लाइक इट इज स्टक इन द स्पेस. तो वो जो ट्रैवलिंग की फील है वो नहीं आ रही. ओवर हियर दिस पोज इज नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ. वी कैन मेक इट स्ट्रॉन्गर बाय मूविंग दिस आर्म बैक देयर. हम बॉडी को ट्विस्ट कर सकते हैं इस तरह से कि इसकी राइट आर्म पीछे चली जाए और लेफ्ट आर्म आगे आ जाए. इस पोज को पुश करने से उसकी एंटिक और उसकी सिलवेट ज़्यादा क्लियर हो जाएगी. यहाँ पे ये पोज भी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है. हम इसको स्ट्रॉन्गर कर सकते हैं बाय मेकिंग दिस लेग लाइक दिस. मेक इट मोर क्लियर. मे बी ये लेग यहाँ पे आ जाएगी और इसका हेड यहाँ पे है. इस एल्बो को हम लोग बाहर लेके आ सकते हैं और इस आर्म को हम लोग स्ट्रॉन्ग पोज दे सकते हैं. सेम फॉर दिस वन. This frame is looking super good. Maybe we can bring this arm over here. These lines, they are looking awesome. अब यहाँ पे अचानक कुछ हो गया, हमें नहीं पता क्या हुआ है. उसने पंच मारा और यहाँ पे ब्लर है चीज़ें, उसकी बॉडी नज़र नहीं आ रही. We can guess कि क्या हो रहा है, लेकिन it is not clear enough. तो यहाँ पे हमने डिसाइड करना है कि इसकी फिजिकलिटी कैसी थी, कि जब हम पंच करेंगे तो उसकी बॉडी रिएक्ट कैसे करेगी. अभी ये लग रहा है कि विद इन वन फ्रेम उसकी बॉडी यहाँ पे रुक गई है. तो इस लैंडिंग को बिलीवेबल बनाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं. मे बी वी कैन लैंड विद द लेग्स फर्स्ट और उसके बाद उसका पंच नीचे आए. और अगर मे बी उसका पंच पहले आ रहा है तो उसकी बॉडी कैसे रिएक्ट करेगी. बिकॉज एवरीथिंग इज हैपनिंग इन वन फ्रेम, इट इज सुपर हार्ड टू अंडरस्टैंड कि हुआ क्या है. तो हमें चीज़ों को ऑफसेट देना है. पहले वो लैंड करेगा, फिर पंच करेगा और उसके बाद कैमरा शेक करेगा. उसके बाद मैं बात करूंगा इस आर्म के बारे में. अभी इसकी आर्म एज अ यूनिट मूव कर रही है. हमें अपर आर्म को लोअर आर्म को सेपरेट करना है. अभी ऐसे वो एक ही यूनिट के तौर पे काम कर रहा है. अभी यहाँ पे है सेम एंगल, सेम एंगल, सेम रोटेशन, सेम एंगल, सेम रोटेशन. तो इसको हम लोग ब्रेक कर सकते हैं. मे बी हम इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं. तो लेट्स से हमने यहाँ पे लैंड किया, उसके बाद मे बी आर्म ऑलरेडी पीछे थी और उसके बाद थोड़ा सा आगे की तरफ आ गई. I will highly recommend to shoot that reference and really try to understand what is actually happening. The next thing is this arm pose is not stronger enough. तो इसको strong करने के लिए हम लोग इस elbow को थोड़ा बाहर ले आएंगे और यहाँ पे इस fist को थोड़ा सा बाहर रखेंगे ताकि pose ज़्यादा clear हो पाए. सेम यहाँ पे आपकी आर्म हाइपर एक्सटेंड हो रही है, उसको फिक्स करने के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा बेंड रख सकते हैं. एल्बो को बाहर ले आएंगे ताकि ये पोज ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे. यहाँ पे भी एल्बो को थोड़ा सा बाहर ले आएंगे और फिंगर्स के पोज को हम बेहतर कर सकते हैं. अभी ये रिलैक्स्ड है, इसको ज़्यादा एग्जैजरेट कर सकते हैं, टेंस कर सकते हैं, समथिंग लाइक दैट. तो मे बी ये लेग यहाँ पे आ जाएगी. सो वी आर गेटिंग दिस काउंटर बैलेंस काइंड ऑफ फील और ये लेग पीछे चली जाएगी. मे बी अगर हम लोग रेफरेंस शूट करेंगे तो हमें ज़्यादा बेहतर आइडिया होगा कि ये पोज बैलेंस कैसे किया जा सकता है. मेरे ख्याल से इन कुछ चीज़ों को अगर हम लोग माइंड में रखें तो हमारा शॉट बेहतर हो सकता है. पहली चीज़ पाथ ऑफ एक्शन. अगर उसका पाथ ऑफ एक्शन हम लोग अच्छा कर लेंगे, उसकी ट्रैजेक्टरी जो बन रही है उसको अच्छा कर लेंगे तो आपका शॉट अच्छा लगेगा. नेक्स्ट थिंग इज कैमरे की एनिमेशन. हमेशा फॉलो करो एक्शन को. एक्शन पहले होगा और कैमरा उसको फॉलो करेगा. नेक्स्ट थिंग इज स्ट्रॉन्ग पोजेस. आपके पोजेस स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, उसमें पर्सपेक्टिव होना चाहिए, उसको 2D टाइप नहीं होनी चाहिए. देयर शुड बी सम पर्सपेक्टिव. ऑल्सो वी हैव टू टेक केयर ऑफ लाइन ऑफ एक्शन. लाइन ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एक लाइन ड्रा करते हैं हेड से टोज तक.
लाइक ओवर हेयर लाइन ऑफ एक्शन बिल्कुल स्ट्रेट है, इसमें हम थोड़ा सा लीन ऐड कर सकते हैं, एक डायरेक्शनैलिटी की फील ऐड कर सकते हैं. सेम ओवर हेयर द लाइन ऑफ एक्शन इज टू स्ट्रेट, वी कैन मेक इट बेटर पर रियली पुशिंग द पोज लाइक दिस. हमेशा लाइन ऑफ एक्शन को स्ट्रेट रखने की बजाय थोड़ा सा कर्व में रखते हैं. ऑलवेज ट्राई टू फाइंड सी शेप्स, एस शेप्स, रिवर्स सी शेप्स. अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइंस हैं दे विल नॉट लुक अपीलिंग इनफ. नेक्स्ट चीज क्या है, रिवर्सल्स. हम लोग रिवर्सल इंट्रोड्यूस करा सकते हैं पोज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए. उसके बाद हम लोग क्लैरिटी ऐड कर सकते हैं इसकी सिलुएट को बेहतर करके, और सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स शेप्स को हम लोग मद्देनजर रख के. सिंपल वर्सेस कॉम्प्लेक्स क्या चीज है, अगर हम इस पोज को देखें तो ये साइड है सिंपल और ये वाली साइड कॉम्प्लेक्स है. सो दिस पोज इज गुड. इस पोज में दोनों साइड्स कॉम्प्लेक्स है. सेम ओवर हेयर, अगर हम पोज को पुश करेंगे तो ये साइड सिंपल है, ये कॉम्प्लेक्स है. तो हमेशा एक साइड को सिंपल रखो, दूसरी को थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लो, तो उस तरह से हमारी पोजिंग स्ट्रांग हो सकती है. इधर भी दोनों साइड कॉम्प्लेक्स है, उसको हम लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग दिस ब्यूटीफुल लाइन ओवर हेयर. तो मे बी आर्म इधर चली जाएगी तो हमारे पास ये सिंपल साइड आ जाएगी और ये नीचे कॉम्प्लेक्स साइड है. नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट थिंग इज वेट एंड बैलेंस. क्या आपका पोज बैलेंस्ड है? पोज को बैलेंस करने की एग्जांपल लेते हैं. लेट्स से हमारा कैरेक्टर यूं स्ट्रेट खड़ा है तो दोनों टांगे में भी कुछ यूं है, लेकिन जो ही हम लोग बॉडी को लीन करेंगे हमें उसको बैलेंस करना है. तो मे बी इस पोज को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे एक टांग आगे की तरफ आ जाएगी. दिस इज वन वे ऑफ लुकिंग बैलेंस इन द पोज. अब हम बात करते हैं वेट की डिस्ट्रीब्यूशन की. तो अभी इसका वेट कैरी कर रही है ये आर्म, ये लेग, और ये वाली लेग थोड़ा सा इसको वेट को कैरी कर रही है. थर्ड चीज, फिजिकलिटी ऑफ द एक्शन इज सुपर इंपॉर्टेंट थिंग. उसमें हम लोग लीड एंड फॉलो को देखते हैं. एक्शन और रिएक्शन, इट इज सुपर इंपॉर्टेंट थिंग. कोई भी एक्शन करेंगे उसका रिएक्शन होगा. अगर उसने पंच मारा है तो बॉडी रिएक्ट करेगी, कैसे करेगी हमें उसको माइंड में रखना है. हम लोग मोमेंटम गेन कैसे करते हैं और उसको अब्जॉर्ब कैसे करते हैं, उसके बाद फॉलो थ्रू में क्या हो रहा है. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कनेक्शन ऑफ द बॉडी. हम जब आर्म को मूव करते हैं तो शोल्डर भी मूव कर रहा होता है, उसकी चेस्ट भी मूव कर रही होती है, उसकी बॉडी रिएक्ट कर रही है. तो जब हम कनेक्शन को माइंड में रखते हैं तो हमें अच्छी फिजिकलिटी मिल जाती है किसी भी एनिमेशन की. और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, शूट रेफरेंस. मैं हमेशा फ्रंट और साइड से रेफरेंस शूट करता हूं ताकि बॉडी का लीन और उसका वेट की डिस्ट्रीब्यूशन का पता चल जाए. I really enjoyed your shot. मुझे फीडबैक देने का बहुत मजा आया. बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनिमेशन. टेक केयर. हेलो रजा, कैसे हो? तुम्हारा शॉट अभी मैंने देखा है, इट इज सुपर गुड. उसमें जो एनर्जी है, एनर्जी कमाल की है यार. लेट्स प्ले दिस शॉट. अमेजिंग स्टफ, सो गुड. I tried very hard to find something. इसमें कुछ चीज़ें जो मुझे नज़र आ रही हैं, बट ओवरऑल योर शॉट इज लुकिंग सुपर ऑसम. जो पहली चीज़ मैंने नोट की है वो है ओवरऑल एक्शन की डायरेक्शन. जब हम एनिमेट करते हैं तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम डायरेक्शनैलिटी को मेंटेन रखें. लाइक हमारा एक्शन टुक प्लेस हो रहा है लेफ्ट से राइट या राइट से लेफ्ट. हम लोग इस चीज़ का ख्याल रखते हैं कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ द टाइम हम उसकी डायरेक्शन को मेंटेन रखें. लाइक ओवर हेयर हमारा कैरेक्टर लेफ्ट साइड से आ रहा है, लेफ्ट से राइट जा रहा है, गुड, सुपर गुड. लेकिन यहाँ पे हमारा कैरेक्टर अचानक लेफ्ट साइड पे चला गया तो उसकी डायरेक्शन ऑलमोस्ट चेंज हो गई है. तो हम कोशिश करेंगे कि कैमरे को इस तरह से एडजस्ट करें कि हमारा जो एक्शन है वो लेफ्ट से राइट ही ट्रैवल करता हुआ लगे. द सेकंड थिंग वी कैन ट्राई, बिकॉज दिस एक्शन इज सुपर बिग, हम कोशिश कर सकते हैं कि ये एक्शन मिडल में टुक प्लेस हो. क्योंकि जो बड़े एक्शन है ना वो हम कोशिश करते हैं कि इनको बिल्कुल बिल्कुल क्लियर दिखाएं, इनको बिल्कुल मिडल में दिखाएं ताकि ऑडियंस को पहली ही गो में नज़र आ जाए कि क्या हो रहा है. अभी इशू ये आ रहा है कि हमारा एक्शन बहुत नीचे की तरफ और लेफ्ट साइड पे टुक प्लेस हो रहा है तो ऑडियंस उसको रीड नहीं कर पा रहे. तो हम लोग कैमरे की प्लेसमेंट इस तरह से करेंगे कि ये एक्शन ज़्यादा रीडेबल हो जाए. तो हम लोग इसको मिडल में ले आएंगे. नेक्स्ट चीज़ है एंटिसिपेशन. जब भी हम लोग कोई बड़ा एक्शन करना चाह रहे होते हैं तो हम लोग ऑडियंस को प्रिपेयर करते हैं. तो मुझे लगता है यहाँ पे हम ऑडियंस को प्रिपेयर कर सकते हैं एंटिसिपेशन को थोड़ा सा बड़ा करके, उसमें फिजिकलिटी ऐड करके, मे बी यहाँ पे थोड़ी सी स्टेपिंग ऐड करके हम लोग इस एंटिसिपेशन को पहले सेल करेंगे और उसके बाद हम लोग बड़ा एक्शन करेंगे. नेक्स्ट उसने यहाँ पे जंप किया तो यहाँ पे जो ओवरऑल बॉडी की रोटेशन है
वो बहुत ही जल्द हो रही है, लाइक इट इज़ टेकिंग ओनली 1 फ्रेम। तो इसको तुम थोड़ा सा स्लो कर सकते हो मे बी। और उसके बाद इसकी आई डायरेक्शन है, हम लोग कोशिश करेंगे कि आई डायरेक्शन को इस तरह से सेट करें कि वो इस पत्थर को देखे। उसके बाद आ जाती है रिवर्सल की बात। तो मे बी इसकी हिप पहले आएगी, उसके बाद उसकी लेग आएगी और बॉडी उसको फॉलो करेगी। तो यहाँ पे आपकी जो लाइन ऑफ एक्शन है बजाय सेम रहने के उसमें रिवर्सल आ जाएगा। तो हिप लीड करेगी एक्शन को, उसके बाद उसकी टांग आएगी और बॉडी इस लाइन ऑफ एक्शन पे रहेगी। दिस इज़ द फाइनल पोज। और हमने इस तरफ किक करना है इसको, तो मे बी यहाँ पे आप लाइन ऑफ एक्शन को ज़्यादा पुश कर सकते हैं। तो मे बी ये लेग आ जाएगी इसकी और यहाँ पे हेड आ जाएगा इसी लाइन ऑफ एक्शन पे, और इसको आप मज़ीद स्ट्रेट कर सकते हैं। मे बी यहाँ पे लेग आ जाएगी। अभी ये जो लाइन ऑफ एक्शन है, ये जो फोर्स है, इट इज़ टू वीक। दिस वन इज़ सुपर गुड मैन, आई वॉन्ट दिस मोर। तो मज़ीद ये चीज़ें ऐड करो। ये जो आपने स्मेयर डाला है, इट इज़ लुकिंग सुपर ब्यूटीफुल। और आपने ये रिपीट किया एक्शन को, इट इज़ वर्किंग नाउ। नेक्स्ट सुपर इंपॉर्टेंट चीज़ है, कोई भी एक्शन है उसका रिएक्शन है। जब हमने एक फोर्स अप्लाई की है किसी इतनी भारी चीज़ पे, तो रिएक्शन में हमारी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी। तो अभी मसला ये हो रहा है कि हमारी बॉडी एक ही जगह पिवट कर रही है, वो कोई रिएक्शन शो नहीं कर रही। इतना बड़ा एक्शन किया है तो उसके रिएक्शन में उसकी बॉडी पीछे की तरफ जाएगी, ऑपोजिट साइड पे जाएगी। लेफ्ट से हमने ट्रैवल किया था, लेफ्ट से राइट। जब हमने हिट किया इस बहुत बड़े पत्थर को, तो हमारी बॉडी रिएक्शन में थोड़ा सा लेफ्ट की तरफ जाएगी। तो मे बी इसने जब यहाँ पे हिट किया, उसके बाद वो ज़मीन की तरफ जाएगा, लैंड की तरफ जाएगा, लेकिन स्लाइड होता हुआ जाएगा मे बी, बजाय इसके कि वो यहाँ पे ऐसे नीचे की तरफ स्ट्रेट आ रहा है, जो कि उसको सेल नहीं कर पा रहा, इस इतने बड़े एक्शन को सेल नहीं कर पा रहा। यहाँ पे आई डायरेक्शन को हम लोग मद्देनज़र रखेंगे। अभी ऐसा फील हो रहा है जैसे ये बहुत दूर कहीं देख रहा है, इसकी आइज़ फोकस्ड होंगी इस पत्थर पे। और सेम हम यहाँ पे एक रिवर्सल लेके आएंगे और बॉडी को उस लाइन ऑफ एक्शन में रखेंगे ओवरऑल। ये वाला जो पोज है, इट शुड बी सो स्ट्रॉन्ग मैन। इसको स्ट्रॉन्ग बनाओ, जितना स्ट्रॉन्ग कर सकते हो उतना स्ट्रॉन्ग कर लो। और वो फोकस करेगा एक पत्थर पे, जब हिट करेगा तो उसके बाद हम इसको सेल करने के लिए इसकी बॉडी को पीछे लेके आएंगे। और तो ये कहा जाएगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, बॉडी उसकी नीचे की तरफ जाएगी। और मे बी यहाँ पे ये नीचे की तरफ स्लाइड होती हुई थोड़ी सी पीछे ड्रैग होगी बॉडी। तो मे बी उसका पोज यहाँ पे, हेड यहाँ पे होगा, मे बी एक आर्म इधर होगी और दूसरी आर्म यहाँ पे कहीं हो सकती है। तो ओवरऑल थोड़ा सा वो स्लाइड करेगा इस डायरेक्शन में। और दूसरा आई लाइन को हमें माइंड में रखना है। आई लाइन अमूमन यहाँ पे पाई जाती है। लेट्स से अगर हम लोग अपनी स्क्रीन को डिवाइड करें रूल ऑफ थर्ड के मुताबिक, तो यहाँ पे आई लाइन अमूमन हम लोग जो ऑडियंस है वो यहाँ पे देख रहे होते हैं, या मे बी यहाँ पे देख रहे होते हैं। बहुत इंटेंस एक्शन है तो हम लोग कोशिश करते हैं इसको मिडल में रखें। हम बहुत लेफ्ट में चले जाएंगे तो क्या होगा, ऑडियंस को पता नहीं चलेगा क्या हो रहा है। तो मे बी ये करेक्टर यहाँ पे स्लाइड करता हुआ पीछे जाएगा। तो हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, करेक्टर को फॉलो कर सकते हैं। कैमरा उसकी तरफ थोड़ा सा रोटेट हो सकता है, तो मे बी करेक्टर यहाँ पे बिल्कुल मिडल में होगा और ये किक करेगा इस डायरेक्शन में। तो हमने क्या किया, हम लेफ्ट से राइट ट्रैवल कर रहे थे। जब हमने किक किया तो हम ऑपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल किए उसे बैक को सेल करने के लिए। इसको एक दफ़ा दोबारा देखते हैं। यहाँ पे आपका कैमरा पहले शेक कर रहा है, करेक्टर बाद में लैंड कर रहा है। तो कोशिश करें कि करेक्टर जब यहाँ पे लैंड करता है उसके बाद में भी 1 फ्रेम बाद या 2 फ्रेम बाद ये कैमरा शेक करेगा। सेम वही चीज़, प्रिपेयर द ऑडियंस मैन। कोई भी जंप कर रहे हो या कोई भी किक कर रहे हो, कितनी बड़ी कर रहे हो, कितना बड़ा एक्शन है, हमेशा एंटिसिपेशन को टाइम दो, उसको मिल्क करो, उसको थोड़ा सा ज़्यादा प्यार दो, मोहब्बत दो, उसको सेल करो एंटिसिपेशन को। जितनी अच्छी आप एंटिसिपेशन सेल करेंगे उतना ही अच्छा एक्शन लगेगा। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आपका जंप बहुत अच्छा है, बहुत खूबसूरत जंप है, बट द एंटिसिपेशन इज़ नॉट सो गुड। सो मे बी यू कैन ऐड सम डिटेल ओवर हेयर। अगेन सम अप करते हैं। सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ द शॉट, लेफ्ट से राइट जा रहा है हमारा एक्शन या राइट से लेफ्ट जा रहा है। कैमरे की एडजस्टमेंट इस तरह से करेंगे कि सुपर क्लियर हो हमारा एक्शन। हम कोशिश करेंगे कि उसको मिडल में रखें या आई लाइन पे रखें, हम बहुत साइड पे नहीं लेके जाएंगे। तो कैमरे की प्लेसमेंट इज सुपर इंपॉर्टेंट, ओवरऑल कंपोजिशन इज सुपर इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट चीज़ हमने बात की कि एंटिसिपेशन को हमने सेल करना है। उसके बाद हमने बात की लाइन ऑफ एक्शन को हम हमेशा माइंड में रखेंगे। हम रिवर्सल्स का ख्याल रखेंगे और लीड करेंगे हिप के साथ और
किक करते हुए वो क्या करेगा, पहले हिप से लीड करेगा, फिर उसकी टांग उसको हिट करेगी। तो हम इसको स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं लाइन ऑफ एक्शन को ओवरऑल। अगेन दिस स्मेयर्स आर सुपर गुड, इसको यूज़ करो जितना हो सकता है। इवन यहाँ पे जब वो किक कर रहा है नीचे की तरफ, तुम इसको यूज़ कर सकते हो यहाँ पे पावर दिखाने के लिए और स्पीड दिखाने के लिए इसको यूज़ करो। उसके बाद हमने बहुत अहम बात की है कि जितना बड़ा एक्शन हो रहा है और जितना बड़ा वो इम्पैक्ट हमें चाहिए वो मिसिंग है। अभी करेक्टर एक ही जगह पे पिवट करता हुआ स्ट्रेट नीचे आ रहा है, तो क्योंकि उसने एक बहुत ज़्यादा फोर्स लगाई है, पत्थर को मारा है, तो वो क्या करेगा, पत्थर भी तो ऑपोजिट साइड पे हमें पुश करेगा। तो हम यहाँ पे करेक्टर को पीछे की तरफ लेके आ सकते हैं, ऑपोजिट साइड पे वो जाएगा, मे भी थोड़ा सा स्लाइड करेगा और मज़ीद उसमें फोर्स ऐड करेगा। तो क्या होगा, जब हम कुछ बड़ा एक्शन करते हैं तो हमें हर एक्शन का रिएक्शन भी शो करना है। ओवरऑल बहुत अच्छा लग रहा है। ये माइनर चीज़ें हैं जिनको आप ऐड कर सकते हैं और आपका शॉट ऑलरेडी सुपर गुड है। थैंक यू रज़ा, आपने फीडबैक के लिए मुझे ये एनिमेशन सेंड की। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एनिमेशन एंड टेक केयर। Hello Zohaib, how are you man? Let's watch your animation. Boom, nice. Slow-mo. Landing, awesome. बहुत अच्छी लग रही है overall. I love this front cycle man. This is very nice. Character scene में आया. The composition is nice. The character is in the center. And overall I think the run is good. Maybe this wrist over here is too much. Maybe we can keep the wrist over here. Maybe बहुत ज़्यादा उसको bend नहीं करो because it feel like broken. Maybe you can reduce a little bit. Other wrists you can involve it a little bit. Right now I feel like it is rigid. ये ज़्यादा move नहीं कर रही. So इसको तुम use कर सकते हो. Like this wrist can be bent to like other one, like this one. इसको तुम थोड़ा सा और bend कर सकते हो. Overall this shot is looking super nice man. There is not much I can say. Or the other shot is super nice too. There is a little bit of intersection, but they are nice because we have skin and things go inside. ये अच्छा है, you can keep that. But maybe you can make it stronger. इस thumb को थोड़ा सा नीचे ले आओ. Yeah, this pose is super nice though. Super nice. अभी ये flat है कैमरे की तरफ, so you can have a rotation maybe at this angle. It will be nice though. Same over here, you can rotate it this way. The foot are looking very nice. The overall path is nice for them. Yeah, I love that. Same over here. I feel like you don't need to show that in the camera. I'm talking about the wrist of the hand, the fingers of the hand. You can keep them up high. Yeah, this overall shot is like so much nice, polished. Then he like launch into next pose. I feel like there is a little bit of disconnectiveness between previous shot and this shot. अभी इसका ये pose है and then we just go like this into this pose. And sometimes we can do that because there is jump cut. You can say there, but man, this is the jump cut. I use that for cinematic purpose. So you can do that, man. The overall pose is super nice though. Super nice. I think this leg is a little too much stretched because इसका जो knee है वो अंदर की तरफ जा रहा है. So you can make it a little bit out. Maybe move this foot a little high up to have a little bit of bend over here. It is hyper extended right now. The overall pose over here is nice. And then we are going into this pose. The overall path of action, you can improve that I guess for the overall arm, the wrist. If you track this one, the hand is going here and then here. And then this one, and then there is a jump in the spacing overall. So try to manage that. Like your other hand is super nice, very nice arc over here, very nice spacing. So you can try to find the same maybe nice path of action for this guy too. You saw him. The legs are nice. Yeah, there is not much we can
we can fix on this shot. But like over here I can see intersection, you can fix that one. Maybe bring this leg up, and yeah, it is nice though. Yes. And then we are going into stretch pose. Same thing over here. I think it is a little hyperextended, so maybe you can bring the foot a little high to have a nice bend over here. And then we are going into this pose, which is nice. Super awesome, super nice. Like I really love the overall bend from here to here, and then there is separation, which is nice. We can do that. For the hip, I guess it is stuck in the space, so you can keep it down a little bit, not much, but इसको थोड़ा सा you can like bring it down. So overall ये एक जगह पे stuck नहीं होगी. It will come down a little bit. So you can, let's say your y-axis is like this over here, flat. You can make it like this. Maybe you can always try to have a little bit of motion. Don't make it super flat here. Yeah, so corrector, maybe it will go up high, maybe a little bit. ये hip इसकी थोड़ी सी ऊपर move कर सकते. You can do that. The hip can move up while upper torso and head is coming down. You can have this opposite motion like this maybe. But this body movement is very little one, not much. And then this one, the launching one. Yeah, it is looking nice. There is not much to say, but I feel like this one is a little broken, which is possible because he's launching into that pose. So we are fine, I guess. Maybe you can, if you want to, you can have a little bit of toe roll over here. So maybe this toe can roll over somewhere, this vicinity. Yeah. And then we are going from here under the ground. It's okay, it's fine. But overall, this pose is strong, man. I'm missing the other hand. Maybe you can, it is up to you though. If you want to show, you can maybe show it over here. Other fist. And then, yeah. The path of action is nice for the overall character. It is going here from here to there. There is a little bit bump, like I can see the directionality of the shot is going like this, going up. I can still feel that, and then suddenly the character go down. So maybe you try to find a better arc for that, and then it is going straight, something like that. So if you can track that, would be nice to have a nice path of action for overall movement. And then we are in the front. There are a couple of frames where there is no motion, so maybe we can keep that, but there should be sense of motion in the character. So maybe you can move this character a little further back so that he's smaller and then he's growing bigger and bigger and bigger. Yeah, this is nice, man. I don't mind that. The symmetry is nice. Yeah, this is a little broken. It's hard to do that because he's spinning around, but it is good. Same for the legs. Maybe you can bring the knees out a little bit so we can have a nice perspective overall. Right now, because they are the same color, I cannot feel the lower leg. It feels like it is merging into upper thighs. So maybe we can have a little bit of separation by bringing this knee out and have this a little bit of profile kind of pose. Right now it is too flat, so you can make it a little better. And yeah, this pose is too symmetrical, but is fine. I don't mind that. Maybe if you want to, you can break it. Like for the legs, you did already. You break the symmetry. So you can do the same thing for the arms if you want to. So maybe this arm can be high up, but this one
can be lower a little bit. And for finger pose, you can change them a little bit to have a little bit of interest. Right now they're too flat and they are like, so maybe one will be a little bended. The finger pose will be more like a faced kind of pose, not totally faced, but like a little bit relaxed or maybe tense, but bend the fingers a little bit. And then we are in this shot. This is the slow-mo shot. I think it is looking nice. Yeah, it is nice though. There is a little bit of pinning happening for the head area. It feels like the character is rotating from this point of interest. So this is the pin point and this one is rotation overall. So maybe you can try to find better rotation for overall body. Whenever you find this pivoting, like let's say the pivot, what is pivot? Let's say a door is opening up and there is a pin point for the door. So sometime when we animate, there is some part of the body which remains in the same space while other is moving, which is not interesting to look. If we create a dot over here and we see the body, it feels like the rotation point is the head. So you can try to avoid that maybe. So if you see the previous shot, the character starts spinning, and then next one, I feel like the head is already up high. So maybe you can start from the lower a little bit. So we will have this line of action for the body, for the pose. The head is here, and then you can go into that pose maybe, but maybe not that far. So it will be less like this maybe. Yeah. And then we are coming into this one. I feel like overall rotation order is changed because this character is going straight and then it is spinning clockwise, which is nice. And then we are shifting into anti-clockwise. So overall rotation is changed. Now it is like this. So I think you can keep the momentum overall as a clockwise rotation. So character will spin like this, on other direction, and then it will land like this. And I totally feel that because you wanted to land him like this, so you change the spinning order into anti-clockwise. It is hard to feel, like I can see the flow is there, but whenever this shot comes, my mind say there is something wrong with the overall flow. So this shot feels like it is separate from other shots. So try to find a way to keep the same rotation as clockwise for whole sequence. Yeah. For the landing part, I think we can really work on the body mechanics over here. I really love this pose though. Like this is nice, and then the legs come. This is nice pose, and I don't understand what's happening to this arm. This arm is going back, and this is hyperextended. So maybe you can have a little bit of bend over here, and the neck is too much high up there. So the rotation is too much. Maybe you can reduce the rotation overall. I feel like the coming down is nice. Maybe the going up could be a little bit of improved. Right now I feel like the whole torso is a unit, like a solid unit. So you can break that. If the lower body is coming first, it can go a little high. Maybe you can have a little bit of separation of upper chest is coming down while lower body part or hip is coming up a little bit. We can have this nice opposite action happening. If we see it from the left side, we can see like this, the upper chest is coming down while lower body will come a little bit high because it arrives early. So it should go a little high and then come back. It will be not that bouncy though. Don't make it like too much high up and come down. It will feel light. Just keep him there, but when he comes down, I'm talking about the hip here. So this hip area, this will come down and then it will go up and down. So you can play with the overall y-axis over here. Don't go that high maybe.
just keep it here, but try to have something over here while upper body, the chest is coming down. So we will have nice opposite action happening. And you can add a little bit of twist because our body weight is on this arm plus legs. So maybe you can have a little bit of rotation into this side to have this kind of taking the weight kind of feeling. Right now it is too flat, so the upper torso you can rotate it, the lower will be same, and you can have a nice elbow angle for this. I think you want it to make this arm behind him, but the overall issue over here is I feel like it is so rigid right now. So maybe for the elbow you can have a little bit of overlapping action, like it is coming from up, it can go down and then up. I'm talking about the overall elbow. So it will have a nice movement from, because it is coming at a speed from high up, you can go down a little bit more and then come up. Yeah. For the fingers, you can you don't need to have this pose, I guess. Try to be not so spread out but closer for the fingers. Close like this. And then when you land, you can start with the not too spread out fingers kind of pose, and then you can spread. So usse lagega like he's taking on the weight, like these fingers, these hands are taking the weight. So make them closer and then they will reach, and then body will take the weight and then they spread out like this. Yeah, overall I feel like this part we can improve that. And same for the breathing, try to separate the upper torso and lower torso a little bit, have a separation, and maybe you can shoot a reference for that, it will be super handy. And same for the head and neck, you can have nice overlapping action for that, but that will be not huge, it will be very minor, very little. Don't exaggerate it much, it will be subtle stuff. Yeah, that's it, man. I guess overall, let's watch it one more time and we are done. I guess it is very nice piece, super nice piece. The overall like flow of actions and very nice. Just work on the last one and we are good to go, man. Super awesome, super awesome. Okay, man, best of luck. See you next time. Take care. हेलो रेयान, हाउ आर यू मैन? बहुत अच्छा पास किया आपने यार। ओके, चलो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले रूट को चेक करते हैं और फुट को मैं चेक करूंगा। ओवरऑल प्ले थ्रू करते हैं चीजें। सही है, अभी मुझे लगता है ये एक ही लाइन में स्ट्रेट जा रही है, इसको डबल चेक कर लो। हिप को उसके ना थोड़ा सा शुरू में यहाँ पे डिप आता है, हल्का सा डिप आता है, फिर वो ऊपर जाता है। ओवरऑल हिप की मूवमेंट में यूं नीचे जाके फिर ऊपर आती है। अभी हमारी यहाँ पे स्ट्रेट जा रही है। और फुट को देखें तो ओवरऑल जो फ्लो है वो यहाँ पे बिग स्पेसिंग आ रही है, इसकी स्पेसिंग ठीक है, यहाँ पे बिग स्पेसिंग आ रही है और यहाँ पे ऐसे हिट कर रहा है इस पॉइंट पे वर्टिकली। इसको कहते हैं हिट अ वॉल, तो वॉल को हिट करता हुआ लग रहा है। तो रेफरेंस में अभी भी हम चेक करें तो इसमें हल्का सा बहुत ही कर्व आ रहा होगा उसकी, अगर हील को ट्रैक करें तो। और ये जो फ्रेम है ना, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्पेसिंग वाइज आपने ईज आउट करना है, तो ये में भी थोड़ा सा पीछे आएगा और इधर थोड़ा सा यूं आएगा इधर। सो ओवरऑल स्पेसिंग को आई थिंक इट इज ट्रांसलेट जी, सो ये और एक्स भी हो सकता है, आप चेक कर लेंगे वो प्रॉपरली जा रहा है वहाँ पे। और जब आप हील की करेंगे, आर्क्स को ट्रैक करेंगे और इसी तरह टिप की आर्क्स को भी ट्रैक कर सकते हैं, स्पेशली दीज पॉइंट्स पे। इधर हल्की सी स्लाइड हो रही है ओवरऑल फुट की। ओवरऑल जो लेग है ये स्ट्रेच हो रही है, तो उसकी स्ट्रेचिंग को वाइड करेंगे जैसे यहाँ पे, और उसके बाद फुट ऐसे स्लैम करेगा ज़मीन पे। तो इसमें भी यूँ स्ट्रेट जाता हुआ लग रहा है मुझे। मे बी आप डबल चेक कीजिएगा कि इसकी जो हिप की मूवमेंट है वो उसमें कर्व होना चाहिए ओवरऑल। आई थिंक दिस पॉइंट इज ओके। दूसरे फुट को चेक करते हैं, उसमें भी स्लाइडिंग आ रही है शुरू में। उसका जो फुट है वो पिवट कर रहा है, अगर आप देखेंगे तो वो पिवट करता हुआ, पिवट से मुराद है कि उसके टोज से पिवट करता है वो और पीछे की तरफ हील को लगा रहा है, ठीक है। लेकिन अभी हमारा फुट दरमियान से यूं स्लाइड कर रहा है, इसको स्लाइडिंग बोलते हैं। तो ये स्लाइड नहीं करना चाहिए, हमारा फुट टो पे रहेगा, उसके बाद वो एडजस्ट होगा, ऐसे
मिडल से स्लाइडिंग नहीं कर सकते हम लोग। तो इसको क्लोजली देख लें। ओवरऑल ये ग्लोबल थिंग है कि आपने ओवरऑल इसकी जो यहाँ पे अच्छी डिटेल आपने डाल दी है, वेरी गुड। तो ओवरऑल इसकी आर्क्स को ट्रैक करना हमने। ओवरऑल यहाँ पे पाँव बिल्कुल स्ट्रेट जा रहा है आपका, यूं उसमें डिटेल नहीं है जो यहाँ पे है। यहाँ पे क्या हो रहा है, फुट रोल करता हुआ ऊपर जाता है और यहाँ पे हल्की सी आर्क आ रही है और उसमें नी को अगर हम देखें तो ये थोड़ा ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, एडजस्ट कर रहा है। अभी हमारी जो टांग है ये वाली, ये फ्लैट जा रही है आगे की तरफ, यहाँ पे स्ट्रेच भी हो रही है। तो ये इस एरिया में डिटेल की कमी है। अभी सेम ओवर हेयर, ये रोल करता है और अचानक बगैर कुछ हुए वो फुट उसका रोल करता जा रहा है। तो यहाँ पे फुट रोल किया, उसके बाद रुक गया, उसके बाद चलना शुरू हो गया। और रेफरेंस में ऐसा हो रहा है क्या? ऐसा नहीं हो रहा। एक फ्रेम इंपॉर्टेंट है इसका, ठीक है। तो यहाँ पे भी यूँ फुट स्लाइड हो रहा है, इसका स्लाइड हो रहा है, नहीं हो रहा। वो उठता है और यहाँ पे टिप आती है पहले, उसके बाद उसकी हील आ जाती है। तो इन डिटेल्स को ओवरऑल देखना है आपने, ठीक है। सेम चीजें ओवरऑल है। जहां जहां आप देखें रेफरेंस में, और अगर आप बात ना आइडिया नहीं होता रेफरेंस से, तो उठ के सीट से उठे, देखें, चेक करें, मूवमेंट करने में कैसा लग रहा है। अभी जैसे यहाँ पे फुट स्लाइड हो रहा है, तो स्लाइड हो रहा है नहीं, वो उसके टोज पे घूम रहा है अभी। तो इन चीजों को छोटी छोटी डिटेल है बट इट इज सुपर इंपॉर्टेंट, ठीक है। हिप की आर्क्स, उसकी मूवमेंट कैसी है, और उसके बाद फुट की स्पेसिंग। यहाँ पे भी स्लाइड हो रहा है, स्लाइड होना इम्पॉसिबल है क्योंकि उसकी बॉडी का वेट इस टो पे है, पूरी बॉडी का वेट इस पे है। तो हल्का सा स्लाइड नो डाउट होगा बट वो ट्रांसलेट नहीं होगा, वो पिवट जरूर होगा, पिवटिंग टाइप स्लाइडिंग होगी। उसके बाद मुझे लगता है कि ये पीछे की तरफ, मे बी इट इज द कैमरा मूवमेंट बट प्लीज डबल चेक। तो यहाँ पे जैसे उसकी टांग पीछे रहती है, आई थिंक वी कैन बी देयर, वी कैन बी बैक देयर। और ये बहुत बड़ी मूवमेंट पीछे की तरफ से आ रही है। यहाँ पे लेग उठ के अचानक पीछे चली जाती है, बहुत बड़ी स्पेसिंग है यहाँ से यहाँ तक। तो उसमें नहीं है वो, देखो उसका जो पाँव उठता है तो वो आगे की तरफ जा रहा है, पीछे की तरफ उतना नहीं जा रहा। सही है। इन बारीकियों को ओवरऑल हमने चेक करना है। उसके बाद ये ओवरऑल घूम रहा है, इज गुड। बट यहाँ पे नी पॉप आ रहा है, ये ओवर स्ट्रेच हो रहा है नी पॉप, मे बी इट इज इन आई के। तो इसको एफ के में करो, एनिमेट ट्राई करो, एफ के में एनिमेट करना, उसमें जो नी पॉप्स है वो खत्म हो जाएंगे। ये वरना दूसरा ऑप्शन है कि आपको ओवरऑल इसकी आर्क्स को ट्रैक करना है। तो ये जो पावर यहाँ पे आ रही है ना, ये बिल्कुल स्ट्रेट है। उसके बाद अगर एफ के में होगा तो इजीली हम लोग इसको एडजस्ट कर पाएंगे, और अगर एफ के में ऑलरेडी है तो इसकी थोड़ी सी पॉलिश कर लो। नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे बहुत बड़ी स्पेसिंग आ रही है अचानक, तो इसको ईज आउट करो, फिर यहाँ पे ईज इन होता हुआ इस फाइनल पोजीशन में चला जाएगा। तो सडन मूवमेंट है ना, वो होती है नो डाउट, लाइक मे बी यहाँ पे है, लेकिन उसके बाजू बात ये होता है कि हम लोग फ्लो को जल्दी तोड़ रहे होते हैं, तो उसको फ्लो को कंटिन्यू करने के लिए हम कुशन करते हैं, थोड़ा सा वॉल्स हिट ना करे, सडनली स्टॉप ना चीज़ें हो जाए। तो उसके लिए हमें स्पेसिंग को सॉफ्ट करना होता है, ओवरऑल हार्ड स्पेसिंग से निकलना होता है। तो उसका बेहतरीन हल है कि फाइनल की फ्रेम से हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे ईज इन ऐड कर देते हैं। तो सडनली जैसे स्पेस जाती जाती अचानक रुक जाती है ना, चीज़ जा रही अचानक रुक गई, हमने ईज इन ना डाला तो वो ऐसे लगता है जैसे हिट किया, जोर से हिट किया किसी चीज़ से। सेम ओवर हेयर, इट इज़ वेरी नाइस डिटेल के उसका तो जमीन के साथ टच कर रहा है एंड उसकी हील उठती है पहले एंड देन उसका फुट ओवरऑल उठ रहा है और उसके बाद यहाँ पे आ रहा है। ये पॉइंट इट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट कि यहाँ पे हम लोग उसकी आर्क्स को चेक करें। अभी अगर उसकी आर्क्स देखें तो वो एक स्पीड के साथ ऊपर जा रहा है, तो हमारी स्पीड यहाँ पे वेरी कर रही है। लाइक अगर हम हिप को देखें तो आगे जाता हुआ अचानक ऊपर पीछे की तरफ जाना शुरू हो गया ऐसा। तो इसको ग्राफ एडिटर में चेक करें कि उसकी ओवरऑल आर्क्स कैसी हैं जंप में, फिर वो अचानक से स्पीड पकड़ा है। मुझे ये लगता है अगर हम प्ले थ्रू करें तो यहाँ पे वाई एक्सिस वाइज वो होल्ड तो करता है ऊपर की तरफ, लेकिन अगर ट्रांसलेट जी को देखा जाए या मूवमेंट फॉरवर्ड को देखा जाए तो वो ऑलमोस्ट लीनियर है। मतलब ऐसा नहीं है कि वो आगे पीछे, ये देखिए जैसे हमारा करेक्टर आगे जाता है, फिर पीछे जाता है, फिर आगे जाता है, फिर ऊपर चला जाता है अचानक, और फिर नीचे आना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे हमारी आर्क बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो रही है, तो इसको पॉलिश करना है हमने। उसके साथ जो फुट की ओवरऑल मूवमेंट है उसको हमने चेक करना है। एक फ्रेम बहुत इंपॉर्टेंट है फुट की एनिमेशन के लिए। अच्छे एनिमेटर और बहुत अच्छे एनिमेटर में यही फ़र्क है कि वो जो फुट की प्लेसमेंट है, एक फ्रेम को देखेगा। लाइक अभी आपकी ये टांग बहुत स्ट्रेच हो रही है, तो हमें स्ट्रेच नहीं करना, ठीक है, हमें बिल्कुल स्ट्रेच नहीं करना। उसकी फाइनल पोजीशन ये है ना,
तो आप इसको रोल करो, थोड़ा सा रोल करो कि उसका टो पहले आ जाए फिर हील आए, बजाय इसके कि हम लोग इसको स्ट्रेच कर दें। बॉडी ओवरऑल अगर मैं ऐसे स्क्रब करके देखूं तो उसकी हिप और स्पाइन में एक ऑफसेट आ रहा है, ठीक है। अभी हमारी हिप और स्पाइन, इसकी चेस्ट एक साथ नीचे आ रही है कागज की तरह। इसकी चेस्ट पहले नीचे आ गई थी, उसके बाद हिप आ रही है। ये ऑफसेट आपको रोटेशन में नजर आ रहा है, ठीक है। तो जब हम इसको क्लीन करेंगे तो उसके बाद ओवरऑल ऑफसेट भी डाल देंगे। बाज़ बात आपकी हिप पहले आती है, बाज़ बात चेस्ट पहले आती है। वो रेफरेंस में क्लियर हो पा रहा है क्योंकि उसने एक जोर से वार किया है। उसके बाद जैसे हमारी बॉडी भी रुक रही है ना यहाँ पे, उसकी बॉडी नहीं रुक रही है अगर हम प्ले थ्रू करें तो। ईज इन जरूर हो रही है, वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो रही है, बट अचानक रुकती नहीं है और फिर सडनली स्टार्ट नहीं हो रही। अगर हम प्ले थ्रू करें तो हमारे इसमें झटका आ रहा है। हम प्ले करके देखते हैं इस एरिया को, थोड़ा सा ज़्यादा ले लेते हैं ताकि हम क्लियर हो। अब इसको देखो, बार बार देखो तो आपको ना आपके एनिमेशन में यूं जिटर सा नज़र आ रहा है ओवरऑल बॉडी मूवमेंट में, लेकिन उसमें है क्या, उसमें नहीं नज़र आ रहा। तो इस चीज़ को देखना है कि जो ट्रांसलेट जी है, मे बी इट इज़ अ कैमरा मूवमेंट बट आई थिंक इट इज़ अ बॉडी मूवमेंट टू। तो उसको सॉल्व करना है। तो इसमें आपको देखना है कि पहले कौन सी चीज़ की चेस्ट पहले गई। जैसे एंटिसिपेशन में देखें तो उसकी चेस्ट से वो लीड कर रहा है। बॉडी तो नीचे जा रही है, बॉडी नीचे जा रही है, चेस्ट ऊपर जा रही है। हमारे क्या हो रहा है, चेस्ट भी ऊपर जा रही है, बॉडी भी ऊपर जा रही है। और उसके बाद जब वो नीचे आता है तो क्या हो रहा है, इस पार्ट में ये पहले आती है, चेस्ट ऊपर रहती है उसकी। या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं जैसे पेंडुलम में होता है, वो पीछे की तरफ ड्रैग कर रही है। और उसके बाद इस जगह पे देखें उसकी चेस्ट ज़्यादा मूव करके आगे की तरफ आ रही है। और अब इसके बाद उसकी हिप बाद में आ रही है। तो कोई ना कोई लीड एंड फॉलो का ओवरऑल सिलसिला चल रहा है उसके। तो अभी ये वाला जो चीज़ हमारी मिसिंग है डिटेल में, तो इसको हमने ऐड अप करना है इस एनिमेशन में। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो उसकी इसकी ये जो मूवमेंट है, उसके बाद उसका हेड और चेस्ट आगे की तरफ जाना शुरू हो गया। लेट्स ट्राई टू फोकस इन दिस एरिया नाउ, यहाँ से यहाँ तक, फ्रॉम हेयर टू हेयर। क्योंकि उसने एक जोर से वार किया तो उसका हेड उसके बाद आगे आना शुरू हो गया, ठीक है। तो हमें हमें लगता है यहाँ पे अभी यहाँ हम ओवरऑल जो बॉडी अपर बॉडी स्ट्रक हो गई है यहाँ पे, ऐसे जैसे यहाँ पे वॉल थी उसमें ओवरऑल जो मूवमेंट का फैक्टर है वो ख़त्म हो गया। तो ये ऐसे लगता है जैसे यहाँ पे हिट कर दी है, इनविजिबल वॉल है वहाँ पे, उसके साथ बॉडी अटैच हो गई है मैग्नेट की तरह। लेकिन यहाँ पे रेफरेंस में क्या हो रहा है, ओवरऑल बॉडी ऊपर जाती है और फिर पीछे यहाँ पे थोड़ा सा ईजिंग के बाद वो फिर आगे जाती है, थोड़ा सा हल्का सा वो आता है झटका, वो इम्पैक्ट आ रहा है उसमें। और यहाँ पे भी वही वही नोट्स हैं, सेम फुट के नोट्स हैं। यहाँ पे स्ट्रेचिंग हो रही है बहुत, और अचानक चीज़ें मूव करना शुरू हो गई हैं। उसका हाल एक ये है कि आप फुट की पोजीशन ऐसी चूज कर लो कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है और एंडिंग पॉइंट उसमें वो उसको बैलेंस कर सके। एक ऑप्शन ये है कि फुट की पोजीशन चेंज करो, दूसरा बॉडी की पोजीशन चेंज करो। दो ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ये देखिए ओवरऑल जो ऑर्गेनिक फील है ना इसमें रेफरेंस में कैसे आ पा रही है, हमारे में नहीं आ रही ऑर्गेनिक फील। हमारी बॉडी ना यहाँ पे अगर चेस्ट पार्ट को देखें, इस एरिया को देखिएगा, गौर से देखिएगा, यहाँ पे जिटरनेस आ रही है और एक ही तरह जैसे तख्ते की तरह मूव करते हो ना, जैसे लकड़ी की तरह। गया नहीं, ऑर्गेनिक बॉडी नहीं है वो। ऑर्गेनिक बॉडी में क्या होता है, एक चीज लीड करती है दूसरी फॉलो करती है। तो जैसे अभी इस मूवमेंट में देखें तो अभी चेस्ट वाला पार्ट उसका पहले जा रहा है, फिर हिप अभी भी नीचे आ रही है उसकी और फिर ऊपर जाती है। तो एक चीज पहले जा रही है तो उसको ऑप्शन, उसके लिए क्या करते हैं हम, हिप के कंट्रोलर को पकड़ते हैं, रोटेशन ऐड करते हैं। जैसे आप सिंपल बॉक्स को ले लें, तो अगर सिंपल बॉक्स को नीचे से पकड़ के यूं मूव करें, हेड को देखें तो वो ये पिवट बनता है उसका। और इसके साथ ट्रांसलेशन का हम लोग कम्बिनेशन यूज करते हैं, ट्रांसलेशन और रोटेशन का दोनों का कम्बिनेशन एक ऐसा यूज करते हैं जिसमें हमें जो रेफरेंस में रोटेशन है वो मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे चेस्ट नीचे जाती है फिर ऊपर आती है, तो मैं रोटेट एक्स को यूज करते हुए मैं इसको थोड़ा सा नीचे लेके आऊँगा, फिर ऊपर लेके आऊँगा, उसके बाद मैं चेस्ट को पॉलिश करूँगा। लेकिन ओवरऑल इट इज़ लुकिंग मच बेटर। अब अभी ये डिटेल की चीज़ें हैं जो हम लोग ऐड करेंगे। ये मूवमेंट अच्छी है यहाँ पे। अच्छा, इसमें जो सबसे बड़े ग्लोबल एक प्रॉब्लम एरियाज हैं वो हमारे जो ओवरऑल स्लाइडिंग है और फुट की पोजीशन है, हिप की मूवमेंट है, लेकिन उसके अलावा आर्म्स का
फिजिकली ग्रैब करना वेपन को बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस आर्म को चेक कीजिएगा, इसका फ्लो टूट रहा है, शायद ये IK से FK में जा रहा है, FK से IK में जा रहा है, ये इनविजिबल होना चाहिए जैसे रेफरेंस में। तो यहाँ पे हमें एक एक फ्रेम पे काम करना में भी पड़ेगा, और मे बी हमें एनिमेशन को डिलीट भी करना पड़े, तो उसको पास को री एनिमेट भी करना पड़ेगा आपको, लेकिन मेन आइडिया वही है, सीमलेस लगे ये मूवमेंट। ये अचानक से जो मूवमेंट आ रही है ना, यहाँ ऊपर नीचे हो रहा है, एंड वो ना हो, एक सीमलेस मूवमेंट हो जैसे जैसे रियल लाइफ में होता है। ये वाला अभी तक हैंड अभी तक काम नहीं कर रहा मुझे लगता है, तो इसको फ्रंट एंगल से देखते हैं। ये वाला बाजू कदरे बेहतर है, लेकिन ये वाला हैंड अभी तक काम नहीं कर रहा फिजिकली। तो मैं चाहता हूँ आप एक रेफरेंस शूट कर अपना, मतलब उठे कोई भी लकड़ी पकड़ लें, कोई भी स्टिक पकड़ लें और सोचें कि वो कैसे मूव करेगा। अभी इसमें अगर अनक्लियर है कोई चीज़ तो आप खुद से भी शूट कर सकते हैं, लेकिन इट इज़ सुपर इम्पोर्टेंट कि वो ऑर्गेनिक लगे। फ्रंट से भी जैसे पॉप्स नी पॉप्स आ रहे हैं वो भी सॉल्व हो जाएंगे जब आप ओवरऑल ये जो फिजिकलिटी उसकी बेहतर करेंगे, तो वो भी सॉल्व हो जाएंगे। अभी ये पॉप्स आ रहे हैं अचानक, तो ओवरऑल फ्लो को देखें अगर फुट का, हिप का, तो फ्रंट से भी हमें पॉलिशिंग थिंग्स नज़र आ रही है जो कि हम जिसमें हम काम कर सकते हैं। ओवरऑल यहाँ पे हेड में अचानक से एक झटका सा आ रहा है। मैं बोलूँगा कि आप इसको ना कोई एक्सप्रेशन दे दें, मतलब थोड़ा सा, मतलब एक्सप्रेशन जैसे को वो फोकस कर रहा है किसी चीज़ पे। जब ये काम कर चुके तो फिर मैं बोलूँगा कि फिर हम आएंगे आर्म्स और स्वॉर्ड की तरफ, तो उसमें एक एक पार्ट इम्पॉर्टेंट है। अभी बाजू ये वाला जैसे यहाँ से यहाँ चला गया, तो उसमें पेंडुलम वाली फील आनी चाहिए, वेट आना चाहिए उसमें, उसमें वो फ्लो आना चाहिए। अब अभी मैं अगर प्ले करता हूँ तो जैसे इस एरिया में बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्सिटी आ रही है ओवरऑल, और ये यहाँ से रोटेट होता हुआ ज़्यादा लग रहा है और बॉडी के साथ जाता हुआ लग रहा है। अगर हम उसका देखें हैंड यहाँ पे, इस लेफ्ट आर्म को देखें, तो उसमें ना एक मोमेंटम गेन करने वाली, स्पेशली यहाँ पे देखें, चेक करें, ये इंपॉर्टेंट पोज है ये वाला, और हम लोग उस पोज में नहीं जा रहे। अभी हमारी जो चेस्ट है और शोल्डर है वो उस तरह रिएक्ट नहीं कर पा रहे, फिर वो पुश करता है खुद को ऊपर की तरफ। आपको पोज कदरे बेहतर है, बट उसमें वो एनर्जी नहीं हम लोग गेन कर पा रहे उसमें। और हम दोबारा लेफ्ट साइड पे जाते हैं। उसके बाद आ जाता है शॉर्ट स्विंग। शॉर्ट की जो एनिमेशन है वो बिल्कुल एंड पे पॉलिश करना ज़रूरी है। उसमें वही चीज़ है, जैसे यहाँ पे आप लोकेटर लगा लें और उसको, उसकी आवाज़ को ट्रैक करें, स्पेसिंग को ट्रैक करें, स्पेसिंग कैसी है, इसको हम लेफ्ट से भी देखेंगे और फ्रंट से भी देखेंगे। जो सडन रोटेशन है वो नहीं होनी चाहिए उसमें, जैसे यहाँ पे आ रही है सडन रोटेशन, नॉइज़ आ रही है ओवरऑल। टिप में देखें तो टिप ऊपर जाती है, फिर ठक करके नीचे आती है, फिर यहाँ पे रुकती है, फिर आगे जाना शुरू हो जाती है। तो भी काफ़ी हमें नॉइज़ नज़र आ रही है, जो कि कम्प्लेक्स काम है, और एंड पे हमें उसको पॉलिश कर सकते हैं। यहाँ पीछे जाती हुई अचानक ठक करके लगती है, और उसकी स्वॉर्ड भी एक साथ, स्वॉर्ड की टिप जो है ना वो भी नीचे आ रही है। तो ओवरऑल इसकी ओवरऑल पॉलिश हमें करनी पड़ेगी एट द वेरी एंड ऑफ द शॉट। बाकी ओवरलैप की फील अच्छी है, अभी थोड़ी सी और आ सकती है इसकी ओवरलैप की फील। मुझे लगता है कि यहाँ पे ये जो जैसे स्वॉर्ड भी सीधी है यहाँ पे, फिर वो नीचे आती है, फिर वो थोड़ा सा लीड करके फिर ऊपर आ रही है, वो चीज़ अभी नहीं है हमारी एनिमेशन में। अगर है भी तो वो उतनी पॉलिश्ड नहीं है अभी। उसमें आपने रिस्क को इन्वॉल्व किया लेकिन बाजू को इन्वॉल्व नहीं किया। उसका एक बाजू प्लस एवरीथिंग इज लाइक वर्किंग लाइक ए यूनिट। हम आइसोलेट नहीं कर सकते, सिर्फ हम रिस्क की मूवमेंट ऐड नहीं करेंगे बल्कि उसके साथ अपर आर्म इन्वॉल्व होगी, लोअर आर्म सब इन्वॉल्व होगा, लिटिल बिट ऑफ शोल्डर इन्वॉल्व होगा। और इधर भी जैसे वो घुमाता है तो उसकी बॉडी देखो, बॉडी लीन करती है, वो इनिशिएट करती है मूवमेंट को। तो बॉडी और हिप मूव की, और उसके बाद चेस्ट का एक जोर लगा, शोल्डर का एक जोर लगा, उसके बाद ये पावरफुल चीज़ घूमना शुरू हो गई। अभी जो हमारी एनिमेशन है वो सिर्फ आइसोलेटेड है इस तरह, तो उसको, उसका इम्पैक्ट क्या आएगा इसकी आर्म में और शोल्डर में, लिटिल बिट ऑफ चेस्ट, वो स्टडी करना ज़रूरी है। इट इज़ वेरी नाइस प्लेस ऑलरेडी, इट इज़ ऑलरेडी इन वेरी गुड प्लेस मैन। अभी जैसे नीचे स्वॉर्ड को लेकर आता, शोल्डर इन्वॉल्व नहीं है हमारा, उसका शोल्डर इन्वॉल्व है। तो ओवरऑल वेट की अभी कमी नज़र आ रही है। लेट मी प्ले थ्रू। तो स्वॉर्ड में ओवरऑल हमें वेट की कमी नज़र आ रही है, और उसको सॉल्व करने का वही तरीका है कि जब हम बॉडी को पॉलिश कर लेंगे तो उसकी ओवरऑल आर्क्स के साथ हम प्ले करेंगे, और उसका ओवरऑल जो बाजू है उसका इफेक्ट क्या होगा। एक हल्की चीज़ है ना, मैंने पेन पकड़ा हुआ है, मैं इसको जैसे मर्जी घुमाऊँ ये हल्का लगेगा,
लेकिन जैसे हैवी चीज़ है ना, उसके लिए हमें पूरे बाजू को यूज़ करना है और किसी एक ख़ास तरीके से यूज़ करना है, तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो पॉलिश में सिर्फ आर्क्स वगैरह नहीं आएंगी, उसकी जो फीलिंग है वो कैसी है वो भी आएगी, कि वो फील कैसा हो रहा है, उसमें वेट फील हो रहा है नहीं हो रहा। इन चीज़ों को हम लोग माइंड में रखते हुए वो पॉलिश करते जाएंगे। यहाँ बहुत अच्छी मूवमेंट आ रही है उसकी, और फुट में हल्की सी मूवमेंट आ रही है, ओवरऑल इसमें पर्सनैलिटी डाल रही है ये चीज़, जो कि हमारी यहाँ पे नहीं है। फ्रंट में मैं ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहा, लेकिन सेम नोट्स अप्लाई हो रहे हैं यहाँ पे भी, ठीक है। सही, इस पर मज़ीद काम करें। ओवरऑल अगेन बहुत अच्छा काम किया आपने यार, कीप वर्किंग, और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह फिर मिलते हैं। ओके, टेक केयर। हेलो ताहसाकिब, हाउ आर यू? ओके, लेट्स वॉच योर एनिमेशन। नाइस, या इट इज सुपर स्टाइलाइज्ड, आई रियली लव दैट swing, man. Very nice. Cool stuff there, huh? Okay, so let's jump in. So very first thing will be, I really like that move, but right now it feel like isolated. That move is only happening on the upper body, and legs are not sporting that. There is two ways. One is to avoid that movement, other is to really involve these legs down there. And when you do so, you can maybe bring this leg a little closer. I really like this one, but maybe this leg need to have the knee pointed inwards, and when you go here, same thing will apply here, I guess. And I think that's when you go here, you can move this leg in such a way that it will help for the jump. Let's try to solve that problem. The other solution will be to make a reference, which will super help, try to shoot a reference where the physicality is right for this area. So sometimes our brain imagines stupid things we cannot do, which is fun in animation anyway. Okay, so after that, I think there is a certain stop happening over here. So the character goes from here to here, and then it almost stop going further. I really love where we have this ease in, ease out happening in the Y axis, but after that push, we don't need to make this translate Z or X, whatever is that, but it is telling the distance he's traveling. We don't need to ease in and out from there. So if I play through, I think that thing is happening right now. So he, especially over here, he stops totally, and then magically the momentum appear. So let's try to solve that. It is same like a bouncing ball. So we got momentum from there. This anticipation will give a lot of momentum, and it will carry through. We don't need to stop here. We will keep going further. So this leg this is nice pose. This is very stylized. So this leg will be here. There's a little bit of slippage happening. Let's try to avoid that. I don't feel like he's on the air, and from there you can have really push pose, but we need to move the body a little back. This is the big spacing happening over here, and then we need to overshoot and settle back. So if you want to have a lot of energy to spend there, you have to follow through from there. So that energy is just stop here. So maybe if you want to have that slow motion kind of moment is nice, but I don't feel like a mistake because things are stretching. So the main idea is to keep going further, and then you can be in a comfortable position for your final pose. For this pose we cannot be here much longer. It feels like an in-between pose. So what we need a final pose where the foot they are landed in perfectly. So he has all the momentum of the body, all the weight of the body carried by the legs. Much balanced pose will be a right choice over here. Yeah, something like that. So this will solve overall hip and leg issue. The other thing will need a solve is the swords. So right now feel like they're sticks. They are not feeling heavy.
So we have to find a better physicality for the arms. So let's say this is the big move we wanna go into. I'll go a little up here. As a body, my body can go up, but these sword need to come down. So we need that momentum inertia. We need that anticipation, which really launches us into that rotation moment. And after getting that, we need to overshoot and settle back. Right now, the swords, they're spinning like this, and we have a lot of power here, and this is a big spacing happening. So what I will say, keep these arms together. Same over here. Keep them clear together. And here you can have that breakdown pose like this, something like that. And then you can overshoot from here. You can add smear frames over here. And that momentum should be carried through in a strong pose over here. So maybe final pose has less straighter arms. They will be much bended ones. Or one can be back there, and one can be further ahead. Because anyway, we have to find a final pose for our character. So try to find a pose which has nice balance. Same for the lower body and the swords, both of them. They should be in the rest position for the final pose. Yeah, again, the very first thing will be anticipation that really support the main action. Starting pose is nice, anticipation we need to figure out, and then this movement, and after that the resolve. Final hit and then nice balance pose. That is the big thing. Yeah, awesome work, man. Thank you. Okay, let's play this. So Taha did this amazing animation. It's looking super nice, super nice. So there are a couple of suggestions you can work on. The number one thing will be the camera. I feel like we have a lot of empty space around the main action. So let's zoom in, go in, and have the framing something like that. The beginning is nice. Maybe in the beginning you can have a bit of leaning forward, and we can involve a bit of foot roll over here. Right now the foot is too flat, nice antique. So it will be nice to have a lean in at the beginning to really, move into this pose. So when you bring the arms back, you can rotate the chest a little back. And for the foot, I feel like it is going flat, so you can have a nice arc for the foot. So it will go up, a little up high here. This is nice, and then we have nice contact position. I love the roll you have over here. Super nice. This one is looking awesome. Nice push off. And nice opening of the hands. I feel like he wanna aim here and then he grab here. So if you, he's so super professional. So if you want to bring them down where the grip will be, it will be nice. Feel like the hand is going straighter and then suddenly come down. So you can have a nice, arc from this one going into this one. Same for the other hand. Other hand feel like it's hanging up here. It's wanna grab somewhere here and then it's change the mind and then comes down. So it will be more like really selling the contact positions before even reaching there. And from here, I think everything is coming down at the same time. The elbow suddenly disappears. So it will be nice to have some elbow still visible. And then we go into this position and
can this portion can it be faster if you play through? It feel like a bit too slow. So maybe we can have a bit of, you know, overall you can grab the animation and then really tight the timing. Maybe we don't need this frame, and we don't need to go that low. So this is nice, this is good, and then suddenly a bit high. So that if I track the arcs of the hip, suddenly we have, you know, the hips stuck here. It should have a nice flow from here coming down and then boom, rotating towards this direction. And over here the arms are looking nice, and then they start moving down in one frame. So maybe it is nice idea to keep it grabbed, don't shuffle the hand, and keep it here, keep the arm still here, and then keep the grip tight. Keep the grip for this arm, and this arm will start leaving it, and you can bring this arm down to really sell that if it has a weight. And we don't need to have this, you know, open hand position. You can always have them like something like that or that. This is too cartoony, too flat. So let's try that. Maybe we can rotate the wrist right to feel like it is too, you know, towards camera. So it will be nice to have angle a bit here. There is nice reach. Maybe we can have a bit of change in the upper body here as well. Very tiny bit of change. And to really sell if he will come down from here. So right now, as you can see, that we have same position for upper body all over the place. There is more bend here, but over here you can have a bit of, you know, drag behind, so that the leg will lead first and then other thing will follow. And this is nice arc for coming from here. And from here, it's where you have a nice antique happening, and then this push off is bit slower. I think we can shave off some frames from here. Like there is nice build up. It start coming up, and then it stay here for too long, or for too slow time. So maybe if you wanna cut some frame, and then suddenly I feel like it speeds up here. So let's say if you are traveling from this point to that point, it is same like, you know, jump. So you have gather some energy and then push yourself further. Then the Z position, say this is the starting point, this is the ending point for the hip and the body. So I feel like the spacing wise we are a bit all over the place. So it will be nice to start with the ease out and then increase your speed, and then you can come over here. For now I feel like there is a, you know, the hip is staying there, and then suddenly start moving, and there is a bit of even spacing happening there. This foot feel like is not having enough ground, so I'll say just have some nice pose here. You can bend them. You can bend this guy a bit, and then yeah, it will be nice to have this foot over here, roll forward, or roll a bit more, and then you can roll a bit more, and then leave this area.
Same for this one. The hip is moving this way, and then suddenly it's think, okay, maybe I can spin further. So there is a bit of a polish need to happen. So maybe if you wanna push this way, you have to blend that motion in such a way that it feels organic and connected. There are two events happening here. So he's decided to come up, and then suddenly start moving this way, and then it start moving this way, and we have we have the feeling that he start rotating this way. So I think this area need a bit of polish, bit of love, but it look nice though. Yeah. When he come down, I think spacing wise we were a bit slow here. You can push it, or the overall timing. I feel like it bit too slow, too slow for animation point of view. So we have nice spacing here, and then I think we can come lower, and then this one come maybe 2 frames earlier, and then you can keep going down to have nice weight on the legs, and then go up again to have a nice push off. So body will come down, go up a bit, body will go up a bit, and then a little more up, and then we will catch this one. And yeah, it will be it will be nice to have a nice bounce and then go further. And you can always double check the Z direction or this direction, whatever that is. Feel like he is going in a straight manner here, and then suddenly pop into this speed, and then slows down. It slows down. So there is a bit of jitterness happening. Let me play through. Happening here, spacing wise. We have nice flow, and then bit of hold there, and then so let's try to have a nice flow. Like he's coming down. Keep the momentum towards screen left. We don't need to hold here. You can shave off some frame here as well. So maybe you can cut. This is nice. We don't maybe need this one. Don't need this as well. This is nice. This one is good. Try to shave off this one. This one is good, and yeah, we are coming down from there. Awesome. Yeah, that's it, I guess. Let's have one more look. Yeah, it's looking super nice. I'm just framing through to double check if I miss anything. Yeah, super nice stuff. Super nice stuff. I will say, like, for this leg, keep it keep it moving. So for now, I feel like it's come here and then stuck. So it will have a nice flow for the leg. We don't need to stop anywhere. So this leg can reach further and further, and here you will have nice contact position. But overall, it is awesome stuff. Awesome stuff. If you have any question, let me know, and we can dig deep into that. Take care. Hello, Taha Sakib. How are you, man? How are you doing? Let's watch a short over here. Sweet. Nice. Cool, man. Super nice start. बहुत अच्छा start है. I really love how you really put all the information over here. Everyone can believe, okay, he's running like this. He will jump on this wall. वो यहाँ पे jump करेगा, and then he will put all the effort there, and then so everyone can believe that, okay, this guy is really jumping from ground to high up. Very nice start. The next thing, we will really work on the polish. Okay, the first thing I will really work on is I really want to sell the line of action and the poses.
the momentum he's gained, and I really want to sell the physicality first. The first thing, I'll work on the starting pose. Let me turn on these awesome drawers. They are not helpful for you, but these are for my information. So first of all, really push this line of action over here. So right now the pose is super straight. He's super straight, which is not telling कि वो कहाँ जा रहा है, वो right जा रहा है, left जा रहा है, किस direction में जा रहा है. It is not clear. So I will really lean the body further to really see, okay, where is the direction where he's going. So right now it is super straight, which is not that clear. So for me, if he's running from right to left, I really sell the line of action. उसको मैं आगे lean करूँगा, उसके बाजू really make them stronger. And he's already running in a great speed. So right now, if we see that, I feel like, okay, वो ना यहाँ पे कुछ अटक गया, like he's super like stick here. So the first thing, I will go in the graph editor and see, okay, he's already in the momentum, he's in the speed. So I will sell that in the very beginning of my shot. So सबसे पहले, maybe I will add a couple of more frames to really, okay, he's running in a speed. इसको यदि दीवार फैलानी है तो उसको easy नहीं लगेगा. Like he have to gather enough momentum to really push himself up there. This one is nice, but I really don't see the direction where he will go. He's looking somewhere there. It is not clear. So I will really see where he will put the foot. So let's say he's putting his foot here. So maybe he will look in the beginning. Your direction is nice. So मैं यहाँ पे देखता रहूँगा अभी तक देखूँगा इसको. और यहाँ पे I will really move my head to the direction he will jump. Okay. Before that, he will be, the main focus उसका ये है कि like he will jump on this wall. He will put his first foot here. और उसमें इतना momentum है, इतनी energy है कि वो दूसरी तरफ देखे और jump करे. So right now he'll total focus on this one. There are a couple of things like this line of action is nice. So I will work on the head. Over here, I will work on my arm. It is going through the leg. So please work on that. And here, this pose is nice, but we can really push that further. Right now, I don't feel the weight. Where is the weight right now? So this leg is touching, but there is the overall body is too right. So maybe I'll try to move the body a little left and try to gain the momentum, because अगर मुझको left से right जाना है, so I have to put a lot of effort to the left to really like gain that energy and push him on the right direction. Okay, so right now it is missing. So overall, there are a couple of factors you can work on. So right now we have to really work on the weight of the body. So overall, I will see, okay, this foot will carry all the weight, let's say, but this foot is pushing, still pushing maybe. So he's pushing the overall body up, and this leg is carrying that weight, and now he's looking to that direction. You can totally do that. And I'll really figure out the arm pose. Right now they are all over the place. So I have to figure out, okay, maybe this arm pose is nice. Maybe I'll really like bring it closer. Let me change the pressure over here. So maybe this is a little close over here. I'm just guessing, man. I don't know. It's not clear, but let's try to figure out these arm poses. And it will be a lot tenser than right now. They are much relaxed because he's gathering a lot of energy. So इसको उसकी body को tense करना है. So just like when we relax, there is nothing we can go. But when we are tense, we are ready to go somewhere. So this is the thought behind. Okay, so let's work on that, and I'll really work on really sell this pose first of all. और उसके बाद this pose is super important. So here this leg is still touching and it will try to push. अभी क्या हो रहा है, like the knee direction is not selling that this leg is used to push that. So I'll really try to sell that. So
right now. I really try to keep this foot contact with this wall and compressing against this wall. Right now it is much relaxed. It don't feel like he's really used by the body to really push towards the right direction, screen right direction. And for this foot I maybe carry that. Right now it is too far. उसको ना वो carry करने के लिए उसको काफी effort चाहिए. So I'll try to bring it closer to the body to really sell this line of action. And again I will try to figure out, okay, ये जो arms हैं ये क्या कर रही होंगी. So I'll really try to, maybe this is the anticipation for really approaching over here. So these are ready, okay, they are ready, the arms are ready to really grab the ledge over here. So अभी ये clear नहीं है कि ये arms क्या करना चाह रही हैं. So I'll really try to pose them in such a way that the idea will be much clear, okay. And spine पे तुम काम कर सकते हो, and you can really sell, okay, you can rotate a little bit more towards the direction he's traveling. Let's say I want to go this way and I am looking this way is not the right way. So I will really focus, okay. पहले क्या था, फोकस ये था कि यार यहाँ पे ये जंप करेगा, बट जो ही उसने इधर देखा अब उसका टोटल फोकस ये है कि लाइक he will grab that ledge over here. So you can rotate the chest and you can also really use your head to really focus on this part. So everything is leading towards that there. और यहाँ से यहाँ की जो transition है, I'll really work on the overall arc of the body and उस spacing पे मैं काम करूँगा, like same like a bouncing ball. So this is, I will really work on this, go into the graphite and really try to work on the spacing first. And then I'll work on the spine, lower spine, upper spine, and then the head. And from there, I will work on the arms. So in this spacing, को देखूंगा कि like from this position to that position, how they will travel. So if you really want to grab that ledge, these arms, they are too delayed. So मैं क्या करूँगा, I will try to grab them as soon as possible. अभी ये थोड़ा लेट हो रही हैं, यहाँ पे मैं गिर जाऊँगा. This foot is there to carry me, but I feel like I can grab this, but I am delaying. तो जब मुझे खुद को carry करना है, so मुझे approach करना है ना, like you will try to approach the ledge as soon as possible. और उसकी body क्या करेगी? It will carry forward. I really love you have this mechanics working on right now. We can really try to tie them together. The leg is moving. Maybe this like this. You can go down like this. और lower spine help करेगी legs को आपस में connect रखने में. So right now it is a little, I feel like it is little disconnected. The leg is moving, but lower spine is not interacting with that. तो अमूमन मैं ये करता हूँ, जब लेग्स को मूव करता हूँ तो मैं लोअर स्पाइन पे काम करता हूँ, उसको एक दूसरे के साथ फिजिकलिटी को बरकरार रखने के लिए, to keep them physically right, okay. And right now the body weight will go down, खुद को कैरी करेगा, and then he will push him. It feel like right now he have to push him a little further, and then over here, this is the anticipation pose, he have to get momentum, enough momentum to really push him towards left side of the screen. So maybe ये push इतना बड़ा नहीं है, but here I really try to sell this pose, okay. So right now if you really look on this part, this leg I'll try to make them stronger. Right now ये leg भी थोड़ी सी weak लग रही है, so they should be stronger, okay. Because they are carrying and they have to push the whole body, so they should be stronger enough. Right now they feel weaker because उसका knee की direction उस तरफ है, but the foot is a little loose, they're not tense enough. And same for the arms. उसकी left arm को मैं कोशिश करूँगा कि अभी तक hold रखूँ, because he have to gather all the energy and push him towards left, okay. Right now we are losing a little bits and pieces over here. Like over here I will make it a little faster. So
मेरा ज्यादा टाइम यहाँ पे लगेगा, really get that energy, anticipation, and then push a little faster over here. Okay, and here I can really work on my pose. I really like how you approach it with this arm. This upper body is looking awesome. Love that. But the lower body is not interacting much enough. So maybe what I can do, I can really try to push that, and इस टांग को मैं कोशिश करूंगा कि it will be here, and then it can be approachable from here to here. So again, this part, sell that energy you gathered and really push him towards the screen right, left man. Or again, you can work on the spacing, you can really work on tiny bits, how he will travel. It's called bouncing ball, like please work on the hip first, and then you can go up to the chest and head, and then you can work on the arms and legs. But उनकी spacing overall अच्छी होनी चाहिए. How they will travel from one position to other, it should be physically, plus it should be spacing wise, it should be good enough. There should be not like even spacing. Even spacing is bad. It should be always like ease out from this position and then getting speed and then ease into the next pose. The reference always help, man. Here I feel like the missing point is the physicality. Right now he's too straight. I'm not totally sold by the idea, okay, he really push this way and then he carry himself. Here you did that. यहाँ पे आपने carry किया खुद को. And I really love this idea. But here, there are two things you can do. You can, if you are that slow, you have to sell the overall weight, the physicality. कि वो किस तरह से टांगे यहाँ पर रखेगा, उसकी बॉडी, लोअर बॉडी और अपर बॉडी, ये जो टांगे हैं कैसे कैरी करेंगी, and then they will push up. Okay. But this pose for the hand, you can maybe put some box or brick over here to carry something. Right now it feel like the Spider-Man kind of pose, but he is not Spider-Man. So I'll try to really grab something over here to really carry my weight. अभी क्या हो रहा है, like overall we have very nice pose, and then this reversal happens too soon. This is a little too soon for him. This reversal is nice when he's pushing him up. जब वो खुद को ऊपर push करेगा, so you can have that reversal, okay? And you can, this place is nice. This pose is super nice. I love that because you're selling the weight. These arms, they're carrying the weight, और उसकी legs भी help कर रही हैं उसमें. But there are a couple of areas I really lost that. Let me turn off this one and I can play through. So here you can really sell the weight by bringing the body down, and you can bring this arm a little earlier to really carry that. But the main idea is like, okay, here there is no weight, so we have to find कि weight किधर है, and उसके ऊपर अगर जाना है तो यहाँ पे तुम्हारा weight है. You have the weight over here, and the legs, they are pushing, they're working together, but it is again missed by here. यहाँ पे, यहाँ से आगे आपका जो weight है, it is not clear. Okay, कहाँ पे चला गया weight? Like because the arms, they are in the air, they are not carrying that, they are slipping, और legs जो है वो भी इसको carry तो कर रही हैं, but it is not that clear yet. So I really work on this part to really understand, okay, how he will move. Even though you have the basics over there, but we have to really polish that. और polish का मतलब बिल्कुल ये नहीं है कि you can go into spline, you graph editor में चले जाओ और really try to work on the graph editor and make it smoother. It is not that, but polish is all about selling the weight, selling the physicality. Physicality में there's a lot of things happening. Like we have to, कोई भी frame में हम रुकें और we like instantly we will know, okay, उसका weight कितना है, वो कहाँ से आया, कहाँ जाना चाहता है. Every frame should tell that. Like over here, like the first
frame is not telling कि कहाँ जाना चाहता है वो, कहाँ से आया है. But this pose is much clear over here, like couple of positions over here. Okay, this is much clear. Okay, he wanna go this direction. वो इस direction से आया और यहाँ पे जाना चाहता है. Every pose should tell that story. Okay, like this one, this is really telling the story. कि वो खुद को ऊपर push करना चाहता है, वो नीचे से आ रहा है, but he's trying to pushing himself up. This push could be much nicer. It is there. I really love that. The basic idea is very nice, but we can really work on the overall like push and really have very nice kind of bouncing ball kind of feeling. So he like this leg is helping, and then he's like pushing his weight up and throwing himself up the wall. So right now, overall spacing wise, it is much like even. Okay, so we can really work on that, man. The basics is there though. Sweet, man. Let's watch it one more time. It's super nice piece. This is what is like the fun part right now, man. The polish part. I really love that, man. Let's play it one more time. Yeah. Even though you can really push the poses, you can push the timings. The main idea is there, like sell the physicality. If you are able to sell that, you are best animator of the world. So every pose will tell the story, where the character is coming from, where he's going. उसका weight कहाँ पे है? Which leg is carrying weight? और उसकी जो overall like for the legs, I will always use the lower spine to really help that. See, it is same idea. Like if I'm bringing my arm over here, तो मेरी chest rotate करेगी like this. Okay? जैसे run में करते हैं हम लोग. Same for the hip area. अगर one leg is back there, one leg is further, मेरी hip rotate करेगी उस direction को, उसको follow करते हुए. Okay? And yeah, man, best of luck. It is super. I'm really happy to see that, man. And now the fun begins. Okay, best of luck. Have a good time. Hello, friends. Today I will try to review this animation over here. Let's watch this. Awesome. Super nice. Cool. First of all, very awesome stuff, Usher. You did amazing job. I really love the overall pacing and action and all that. Super nice stuff. Yeah, let's try to review this animation, guys. The first thing I want to watch is how's the beats and how is the rhythm. The rhythm and beat should work together. And sometimes I really try to see where is the building up from base to that peak, and then we will see the resolve. Same over here, we have to find the peak area of our action. Like over here, we see this building up into this peak and then resolve. And if we see our animation, we have the same thing. We see characters there. We start with small punches and then big hits and then throw off, and then he just resolve into ending, which is nice. I really like that. The other thing is I will look for the fast versus calm movement. This is very important. If we see the character is just fighting and punching all the time and there is no moment of calm, it will make headache for viewers. So let's try to watch that. If you have this thing, the calm movement at the beginning, and then you go into this fighting and throwing off. I see a little bit calm over here, and then this thing. You really try to keep in mind that you have the fast action and then you have calm movement. For me, I will try to like push it a little further. Let's say in the beginning of the shot, I will add a little bit of frames, maybe 7 to 10 frames in the beginning, to really have breathing movement before the fighting start. We have this like black screen, and then these character appears, and then they start fighting as soon as we see them. So let's try to have a little bit of calm movement where they're breathing, they're in front of each other, to have the viewer idea for the environment and where they're standing. So we can just take care of that. And then this is the calm moment, which is nice, because after that they have to fight.
So let's go to our next the first thing, like I really like the pose, but we can push it further ahead. For this guy, maybe we can push the hip a little left, and we have this nice line of action, and this arm can go further up, and you can have clear pose for this guy over here. This arm, we can bring him here, so you will have like very nice, very strong pose over here. For this guy, he's defeated already. Maybe we can improve the silhouette overall, so maybe you can bend it more and bring his neck down there, and we have this arm over here, because I feel like the arm is so distracting for overall animation. So maybe we try to calm that down like this. And after that, we see this anticipation. We can push it further by really like pushing this guy back, and we have to have very strong pose, because this guy is already defeated, so we don't need to worry about the timing. So he can have very strong anticipation over here and very nice strong pose over here. And then we can go into our breakdown. Over here you can bring this arm over like up there, and then we can have very nice lead from this chest area to this punch. So right now we feel like the hip is leading, which is nice. You can do that, but for now we can make this pose stronger by really leading with this chest area. Cool. And for this one, I really want to see the impact in the body. So maybe his body will curve down. You already have a very nice pose, but push it further. Make it very neat and clean and clear for viewers. And same over here, you can bring this punching arm up high and back to really see that. And you can always try to look into the eyes of other character. Most of fighters, they do that. They always look in the eyes, and when they start fighting. Cool. Let's go to our next one. This was nice. I really love this. Maybe for this one, we can bring this arm like this. Right now my focus is grabbed by this hand over here, so maybe you can keep it calm and keep it down. And after that, this one, boom, this punch is so forceful. We can bring the shoulder high up, something like that. And you can try to simplify the head. Right now I feel that the head is a little complicated, which is fine. You can try to simplify that, because our focus should be over here. So this shoulder is getting affected by this punch, so you can show the impact over here. You can bring this arm down to simplify and really try to sell this punch over here. Beautiful punches over here. Over here same, you can use this shoulder to really sell the impact for the punch. Same over here. If the rib cage is broken, this like torso is broken, so maybe you can reduce that. This one is too much. And here, man, here you can have this calm moment. You can add more frames here, maybe 3-4 frames more, and then you just punch that. So it's like fast action, and there's a little bit calm, anticipation, big action, and then into punch. Oh, I love this. This is awesome. Super love. Like, I love this kind of pose, and really like, you really like polish this. I love this, guys. This is the impact. I can see that this face is squished by that punch, which is super nice. And these effects, they are really selling this. This is the punch, the one which will hurt him. Super nice. Over here we can push that pose a little bit, like maybe the lines, they should be so clear. I feel like our rhythm is breaking a little bit over here for the pose, so maybe you can fix that. And same, this arm is a little distracting. We can bring it down, try to make it minimum, because our main focus should be here. This is our main focus, and this line of action is so good. I love it. Beautiful line of action over here. I love this, guys. This is very nice pose, super nice pose. And then over here
the grabbing moment should be more clear. I feel like it is not clear at the first glance if he's what he's doing actually. So maybe you can bring this arm up high and then over here to really like sell this idea of grabbing. Right now it is lost behind the body, so maybe you can exaggerate that moment, and then this guy is grabbed by this over here, the head. You can bring him up antique pose to make him really grab and like bring him down to the knee. So you can push that, simplify the hand over here, and then because this is the pulling point, you can lead with your head. Try to keep the spine curve like this, and yeah, this is overstretched. You can really try to connect these guys, the shoulder and the arms. They should be connected. Same over here, lead with the head, and then boom. And when he bounce off, because the head is the hitting point, it should go first, and then the body will have a very nice wave action following that head. You can add an impact in the knee over here. I really like these effects, but you can have a little bit of animation, a little like sudden snap into that knee over here. And same over here, this arm is so distracted because our main action is happening over here, and this extra movement is breaking that attention we have for this. So maybe you can simplify that, try to find a way, it's up to you. Like minimize the arm movement every time we animate. And here is the tip. The tip is always try to find 3 speeds in your animation. One, the maximum one. For like over here, the head is like the highest speed over here. This arm movement, their speed is super fast, which is distracting. So maybe you can simplify that. This hand pose, try to have very nice wave action for this hand and try to calm it down. Right now it is going down and it feel like very rigid for me. Try to break that down. These are like pendulums of the body. These arms, they are pendulums. So always try to animate them and try to treat them like a pendulum movement. I see a hard hit over here. Maybe you can really love to animate these pendulum kind of arm movement over here, which will be nice. And for this guy, when you bring him down, you can keep continuing going down and going back and up for the head area. Right now I feel like the head is like stuck here because you are coming at high speed from up to down. So you can really try to follow that action, and you can have this very nice kind of movement here. So maybe this head will here, and then it will go down, and then here, and maybe it will go up, and then you can ease into that pose you already have. Same for the arm. I feel like they are broken, so maybe you can work on that. You can involve the shoulder. Right now they are too high, so they also have like this follow through action going back and then going up, so you can add that. And over here, this is the moment where you can add a little bit of frame, maybe 5 to 10 frames, to really have this calm moment, because these actions, they are super fast, punching and grabbing and like throwing and hitting in the knee is a lot of action over here, very fast action. So maybe this one you can add more time, more like calm moment before he go up and grab this guy. So when he go up over here, I feel like we can add more body mechanics into that one, because this feel like he has superpower, and we have him like translating from here to here in a linear fashion. So maybe you can have this like going up and then have like kind of weight on next leg over here. So this leg, the back leg will go up and he will go up, and then you can have this weight shift, this nice kind of, in walk cycle we already have this thing going up and down and up and down.
because our body is shifting weight from one leg to other leg. So we can add that, we can add more love into this moment over here. And then this one, you can really bring his body over here, bring his shoulder like this, and then use your body and throw him like this. This guy gets spinning. Over here you can add a little bit antique, like you before you spin him on the left side, you can like rotate him, and then you have antique and then twist him towards that. So you can have very nice antique moment over here where this guy can spin to his right side and then to the left side over here. And when he fell down, his legs, they feel like stuck. So maybe you can continue, you can carry that twisting movement and continue that and bring him the leg down. So always try to gather momentum, and you have to understand everything should be carried out. Like if you gain momentum, you have to release it. So we are right now getting a lot of momentum for this guy, and then it dies, which is not nice. So maybe we can carry out this momentum and maybe add a little bit of twisting in the body to really have this kind of rotation overall. Same for him. Look, because he has he throw him, so he have to follow through. So maybe you can throw him and then have to follow through with your body to really like calm down the momentum you get during that move. So you antique here, you throw him, you still have a lot of twisting momentum, and you have to follow through that, and then you can go into moment, the next one. For this part, I feel like we can really like try to add body mechanics into that one. The way he's moving and going there, I think we can really try to figure out how the weight will shift, how he will move. So this part needs a lot of love. I will suggest shoot reference and really try to understand the physicality for this character. So this is the calm moment where he's really like, oh, I am this powerful guy and you are nothing. I'm just beating you like a sandbag. So you can sell that kind of attitude over here. This attitude is not that suitable for this kind of animation. So this is the calm moment, and always try to like have this lead and follow in your animation. I feel like this movement is too stiff. If you will shoot the reference, you will understand that there is a lot of lead and follow happening in the body, and you can add that. So try to figure out the personality of the character over here. This is a very nice moment to really try different things and really try to understand the personality and the attitude this character has. You can add a little more frames over here, you can add more animation over here, and really try to sell the attitude, really try to milk that. And this one is nice, you just grab him. I will try to make it more forceful, more impactful over here. So this grab is like right now it is soft. I will make it like more hard, like really trying to grab his head with fast pacing. So this should be more strong grab instead of this soft one. So you can really tense these fingers over here. This movement is softer. So really like you are like grabbing this thing, and then this head you are bringing it up and then throwing it down in a fast pace. For me, I really like to see more hits over here. Like this pose should be more clear. I really want to see the pose and the hands all over here. I really want to see him grabbing the head like this. And I really want to make the composition so good that it should be clear that this guy is grabbing his head, and now he will hit him on the ground with using his arm. So I really like to lead with the action. Right now our camera is going first, and then we see our head is coming. Always try to lead with the action. You can delay camera over here.
So his head will start going down, maybe over here, and then our camera will come and we see the first hit. We see one more hit over here. So this one, I feel like the pacing wise, it is a little slower. So maybe over here you can really like have the pacing of like, okay, I'm going to hit you, and then hit, and then before the last hit, he will really bring him up and really gather the power, and then boom, the last hit you can add like this. So it will be like going up. From here we will understand, okay, this guy will trying to bang his head. So this will like first hit, second hit over here, and third hit over here, and then fourth hit, maybe you can add more over here, and then before the last one, before the last blow, you can really milk that moment and really try to like, I'm going to kill you, and really try to gather energy over here, maybe a little bit of vibration and all that, and then boom, make it very hard, like bam, in the ground. You don't need to bounce it off after that. So he's like stuck in the ground, like this bounce is too high, too up, the composition is not clear enough. So maybe you can work on that. Keep him in this area. And I really want to see like after the final hit, like bam, he will bring his hand slowly up with attitude. Right now it is like there is no attitude, there is no personality. So you can really keep the hand down there, and then you can add a little bit of personality in the hand and then take it up. But I really loved your piece, man. This is super nice piece. It has a lot of potential. I really love you to work on this and try to add these notes we discuss here. And I feel like you are already in good place. This piece is very, very nice. Just work on your body mechanics, really try to sell your body mechanics, add that attitude, add that character, and a little bit of tweaks, and this piece is like super awesome, guys. Super awesome. That's all from my side. If you have any question, you can reach to me and I will be available for you, and I will try to answer any question you have. Best of luck. Hello friends, let's watch this. This is beautiful animation. I really love the timing and overall rhythm of the shot. Very nice. Super cartoony. Wow. Yeah, this Smurf is running and oh no. Awesome. Super nice. Yeah, let's try to analyze this animation, and we will try to find some areas where we can improve. The starting is super nice. I feel like this door has a lot of like push up over here, लेकिन ये यहाँ पे ease in हो रहा है last pose में, so we can just overshoot and settle back maybe to really have that push feel. So right now like we have a lot of energy acted on this door, और वो यहाँ पे die हो गई है. So maybe we can overshoot and settle back for this door. For this Smurf, this is super nice. I really love that. I can see the eyes, they are a little open. इसको आप बिल्कुल close कर लो, क्योंकि हमें ये white area नज़र आ रहा है eyes के around, which is not good. So we can prove that. And this hand is stuck for like couple of frames. We can improve that. Maybe ये hand थोड़ा सा नीचे होगा, and then it will come up like this, and then here maybe, and then it will be like this maybe, और उसके बाद ये यहाँ पे आ सकता है, and then we can go to this pose we already have maybe, or maybe we can have this kind of pose. For this hand, for his right hand, I feel like he can use this hand to push the door. तो अभी क्या हो रहा है? It is staying in the same angle. We can rotate that back. तो ये थोड़ा सा पीछे की तरफ rotate, you can do that to really push the door, उस idea को push करने के लिए, or maybe you can make it forward. It is up to you actually. Even you can lean a little bit with your body over here.
थोड़ा सा लीन करेगा इधर ताकि वो पुश की फील को हम लोग सेल कर सकें. टाइमिंग इज नाइस. एंड देन बिकॉज ही इज चेंजिंग डायरेक्शन वी हैव टू ब्रिंग आवर लेग्स फॉरवर्ड फर्स्ट, ताकि वो जो उसने मोमेंटम गेन किया है उसकी रेजिस्टेंस क्रिएट हो सके. तो आवर लेग्स विल बी कम फॉरवर्ड एंड दे विल ट्राई टू पुश अस बैक. यू कैन ब्रिंग देम फॉरवर्ड ओवर हेयर. इसकी सिल्हूट को क्लियर करने के लिए यू कैन ब्रिंग द हैंड अप ओवर हेयर because right now it is destroying the silhouette of the overall body. So इस hand को आप ऊपर ले आओ, इस arm को ऊपर ले आओ and really try to polish this thing. Like same over here, try to clear the silhouette of the hand and you can use these legs to push off from the ground. उसको push करेगा पीछे की तरफ settle करने के लिए because he was in a lot of momentum. तो उसको compensate करने के लिए we have to use our legs. Same over here, इसकी arms को आप यहाँ पे रखो, इसकी silhouette को clear करो and then he is changing his direction from right to left. तो उसके लिए हमें एक अच्छा सा flow चाहिए. So right now I can feel that we already have something over here which is nice, but there is no gathering of energy over here. Right now we have to gather energy and then we have to push to the left side. So you can use your legs to generate that energy over here. Yeah, maybe you can bring the hip up and then we will have this leg down there and this leg will be here and then we can clear the silhouette by bringing this arm over here. And same for this pose, maybe we can bring this leg over here because उसने legs को use करते हुए energy को gain करना, then he have to push to the left side. Okay, so same for this, we can bring this leg back a little bit to have this line of action really going forward like this. इसको lean करना है आगे की तरफ because he's running. So you can bring that over here. Try to clear this hand too, like इसको थोड़ा सा इधर ले आओ. So we'll have nice silhouette, nice flow for the pose. And then you can bring this arm a little maybe early over here, or maybe you can add a smear frame over here. This is nice. I can feel that you can use your legs still because you are making this force over here with the legs. उसको running करनी है, so maybe you can use multiples. Up to you, man. If you want to use, you can use that. Over here we have nice area, we can use multiple legs maybe because there is no motion blur and the animation is so snappy, so we have margin to do that. Same over here, I will use multiples or I will use like smear frames for the head because यहाँ से और यहाँ तक spacing is huge. जब spacing बहुत ज़्यादा होती है, so we can use multiples or we can exaggerate that. Like let's say this ball is going in one frame, maybe 2 frame from here to here, तो मिडल में जो फ्रेम है उसको मैं थोड़ा सा एग्जैजरेट करता हूँ, उसको स्मीयर फ्रेम ऐड करने की कोशिश करता हूँ ताकि जो स्पेसिंग है उसके गैप को फिल इन कर सके. एंड ओवर हेयर आई फील लाइक कि हम लीड एंड फॉलो का रूल अप्लाई कर सकते हैं बिकॉज फ्रॉम ही इज कमिंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, ही इज चेंजिंग डायरेक्शन. ओके, सो ओवर हेयर मे बी यू कैन क्लियर द सिल्हूट, ऑलवेज ट्राई टू क्लियर द सिल्हूट and then maybe keep the head over here. It is nice, but इसको आप turn कर लो and then you can bring this hip area a little back. ये बाद में आएगा और उसके बाद उसका head lead करेगा and then you can use the force overall line of action को exaggerate करो and then use your legs. In arms को you can always try to find a nice path of action for the arms, nice flow, and then you can bring this over here. So over here maybe you can bring this arm up to really have this like a squash kind of feel and then उसको stretch करो. Over here we have stretch pose. तो यहाँ पे ये stretch pose है, ये squash pose है. तो हमें एक अच्छा contrast मिल जाएगा एनर्जी गैदर करने के लिए. And then you can use your pose, but always try to exaggerate the legs because they are the one who is generating the energy overall. उसके बाद you can, this is super nice, this area is very nice, I love that. What you can do, maybe you can just for hand poses you can maybe bring this pinky a little down
and maybe bring this guy a little over here, तो हमें एक अच्छा सा कंट्रास्ट मिल जाएगा, पोज मिल जाएगा for hands. Right now I feel like they are equally spread out. Okay, so we can make it better. Mouth shapes are nice. The overall animation over here is super nice. पहली में जो settle है, it is super nice. I love that. Eyes का पहले जाना and then he's turning his head is super nice. Same over here. I love that. Looking up, and then this one is I really like that too. Coming down. Maybe you can like add one ease out from that. If it is up to you. And one thing you can add up, maybe उसकी eyes थोड़ी सी यूं खुल जाएंगी. Maybe 1 or 2 frame. तो इसने यूं ऊपर देखा and then his eyes will pop up like. And then for 2 frames are enough. 2 frames के लिए आप इनको थोड़ा सा open wide कर दो to have this kind of thinking process or shock kind of feel कि जैसे कोई चीज़ आ रही है, like he was normal looking up and then suddenly something is coming to him to catch him. तो इन eyes को बाकी body वहीं पे रहेगी, but for 2 frame his eyes will pop up and then he can go into this pose. And you can keep for this arm, you can keep this arm maybe here, a little delay in the arm. This is nice, but you can try to see where is the last pose और उसको देखते हुए हम लोग थोड़ा सा drag add कर सकते हैं fingers में. I love this one, super nice, overshoot, settle back, beautiful timing over here, and then we zoom out, which is super nice to reveal this character. So इस character के लिए I can feel like we can improve the pose over here. Right now the elbow, you can bring the elbow up like this, इसको थोड़ा सा ऊपर ले आओ, and then you can improve this pose by bringing this elbow up. हमें एक अच्छा सा rhythm मिल जाएगा pose में from here to here. Okay, और अभी इसका head is too symmetrical, इसको थोड़ा सा rotate करो नीचे थोड़ा सा, मतलब you can break the symmetry by rotating the head like this maybe. This elbow will be here and then you can bring it down maybe. Super nice. And yeah, this pose will be like the elbow ऊपर होगी and then this very nice unsymmetrical pose. You can improve that pose, the facial pose. Right now it is too symmetrical. और ये मतलब नीचे देखता हुआ भी नहीं लग रहा, तो maybe you can rotate this and then he will be looking down like this. और maybe एक eyebrow थोड़ा सा नीचे आएगा and then one will be up. और उसमें तुम jaw को rotate कर सकते हो, which will break the symmetry. The line of action कुछ यूं होगी इस तरह से, and he will be looking down. Same over here, man. He is going to do a big action. तो हम क्या करेंगे Smurf के लिए, he will have something in the facial pose before he go into action. तो कोई भी एक्शन है उसको लीड करने के लिए हम क्या करते हैं कि फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ करते हैं उस एक्शन से पहले, ताकि हमें एक थिंकिंग प्रोसेस मिल जाए, हमें कुछ चीज़ें मिल जाए जो लीड करें उस एक्शन की तरफ. राइट नाउ वी डोंट हैव दैट. इट कुड बी एंटिसिपेशन टू, मे बी थोड़ी सी एंटिसिपेशन हम डाल सकते हैं बिफोर दिस बिग एक्शन ओवर हेयर. सो मे बी यू कैन ब्रिंग दिस गाय अ लिटिल अप एंड राइट, थोड़ा सा आप यूं कर लो उसको, थोड़ा सा राइट मूव कर लो एंड देन मे बी अ लिटिल अप. और यहाँ पे एक्सप्रेशन उसका थोड़ा सा वाइड होगा, आईज वाइड हो जाएंगी एंड देन you can go into this antic pose. This arm is, you can bring it up a little bit, the eye blink, you can blink the eye because right now the eyes are open और उनका कोई कहीं पे focus नहीं है. And you can add nice drag over here. Improve this wrist, उसको rotate करो, silhouette को clear करो. And for one leg you can bring it out. Okay, ये यहाँ से चली थी leg, it has to drag a little bit and then you can bring it up. और यहाँ पे ये ना थोड़ा सा floaty लग रहा है. I really like this, but here it feel like just floaty. So maybe you can add a little bit of maybe up and down or vibration overall body. You can do that. Maybe he's shaking his head and his fingers they can be like doing some vibration or something like that. So उसमें एक अच्छा सा texture आ जाएगा हमारे पास. Right now it is
everything is like going up in one pose, which is too mechanical. And then you can maybe add antic a little bit, क्योंकि इतनी बड़ी मूव है उसको कुछ तो हमें चाहिए. लेग थोड़ी सी ऊपर जाएगी and then it will come down and you can really drag these arms behind. Okay, ये लेग यहाँ से यहाँ तक बड़ी स्पेसिंग तय करके आई है. It will be going down back a little bit. Right now it is too flat, so इस लेग को थोड़ा सा पीछे ले जाओ and this leg will be here to break the symmetry. और arms उसकी drag करेंगी पीछे and then you can have this antic pose over here. इसको थोड़ा सा नीचे ले आओ and then really bend these legs like this. We will have this antic pose because after that he will be going forward. Forward जा रहा है, so we have to have some nice antic over here. And then you can continue path of action for the head. Head नीचे आ रहा है and then you can bring it down like this. अभी क्या हो रहा है कि इस पोज के बाद अचानक से हेड ऊपर आ जाता है and then he will be flat. So उसको हम थोड़ा सा क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा कंटिन्यूटी और ड्रैग ऐड कर सकते हैं, या पाथ ऑफ एक्शन को देखते हुए हम लोग आर्क्स को देख सकते हैं. तो राइट नाउ द आर्क ऑफ द हेड विल बी लाइक दिस. तो यू नीचे आएगा एंड देन इट कैन बी हेयर, द हेड वुड बी हेयर. और उसके बाद यहाँ से यहाँ तक कुछ एनर्जी को गैदर करने के लिए और खुद को पुश करने के लिए हमें एक टांग को वी हैव टू ब्रिंग वन लेग बैक. ओके, तो यू कैन ब्रिंग मे बी दिस लेग बैक जो कि पुश कर रही है इसको ओवरऑल आगे की तरफ. अभी क्या हो रहा है कि उसकी वो वाली लेग यूज हो रही है बट द डायरेक्शन ऑफ एक्शन इज नॉट क्लियर. तो इस डायरेक्शन में वो भाग रहा है, उसको सपोर्ट करने के लिए वी हैव टू ब्रिंग दिस लेग बैक. ओके, एंड देन सेम फॉर द आर्म्स. यू कैन ड्रैग दीज आर्म्स और उनका ओवरऑल पाथ ऑफ एक्शन देखोगे कहाँ से आ रही है और किस तरफ जा रही है. लाइक दिस आर्म इज कमिंग फ्रॉम अप और उसके बाद ये नीचे जाएगी एंड देन यू हैव टू फॉलो द पाथ ऑफ एक्शन. सो मे बी लेफ्ट आर्म के लिए योर पाथ ऑफ एक्शन विल बी लाइक दिस एंड फॉर राइट आर्म इट विल बी लाइक दिस मे बी. और हेड का जो पाथ ऑफ एक्शन है वो कुछ यूं था, एक नीचे आया हेड एंड देन एंटिक में चला गया एंड देन इट विल गो अप लाइक. सो एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी शुड हैव अ पाथ ऑफ एक्शन, गुड वन, and you can follow that. And same over here, the silhouette is not clear, so we have to bring the arm out maybe. I know he has big arms and big hands. उसकी जो hand है they are so huge, so थोड़ा सा आपको मुश्किल होगी but you really try that. You can improve the overall silhouette of the pose. Same over here, these hands they are fighting with the silhouette, so maybe you can clear that. Bring this arm a little left and then same for this arm. Try to clear the silhouette of the pose. Yeah, I feel like ये leg थोड़ी सी stuck हो रही है, so maybe you can cut this frame और इस leg को थोड़ा सा यहाँ पे ले आओ and then he can exit early. उसके बाद आ जाती है हमारी landing. The landing is nice but I feel like we can really try to sell the, because it is so cartoony, so maybe we can rotate these legs like this, उसमें drag की feel add करने के लिए, then this pose will be super nice. And I don't know about the rig but you can maybe bring this pole vector out for the knees. तो हमें एक अच्छी सी silhouette मिल जाएगी, एक squash position मिल जाएगी. Right now it is not that clear कि ये stretch position है या squash position है, so इसको sell करने के लिए you can exaggerate this, इसको pole vector को बाहर ले आओ and then you can really stretch the overall leg. Same over here, we have to, because he is going from he is coming towards us, तो हमें कुछ डायरेक्शनैलिटी के लिए कुछ चीज़ों को लीड और फॉलो का रूल अप्लाई करते हुए एनिमेट करना है. सो मे बी एंटिक के लिए हम लोग इसको थोड़ा सा इधर ले आते हैं, ब्रिंग इट ओवर द राइट साइड and then try to clear this silhouette. Right now the silhouette is not that clear because the foot is fighting with that. So you have to find a nice pose for this frame over here. It will be antique pose and then you can lead with the legs. Head अभी right की तरफ ही रहेगा. Same over here, head पीछे रहेगा and legs they will lead the action. So try to apply this lead and follow rule over here.
because legs they are the one who is generating the energy, तो वो पहले में भी जाएंगी and then you can follow the body over here में. So maybe over here same thing, the legs can be like this and these guys can follow that. Same किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी बॉडी को मूव करें फ्रॉम वन पोजीशन टू अदर, अगर वो स्ट्रेट मैनर में मूव कर रही है इट विल बी बोरिंग. बट इफ यू लीड वन थिंग एंड देन अदर थिंग विल फॉलो, मे बी उसका लोअर पार्ट लीड कर रहा है, बॉडी इसको फॉलो कर रही है लाइक दिस, इट विल बी लुकिंग इंटरेस्टिंग. तो शुरू में क्या हो रहा है कि इसकी हिप एरिया इसको लीड करेगा एंड देन हेड विल फॉलो दैट, और उसके बाद हेड आगे की तरफ आ गया. सो वी हैव टू अप्लाई दैट रूल ओवर हेयर. अभी क्या हो रहा है, इट इज सुपर स्ट्रेट, देयर इज नो डायरेक्शनैलिटी ऑफ मोशन. तो मे बी इधर उसकी बॉडी कुछ यूं लीन करेगी एंड देन यू कैन ब्रिंग हिज बॉडी ओवर हेयर, उसके बाद इसकी बॉडी यहाँ पे आ जाएगी, उसका फोकस यहीं पे रहेगा. राइट नो द आई कैन सी द आई लाइन इज नॉट दैट क्लियर, तो ट्राई टू फिक्स दैट and then you can go into this antique pose, beautiful antique pose. Maybe it is up to you if you bring the leg up. अगर ऊपर लेके आना चाहते हो it is totally up to you, but try to really push this line of action man. You can do that. और इस नेट को यहाँ पे ले आएंगे हम लोग and then right now our silhouette is not that clear, so you can really push that. Same over here, इसको थोड़ा सा और पीछे ले आओ and then over here you can really try to इस नेट को एंड पे लेके आना है हमने. पहले इसकी हिप लीड करेगी एंड देन द चेस्ट, उसके बाद हेड आएगा एंड देन द नेट विल कम. सो मे बी यहाँ पे नेट कुछ यहाँ पे होगा, मे बी लाइक दिस. तो इसको थोड़ा सा डिले कर दो या इसको थोड़ा सा अर्ली कर लो, इट इज अप टू यू. सो यहाँ पे इसका नेट आ जाएगा. एंड सेम ओवर हेयर you can improve the silhouette of the pose and to sell this squash position. And over here you can drag this hand a little bit and then he will come later. Right now I feel like यहाँ पे एक frame missing है, so we can add the drag over here. And you bring this arm a little further ahead, उसको exaggerate करो और उसको बाद में लेके आओ, तो उसकी overall path of action कैसी होगी, कुछ यूं हो जाएगी. Right now it is like simple path of action, यहाँ से आता है and then it's stuck here. यहाँ पे जो stuck की feel है उसको खत्म करने के लिए you can go forward and back, overshoot, settle back, and then over here you can change the pose of the hand from fist to maybe open a little bit. लेकिन ये tense होगा और उसकी आई लाइन को हमेशा ख्याल रखो कि वो कहाँ पे कैरेक्टर है, उसकी आईज उसको देख रही है कि नहीं देख रही. सेम ओवर हेयर, इसकी आईज उसको देखेंगी. और अभी ये एक्शन खत्म होगा एंड देन दिस गाय विल ट्राई टू मूव. तो अभी हम ना थोड़ा सा फाइट कर रहे हैं कि अभी ये एक्शन खत्म हुआ नहीं है एंड दिस गाय स्टार्ट मूविंग. इसको 3 फ्रेम डिले करो, 3 से 4 फ्रेम डिले करो, तो हमारा फोकस यहाँ से फिर यहाँ आ जाएगा. और इस पोज से इस पोज में जाने में हमें ख्याल रखना है उसकी ओवरऑल स्पेसिंग को. राइट नाउ आई कैन फील देयर आर सम स्पेसिंग इश्यूज, तो ट्राई टू स्मूथ दैट आउट. द हेड हैज सम जिटर्स ओवर हेयर, तो उसकी ओवरऑल पाथ ऑफ एक्शन को, उसकी स्पेसिंग को देखो. एंड देन दिस पोज कैन बी इम्प्रूव्ड, मे बी ब्रिंग दिस आर्म एंड एल्बो लाइक दिस एंड इस आर्म को थोड़ा सा बाहर ले आओ टू रियली इम्प्रूव द सिल्हूएट ओवर. सेम मूवमेंट करनी है उसने, दिस इज बिग एक्शन, तो वी हैव टू हैव समथिंग इन द आईज, कुछ थिंकिंग प्रोसेस होगा and then he will react accordingly. So he will be like changing his expression before this like big angry moment over here. So he's shocked, like he cannot catch that. It could be frustration, it could be anger, something like that. So यहाँ पे आप एक take add करो and then he will go into this beautiful
angry pose we have over here. इसकी overall line of action को exaggerate कर दो. Like right now it is too straight, everything is towards camera, so उसको हम change कर सकते हैं. So maybe you can try to add this pose, like line of action को थोड़ा सा push करो, उसको उस तरफ rotate करो, and then try to have this beautiful C shape over here. Right now we have straight line. Same for the head. You can rotate that और इसकी स्मूची को ब्रेक कर सकते हो. Maybe the arms could be here और fingers कुछ यूं होंगी इसकी. And then you can clear this silhouette by bringing the elbow over here. उसको hand को थोड़ा सा left ले जाओ like this, and it will be nice. Okay. Same over here man. Same over here. अगर right से left जा रहा है, so we have to have antic pose. So maybe move. सेम पोज रखो बट ब्रिंग द बॉडी ओवर द राइट, और उसके बाद यू कैन रियली पुश दैट पोज. तो मे बी उसकी आर्म कुछ यहाँ पे होगी. इट इज सुपर एग्जैजरेटेड, यू डोंट हैव टू फॉलो 100%, बट द आइडिया इज देयर. ओके. और यहाँ पे सेम इसकी जो लोअर हिप एरिया, इट विल लीड द एक्शन, और उसका हेड उसको पीछे रहेगा. And over here it is too down, don't do that, but bring it a little high maybe. But the overall idea is to introduce some arcs over here, and then he will be in this pose. इस arm को पीछे ले आओ, and then you can really exaggerate the silhouette of the overall attitude. Okay. और उसको angry pose बनाओ उसको. Right now the eyebrows they are up there, so he don't feel like he's super angry. So like, so bring them down the eyebrows. Yes, super nice. Smurf की बात है. So Smurf में क्या होगा? Like same directionality. तो यहाँ पे Smurf is running away from this guy. तो ये उसको देखेगा. I feel like we can improve that. और overall body को आप lean करो इस तरफ, and then you can bring the arm over here. उसकी silhouette को हम लोग clear कर सकते हैं. So right now he's running like in towards the camera in a straight manner, which is nice, but it is not interesting enough. Same over here, he's looking there. और अब उसको क्योंकि जाना है left से right, so he have to bring his body towards here. तो उसको lean करना है, energy gather करने के लिए. He have to change his overall line of action over here. और उसके बाद वो right की तरफ जाएगा. So direction change में क्या होता है? So we have to like he is running straight, but he is also going side to side. तो उसको कुछ क्या करना है? अगर उसको left जाना है, he have to go antic pose or something like that. उसकी body को lean को use करते हुए हम लोग उसको sell कर सकते हैं direction change को. Let's say this is a box. उसको left से right आना है, तो मैं ये करूँगा कि उसको थोड़ा सा लेफ्ट मूव करूंगा, रोटेशन ऐड करूंगा, एंड देन आई विल ब्रिंग दिस गाय टुवर्ड्स हियर. ठीक है. तो यहाँ पे कुछ यूं लीन करेगा मे बी, एंड देन द हेड विल बी मे बी स्टे हियर, और उसकी बॉडी कुछ यूं लीन करेगी. तो हमें एक टिल्ट मिल जाएगा ओवरऑल बॉडी में. तो हमें इस टिल्ट को इंट्रोड्यूस कराना है यहाँ पे, जैसा हमने इस कैरेक्टर के लिए इंट्रोड्यूस करवाया था. ओवर हियर वी हैव अ नाइस टिल्ट इन द बॉडी. उसको ये नजर आया, he looked into that, and then over here his head is here, और ये इसको देख रहा है. This is very important thing to watch. और उसकी बॉडी नीचे से यूं राइट की तरफ आ रही है खुद को रोकने के लिए. Okay, because he is running forward but also side to side. Okay, I can really stop over here. So this is rough pose. You can change that. You don't need to copy that. The basic idea is there कि वो राइट से लेफ्ट आएगा, ही हैव टू स्टॉप हिम बाय यूजिंग द लेग्स. वो लेग्स पहले आएंगी, उसको यहाँ पे देख रहा है. हिज आर्म कुड बी ओवर हियर, एंड देन यू कैन गो इनटू दिस एंटिक पोज विद नाइस ट्रांजिशन. दिस पार्ट यू हैव टू एक्सप्लोर दैट. ओके. एंटिक पोज में आएगा सेम आर्म्स, दे आर फाइटिंग विद द सिल्हूट. मे बी यू कैन ब्रिंग देम ओवर हियर, और इसकी सिल्हूट को क्लियर करो, एंड देन यू कैन जंप. तो यहाँ पे बॉडी उसकी, बिकॉज इट गोइंग टू ट्विस्ट
from right to left, तो उसको हमें एंटिक में क्या करना है, उसको उल्टा करना है. So we have to bring him from right to left. So then you will have this moment over here. Okay? तो ये twist करेगा खुद को यहाँ पे. You can exaggerate the overall. You can introduce this C shape over here. अभी ये straight है, it is very straight. तो ये C shape आ सकती है, squash. We can tell that क्योंकि यहाँ पे stretch हुआ था and then he have to squash. So उसकी arms को ऊपर ले आओ, make it beautiful. Silhouette को अच्छा करो. Same for this. Bring the arms over here. This silhouette is not interesting enough. So clear करो. And then you have like after squash you have this stretch position. तो squash and stretch they work together actually. Okay. जब stretch आएगा then squash will come और squash के बाद stretch आता है. You cannot go from squash to squash position. Okay. And then you can drag the arms over here. Arms को drag करो. And then you can go into this pose. Same. You have to work on the arms. I really love this, but you can bring maybe this arm over here. इस arm को यहाँ पे ले आओ. So really sell this moment of putting his arm. इनको head पे रख रहा है ना. So you have to clear that. So maybe you can keep the hand over here. Something like that. So maybe he's looking down. उसके बाद जब उसका हैंड आएगा then he will go into antic pose और उसके बाद इस pose में चला जाएगा वो. So maybe he will go back and have something like disbalance kind of feeling. थोड़ा सा disbalance होगा यहाँ पे. So after that तो यहाँ से यहाँ की जो transition है it will be like you have to find a nice path of action for the head. And then you can go into antic pose, very beautiful antic pose over here. वही चीज़ है कि path of action यूँ थी जब disbalance था, then we have to change that. तो C curve को हमने introduce करवाना है antic pose को, something like that. And then he will go forward. Like over here, he's going forward. तो हमें overall path of action को देखना है कि वो कैसा होगा हेड का ओवरऑल. The hands they are fighting with the silhouette, इसको क्लियर कर लो. And then over here I feel like the character is suddenly like spacing wise कुछ मुझे issues लग रहे हैं. So we have to sell that. Maybe this box is sucking him, so maybe you have to introduce some effect. और इसमें कुछ मूवमेंट आएगी जो कि उसको पुल कर रही है. So we have to find the idea over here. So maybe if he is jumping तो उसकी spacing को हम देख सकते हैं, उसकी overall silhouette को हम देख सकते हैं. Maybe he is antic. We can add antic over here and then he might pushing. So यहाँ पे clarity की थोड़ी सी कमी है. We can fix that. So we have to understand कि ये खुद उसके अंदर jump कर रहा है या वो उसको suck कर रहा है अंदर की तरफ. So यहाँ पे maybe you can add a little bit of effects. Have that moment over here. और spacing wise you can decide okay ये यहाँ पे शुरू में it will be ease out and then उसकी spacing बढ़ती जाएगी, या तुम ये चाह रहे हो कि यार शुरू में इसकी spacing slow हो and then यहाँ पे जब वो air में है, उसको antic pose में है, you can slow that down and then he will be faster later. So you have to decide that. Awesome man, awesome job. I really love that man. I really love your animation. You have a lot of potential. I can feel that. Just try to work on your like silhouettes and lead and follows and your path of actions. And yeah, you have a lot of potential to exaggerate things. Some areas you are just rocking, like they are super awesome. Overall it is super nice. Best of luck for your animations, man. Okay, take care. Hello friends, let's watch our animation over here. My teacher tells me real beauty's on the inside. That's just something ugly people say. My teacher tells me real beauty's on the inside. That's just something ugly people say. Cool. I love that. Super funny dialogue.
cute. She's looking super cute. Let's go my notes one by one. I hope they will be super helpful for you to really plus your animation over here. The first thing I noticed is the composition. If you see that, we can, I think, follow the rule of third, and maybe we can move the camera in such way that she's over here in the screen. So let's say this is the eye line. Let me change the color. Let's say this is the eye line. So we can change the camera to really make her head over here and her body should be here. So I think we can improve that one. Now the other thing is the poses, number of poses, we can reduce that. So how we can do actually, we can reduce the number of poses, we can really find the intent of the dialogue. The first thing she's talking about is, let's listen to that. My teacher tells me real beauty's on the inside. So she's talking about her teacher, and her teacher said the real beauty is from inside. So I think we don't need to gesture that much. So right now, if we see number of poses, we have this is, let's say this is our first pose, this is second, this is third, and then we have 4 poses. Same for the dad, first pose, second, third, 4, and 5 pose. I'll say keep 1 pose, and you can talk within that pose. I will say cut this one. We don't need that pose. So we can start from here, and this will be internal dialogue. Okay, but my teacher said the real beauty is from inside. So she can use her hand to really put on the chest area, and she's like, okay, I'm talking about inner peace. You can change the gesture over here, but the main idea is like, my teacher said the inner peace is more important. So the intent of the shot will be, okay, she's talking about, okay, be peaceful from inside. So we don't need to animate the word to word. We don't need to gesture all the time, but we only animate the intent of the shot, not the words of the shot. So we don't need to put a lot of pose here. So it will be like 1 pose and then 2 pose. That's it. And then you can add up the thinking process on top of that. Same for the dad. So here I feel like we have to find the intent of the shot. Like, what is the intent for him? Like, he's getting annoyed, he don't want to listen to her, or maybe like, I don't care, and he's like keep using the phone, like, I don't care. So this is the intent. Even though he's talking about, okay, she's ugly or all that, we don't need to animate word by word. So for me, the intent could be like, I don't care, don't bother me, or I don't like your teacher, or something, anything. It could be anything. We will change our acting choices according to that intent. So let's play that. It's just something ugly people say. That's something that ugly people say. So he will like keep using the phone over here. Like he's like, that's what ugly people say. Like he keep using the phone, talk within that pose. We don't need to go like this pose. We don't need that. And we don't need this hand to go that further. We don't need that one. And this one is nice. We can keep here. You can totally decide. It's up to you, man. It is totally up to you what you would like to do. But I will say, like, choose 1 pose, animate within that pose, keep your character within that pose. Will be super awesome. For facial, I feel like you can really improve that, especially the eyebrows. Main idea is always find the lead and follow into that. Like every eyebrow has 3 sections to animate. These are not one unit. So you can always find out, okay, this is the 1, number 2, number 3. So you can always lead from any number. Like let's say it can be inner eyebrow, it can be from middle, or it can, the outer one is the less one. So I don't think we can use the outer one to lead for that, but it can follow. Most of the time I divide our facial animation into 2 chunks, and I will try to really work on the connection of both. Let's say the character is smiling. The smile will trigger this muscle in the cheeks, and it will trigger the lower lid for the eye. So overall, you can really work on the connectivity. Let's summarize. The first thing is the composition for this shot. The other thing is number of poses. Reduce that into 2 poses. Find the intent of the shot. What is the body language? Let's say she's small girl. Maybe she's like maybe 10 years old. How she will move will be totally different than the
than a guy who is like 40 years old. So try to find the personality and the age of the character plus mood. What is the intent of the shot? What is the inner feeling for the character? Let's say this character is totally annoyed, or he's like tired of work, and keep in that pose. Like this pose is telling the story, man. I love this pose. So try to be there while talking. And really, you can, after that, you can really polish the other parts, and polish is never ending game. So we can keep polishing for sure. And yeah, man, best of luck. And if you have any question, you can reach me and we can talk further. Take care. Okay, before jumping into the review, let's try to understand body mechanics first. Let's say this guy want to hit this guy over here. So let's open this up, and now we will go frame by frame. You can really see our line of action is super strong. Like this guy is holding this over here, और उसकी टांगें spread है, and then this guy will go into antic pose. We can really see that कि इसकी जो टांगें हैं they are grounded, and this guy is overall handling this hammer. और hammer का जो head है, it is going down, and he's twisting his body like this. And then we have this pose over here, like this is very high anticipation pose. उसमें क्या हो रहा है कि उसकी body lean की है forward. He has very strong balance over here in दोनों feet पे, और इस heavy hammer को carry करने के लिए इसके feet spread out है. And then we can see that this distribution of overall weight, and we can say, see, this is balanced enough, and his line of action is leaning forward, and this heavy weight he's handling that with strong arms, his body tense hai. And then we can see that yahan tak he's really trying to push this hammer up, or yahan pe line of action is super strong, and this hammer is over here. And then from here to here his body is getting relaxed because he already put a lot of effort. और यहाँ से hammer का weight it will come down, and he's just trying to use the gravity with that, और उसको really trying to pulling that, and उसको यहाँ पे hit करना चाह रहा है. And we can see this overall line of action is super strong over here, and you can see the spreading of the leg. The right now if you see from that pose, यहाँ पे इसकी body आगे की तरफ lean की थी, and now we can see that his body is going overall cog इसका पीछे की जा रहा है, his hip is going back, and this is the balanced, very nice, well balanced pose. If you draw a line from in the middle, यहाँ पे very nice pose over here we have, and then this guy is hitting, और उसके बाद body का impact. This is very important, guys. We always miss this in our animation. यहाँ पे जो ही hit किया, उसकी body का reaction check करें. And then सबसे पहले ये hit किया, and then this is going through from arms to its chest. उसकी chest से होता हुआ यहाँ पे हमने अच्छा सा follow through देखा, overlapping action देखा हमने. Very nice thing to add in our animation. And then we can see कि यहाँ पे because this guy is super heavy, he is readjusting his arm to trying to pick it up, or even he's bringing this leg over here to have a very grounded pose. उसका center of gravity को spread किया उसने, and then he might pick it up. Very nice, super nice. I really love to watch this guy like throwing this thing. Super nice, guys. Okay, guys, let's jump into our review. Hello, friends. Today we will review this animation over here. तो आइए शुरू करते हैं. Let's watch it a couple of times. Nice. I can really feel weight over here. यहाँ पे मुझे weight की feeling आ रही है. The tightness over here in the body. इसको carry करने के लिए जो body जिस तरह से tense है, tight है. It is nice. Okay, let's start from the first pose. The first pose is nice, but I feel like we can add more weight into that. Right now, the overall shape is like too complex. If I draw a line in the middle, right side or left side, it feels like a same.
So because he's carrying this heavy weight over here, I feel like we can utilize this thing because पूरी body इस heavy weight को carry करने के लिए use होगी. So let's say, so यहाँ पे maybe we can keep this weight on the ground or कुछ यूं. This arm will come over here. Can be relaxed, but it can be over here, and this arm will be relaxed in the starting, and you can keep it here. इसका head कुछ यहाँ पे होगा, and then maybe you can add a little bit of line of action over here, something like that, or maybe इस leg पे कुछ weight कुछ यूं होगा, and then this leg will be more relaxed kind of feel. So अगर हम उसको left से देखें तो the weight will be here, and then you will have nice like this foot can be forward and this foot can be backwards. ये थोड़ा सा पीछे की तरफ होगा, and then you can like lean body a little forward over here. यहाँ पे head होगा, and then this arm will go there, and this arm will be like this. We can improve this starting pose from here, and then we will go into our next pose. The upper body is nice over here. I can feel that like upper body is having a lot of anticipation. Body को आपने पीछे की तरफ rotate किया है. From here to here, body is going back and down. But I feel like we can add more life into legs. अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमें इसकी जो feet है overall, they are not feel like they are supporting the weight. तो यहाँ पे I will really try to fix this pose by maybe keeping this hammer over here, और इसकी body maybe यहाँ पे आएगी hammer, और इसकी body मज़ीद नीचे की तरफ जाएगी, maybe कुछ यूं, and then we can keep this arm over here. Maybe let's change the color. Maybe ये arm कुछ यहाँ पे आएगी, and then you can this arm will become down a little bit. Overall इसकी body नीचे की तरफ lean करेगी for anticipation pose. तो anticipation में असल में होता है क्या है, हम prepare करते हैं action के लिए. तो overall हमारा action कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे. This is one is the action. So this action we have to prepare that over here. So I feel like we really need to use our legs and all that to really do that. अगर हम इसको left side से देखें, then we can really push this pose. Hammer को maybe you can bring it over here, and then really use the lower body over here. I feel like it has potential to be used, and then you can use the upper body like this. This arm can come here, and then try to use lower body for that because it is too heavy. इसको उठाने your body can go down, or your feet can also spread out. Let's say we draw a line over here, and then this center of gravity has more span over here. Same for this pose. This pose is too flat because if we see that our center of gravity is very small. जो ही हम अपने feet को spread करेंगे, हमारा center of gravity ज़्यादा हो जाएगा. इसका मतलब है हम ज़्यादा weight carry कर सकते हैं in this pose. Like this is nice over here. यहाँ से भी you have like nice spread for the legs, but left sides पे हम लोग उसको मज़ीद spread कर सकते हैं. Okay, cool. So this pose need more exaggeration, and especially in the lower area. Okay, this one is nice, but I feel like the legs they are going too high up. तो बहुत ज़्यादा weight उसने carry किया है. The weight will try to stay back. जहाँ से वो चला था, like from here to here. Maybe the weight can be over here. Maybe let's redraw that. So this was our pose for anticipation, and then we have this pose. So यहाँ पे this hammer will try to stay here, and then maybe we can really exaggerate the line of action for the pose. So this leg will be over here, and this leg will be here. But overall body नीचे की तरफ ही रहेगी. We can really bend this guy. We can really bend this knee or leg like this. और body आगे की तरफ shift होगी maybe. And this elbow can be like this, like you have already. But this arm will be here, and maybe this head will be here. If we see from other angle,
we can see that from here कि यहाँ पे हम इसको exaggerate कर सकते हैं. तो body नीचे रहेगी and then we will have this push. This is a nice pose, but try to keep this weight lower over here. You can really exaggerate this line of action. This arm will be here and all that. Let's go to our other pose. This pose, yeah, this pose is nice, but we can really try to clear the silhouette over here. Right now, यहाँ पे I can see the hammer is over here, but we have to find better pose for the body overall. This arm is nice. This is clear. Head की position अच्छी है. I can feel that कि यहाँ पे we can clear this pose like this. So you can really rotate the hand and try to have nice pose over here. इसको rotate करके नीचे ले आएं like this. And same over here, man. Try to have this leg back there. और यहाँ पे एक leg में भी कुछ यहाँ पे होगी. So legs will spread like this, okay? Same from over here, like you can really try to spread the legs. One leg can be here, and you can clear the silhouette of the pose, especially this arm. I know it feels like it's broken. You can really work on this guy, this pose. Cool. So we came from this pose to that pose. अगर हम लोग इसके middle में जाएं, then we can find out के we can have like nice transition from that pose to that pose. So over here, your upper body will go first. यहाँ पे आपका foot यहाँ पे आएंगी, legs यहाँ पे होंगी, and then you can really try to have like hammer over here. तो उसके मुताबिक आप इसकी arms को adjust कर सकते हैं. तो वेट एंड पे आएगा. पहले आपकी बॉडी जाएगी, इस एंटिसिपेशन पोज से पुल करेगी, एंड देन द हैमर विल कम. ओके, सो हैमर विल बी लास्ट टू मूव. पहले बॉडी की ओवरऑल यू कैन एग्जैजरेट दैट. एंड सेम ओवर हियर, बिफोर दिस हैमर टचेस यू कैन रियली लीन योर बॉडी, ब्रिंग इट मे बी ओवर हियर, और ये हैमर कुछ यहाँ पे होगी, मे बी दिस वन arm could be here, दूसरी यहाँ पे है, and then your body is really lowered like this maybe. So your breakdown will be like this, and then you have this pose, this beautiful pose over here. यहाँ पे ये touch करेगी round से. You can have nice bounce in the hammer you already have. Okay, cool. What is next pose over here? This one is a little messy from this angle, so really try to fix this arm. इसको rotate करो, इस pose को अच्छा करो. Same pose we will have like before. कुछ इससे मिलता जुलता पोज होगा. I really like you anticipated this pickup for the hammer, which is nice. आपने यू स्टेप लिया and then you can fix this arm. इस आर्म को फिक्स करने के लिए you have to find a better way for constraint. Right now I feel like कि आपने directly इसको constrain किया हैमर के साथ, और आपके पास ऑप्शन नहीं है उसको रोटेट करने का. तो उसका बेस्ट ऑप्शन ये है कि आप इस कंट्रोलर को एक ग्रुप के अंदर डालें पहले. लाइक यू कैन सेलेक्ट दिस गाय, इट कुड बी अ ग्रुप, इट कुड बी अ लोकेटर. एक लोकेटर को लें और उसको अलाइन कर दें इसके साथ. ओके, हमने फाइंड आउट करना है कि इस आर्म को, इस हैंड को बेहतर तरीके से हम कंस्ट्रेन कैसे कर सकते हैं. तो आई ऑलरेडी क्रिएटेड अ ट्यूटोरियल फॉर यू इफ यू वांट टू वॉच दैट. इट विल टेल अस हाउ टू कंस्ट्रेन आवर हैंड विद एनी ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग अ बेटर मेथड. तो उस मेथड को यूज करके जब आप कंस्ट्रेन करेंगे, देन यू विल हैव फ्रीडम टू मूव दिस आर्म ओवर हियर. ओके, so try to watch that tutorial. It is super nice. This pose is very nice actually, but you can bring this elbow up maybe and really try to have this kind of nice pose, strong pose over here. अभी कुछ यूं आपका pose है जो which is very tense. If you see it from the left side, we have the same issue. So try to relax this pose, man. Rotate this guy like this maybe, and have this nice grip pose for this arm. The upper body is super nice. I feel like we can fix this leg right now because इस leg ने इस weight को carry करना है, so it should have nice pose over here. Right now it is too bended. तो यहाँ पे इसको हम कोशिश करेंगे कि bring that body up and really try to straight this leg over here because it has a lot of weight. और दूसरी टांग कुछ यूं होगी, यहाँ पे कुछ आएगी जब बॉडी आपके ऊपर आएगी. And same, this weight shift would be right. I really suggest you to have reference for that. But I feel like your upper body is nice, but
if you bring this leg down, अगर आपकी ये leg नीचे की तरफ आएगी over here, and from front side you can really bring this leg over here, and overall your body will be here and all that. You can lift your leg over here a little bit. Okay, इतना heavy weight carry करके weight shift करना is super hard thing to do, और उसके लिए आपकी mechanics अच्छी होनी चाहिए. Like over here, this leg is too hyperextended. We can fix that. Okay, cool, man. So this pose is nice. I like this pose, but same thing over here. You can really bring this hammer down. जैसे आपका starting pose था वैसे, and bring this guy over here. So this guy will try to pick up this hammer and then release that back there. Okay. इन key poses को improve करके we can really try to push the feeling of weight over here. I will highly recommend कि आप जो antic pose है और जो starting pose है, try to make that pose closer to each other. So let's say this is our antic pose. So let's say you want to make a starting pose from there. तो मैं recommend करूँगा you can go there and try to identify कि इस hammer की position क्या थी antic में, and try to keep the same position over here. And from starting pose to ending pose, you don't need to have a lot of movement, because this hammer is so heavy. Okay, so you cannot move this much. Right now this hammer is going up and down, and then it has weird kind of arc. तो ये कम से कम move करने की कोशिश करेगी this hammer. Your body will try to adjust itself accordingly. आप क्या करेंगे, body को adjust करेंगे इस hammer के मुताबिक. So let's say starting pose कुछ यूं था, and then you will adjust your feet and all that, your body, and then you try to find a nice antic pose, and from there you will have nice arc. यहाँ से यहाँ तक जाने का जो सफर है, it will be like this. आपकी spacing overall यहाँ पे slow होगी, ease out होगा slowly, it will come up, and then this will be a big spacing maybe from maybe here to here, and then you will have nice bounce. But overall body will follow this hammer. Like उसका जो line of action है, line of action क्या होता है? It will identify the direction of action for any pose. For this one, the line of action is over here like this. तो इसकी hammer कुछ यहाँ से यहाँ आ रही है, but he really trying to push that line of action. तो same for this line of action is over here. तो हम एक line draw करते हैं उसके feet से head की तरफ, and then we will find that like same over here, his line of action is over here. So this line of action will really sell the feeling of pulling that hammer. Okay, same this line of action, a single line can tell the story. Okay, this hammer like hit, you can have a good nice reaction in the body, like something like that. So we will have a lot of reaction in the body, because आपने काफी heavy चीज को आपने release किया है, तो उसका body reaction we can show that. I can see कि आपने यहाँ पे body को react नहीं किया. So everything will go forward, and then we will have overlapping action and follow through over here. So your body will try to come down, और उसके बाद अब maybe आपका head थोड़ा सा और नीचे आएगा, and then it will go back like this. Same for the arm. So maybe after a big hit, your arm has nice kind of wobble over here, weight को sell करने के लिए. And same over here, this is nice antic pose, but you can really push this line of action to maybe here. So and try to balance this thing. Okay, so maybe your arm will be here. Same, your line of action will try to go back, something like that. Maybe your arm will try to be here, and this arm will be here, and you are nicely well grounded on the feet. Okay, same over here, your line of action will be here. आपकी जो hammer है, it could be here for long, and then your head will be here, and then you can adjust your pose for this line of action. So one leg will be here, and then other will be here somewhere, but more straighter. The best way is to shoot a reference, because our mind will always try to manipulate things which are not real. So I will highly recommend to shoot your reference for this guy, man. So यहाँ पे आपकी hip थोड़ा सा आगे आएगी, maybe your hip will be here, your head could be there, and then you will have this nice grounded pose, something like that. And maybe you can create this a little bit more, hammer. And same over here, this pose is not balanced enough, तो हमने उसके feet को adjust किस तरह से करना है.
इसको हम बैलेंस कर सकें. I will feel like this line of action is over here, तो हम upper body is nice, it's already nice from here to here, but the lower leg you can adjust that, or you can go other way around, you can adjust your upper body. इसके feet के मुताबिक तुम you have to adjust that. So this leg is too far back, इसको थोड़ा सा आगे ले आओ, and this leg will be here, and this hammer can be here. So try to balance this pose over here. Yeah, same for this one as we discussed. This is not balanced enough. This one will be hard because like you have this leg to support, so you have to find a nice balance for the pose. So maybe you can lean back a little more. Maybe your leg could be here, but you have to lean onto this direction to have nice left and right balance in the pose. तो जो left side है और जो right side है, it should be equal to each other because right now this leg is supporting the weight overall, and then you can shift your weight from this leg to that leg after this leg is contacted with the ground, and you can maybe bring this hammer down because the weight is going into this leg, so maybe you can bring the body here. This hammer will come down. Super nice. Cool, man. Awesome job. Let's try to work on this, and then you can show me your next pass, and then we can have more feedback on that. Cool, man. Take care. Let's try to find feedback for this guy. Yeah, this pose is super nice, but maybe we can push a little bit more for the weight. Right now I can see this gap over here, so maybe we can lean the body more like this. इसको थोड़ा मज़ीद relax करते हैं, and then this arm will go down. His neck will be like this, more relaxed pose, and we will try to have nice contact position over here. I feel there is a gap, so try to have nice contact for the hand. This will have more weight. इसमें मज़ीद weight की feeling आ जाएगी by really pushing this line of action like this. Let's find out our next pose. I think you can cut that pose and keep this guy like this, and just use your head to look around maybe. So this guy will be like this here. So थोड़ा सा आगे की तरफ लीन करेगा, बॉडी हल्की सी लीन करेगी, नेक और हेड थोड़ा सा लीन करेगा. He will look around, but overall pose will be same like this. This one is a big move you have, और इसकी हमें ज़रूरत नहीं है. And from that pose you can come to this pose. This pose is nice, but we can really sell the weight over here. वेट को सेल करने के लिए हम लोग शोल्डर को यूज कर सकते हैं. ट्राई टू स्ट्रेट दिस आर्म. होता ही है कि जब हम किसी एक टांग पे वेट डालते हैं तो वो टांग स्ट्रेट रहने की कोशिश करती है. आर्म्स भी सेम है, जब हम उन पे वेट डालते हैं तो वो रियली ट्राई टू पुश आवर शोल्डर अप, और हमारी आर्म स्ट्रेट रहती हैं बिकॉज इट हैज़ लॉट ऑफ वेट. अगर हम उसको बेंड करेंगे तो वो वेट को सपोर्ट नहीं कर पाएंगी. तो वी हैव टू रियली ट्राई टू कीप दिस माइंड कि आपके शोल्डर ऊपर आएंगे. सेम फॉर दिस गाय ओवर हेयर, शोल्डर ऊपर आएंगे एंड दिस गाय विल सपोर्ट लाइक दिस. और मे बी इसकी जो चेस्ट है वो थोड़ी यूं स्ट्रेट होगी, और मे बी इसमें कुछ यूं कर्व होगा, उल्टा सी कर्व होगा. राइट नाउ आई कैन सी कि आपका सी कर्व कुछ यूं है, विच इज़ नाइस, बट यू कैन पुश दैट एंड ट्राई टू हैव दिस सी कर्व बिकॉज right now the body is really trying to anticipate and really try to take over the weight. Yeah, this is nice. Okay, let's go to our next pose. Yeah, this pose we have a same problem. The weight is not supported by our arms. We can push like this, the spine will be reverse C, the head will be here, तो हमें एक push की feel आएगी forward. And we have to keep the arm like this. We have to keep the arm straight.
शोल्डर थोड़े से रोटेट होंगे नीचे की तरफ, बट आर्म्स विल बी देयर, सेम फॉर दिस ओवर हियर। इसको स्ट्रेट रखो एंड देन ट्राई टू लिफ्ट योर वेट बाय यूजिंग दिस आर्म। जैसे हम लोग वेट को लिफ्ट करते हैं तो हमारी आर्म जो है वो सपोर्ट करती हैं, शोल्डर सपोर्ट करते हैं। सो वी हैव टू कीप इन माइंड कि जब हम बॉडी को उठाने लगे, लाइक दैट से मैं उसको उठा रहा हूँ फ्रॉम दिस चेयर, तो really have to struggle and I really have to take all my weight on this arm and shoulder। तो इन shoulders को मैं use कर सकता हूँ, like right now my shoulder are relaxed, but जैसे ही मैं इन पे weight डालता हूँ, you can see they are coming up and I am supporting my body with these arms। और ये tense हो गए हैं अभी, like पहले क्या थे, relaxed थे, now they are more tense, so you can really have that feeling। तो इन shoulders को हमेशा क्या करो, use करो and try to use your arms। जब भी कोई चीज weight लेती है, it should be tense, it cannot be relaxed। right now I can feel this, there is a tension a little bit but it is not that much, so we have to, because उसको push करना है standing position पे, so we have all the weight carried through from here to there। same for this one, I feel like you can try to bring your head up maybe and really push this part। you can rotate your hand right now like this maybe। तो जब वो push करेगा तो उसका hand भी rotate करेगा and then the fingers will be there to support that weight। तो जब तुम पीछे से hand को आगे की तरफ लेके आओ, try to bring that like this and have a weight, nice weight, एंड देन जब वो उसको पुश करेगा, ऊपर उठाएगा, कुछ इस तरह से रोल करेंगे हैंड्स, आपके फिंगर्स और ये सब ना, लाइक राइट नाउ यू कैन कीप द फिंगर्स लाइक दिस मे बी। इनको रोल करो प्रॉपरली, इसको स्ट्रेट रखो आर्म को। एंड फॉर चेस्ट बिकॉज ही इज पुशिंग फॉरवर्ड, तो ये इसका जो कर्व है कुछ यूं होगा। जब मैं यूं बैठा हूँ, रिलैक्स बैठा हूँ, तो मेरी स्पाइन का कर्व कुछ यूं होगा, सी कर्व होगा यूं उल्टा। इट विल नॉट लाइक दिस, यू कैन स्टिल हैव द बेंड। इसको हम अगर साइड से देखें तो इसमें इट विल बी नॉट लाइक दिस शेप, ये थोड़ा सा कुछ मे बी यूं होगा, थोड़ा सा बेंड होगा उसमें, बट ट्राई टू रोटेट इट लाइक दिस और मे बी ट्राई टू स्ट्रेट दैट आउट। एंड फ्रॉम हेयर टू हेयर really try to push that guy forward because उसको momentum मिला है, इसने push किया खुद को और उसकी body आगे की तरफ move करेगी। so maybe you can bring this over here maybe, और maybe इसकी neck कुछ यहाँ पे होगी, head यहाँ पे होगा, and you can swing your arm like you have like a pendulum movement, but pose wise they are nice, the arms are nice, but maybe you can push forward a little bit। तो होगा कुछ यूं कि like your body will get momentum from sitting position। यहाँ से जो आपने push किया था खुद को, आपने force लगाई थी बॉडी पे, push किया था, it have to go up and then settle over here। तो यहाँ पे वो बॉडी थोड़ा सा आगे जाएगी and then it will come back a little bit। तो यहाँ पे आपको maybe right now we are getting मे बी इसका जो पाथ ऑफ एक्शन है हिप का कुछ यूं होगा, सो मे बी इट विल कम अप स्लोली एंड देन इट विल सेटल डाउन लाइक दिस एंड कम बैक। तो इसका जो मोशन पाथ है या पाथ ऑफ एक्शन है कुछ यूं होगा, एंड देन यू कैन गो इनटू ग्राफ एडिटर और उसके जो जी एक्सिस है उस पर आप काम कर सकते हो। ग्राफ एडिटर में आप ये देखोगे कि लेट्स से कोई भी कर्व है, दिस इज 0 पॉइंट, तो यहाँ से कर्व जब शुरू होता है एंड देन इट विल कम डाउन, तो इसको बिल्कुल सडनली ना रोको। Try to maybe overshoot and then settle back and then have this kind of wave action in the graph editor, or maybe you can have a nice ease out from first pose and then the movement will start and then maybe it will ease out, या ये ease in करेगी last pose में। Always try to have time for that। Sometimes हम क्या करते हैं, हमारा ग्राफ एडिटर में व्यू फ्लैट होता है बिल्कुल, and then suddenly we will get this movement and then ये डाई कर देती है movement। तो always try to
अंडरस्टैंड मोमेंटम ऑफ द मोशन और उसको कैरी आउट करो, उसको कैरी फॉरवर्ड करो. Like over here our momentum is dying, so this pose will be over here, and then after that maybe for settle like you did for the arm. जैसे आपने आर्म को सेटल किया है, इसी तरह बॉडी भी सेटल करेगी, बॉडी में भी मूविंग होल्ड आएगा. सो अगर आप ग्राफ एडिटर में इसको चेक करोगे देन यू कैन फाइंड आउट इश्यूज. Right now your body is stucking over here. Okay, cool. Okay, let's try to find breakdown from here to here. So ये हमने कट कर दिया था, but let's say if you want to keep that pose. अभी क्या हो रहा है, ये जो आर्म ऊपर उठ रही है, आपको चेस्ट को इन्वॉल्व करना पड़ेगा. इट इज सुपर हार्ड टू ब्रिंग योर आर्म अप और इसको चेस्ट को इन्वॉल्व ना करें. सो वी हैव टू यूज आवर बॉडी टू ब्रिंग दैट अप. सो लेट्स से मेरी आर्म पीछे थी, आई विल यूज माई बॉडी, स्पाइन का ट्विस्ट ऐड किया और उसके बाद यू रखा उसको, और ये जो मोशन है ये सपोर्टेड होगी स्पाइन से या इसकी चेस्ट से. सो राइट नाउ आई कैन फील दैट कि आपने स्पाइन को यूज नहीं किया उतना. सो मे बी ये पोज कुछ यूं होगा कि आपका आर्म में भी यहाँ पे आएगा, योर चेस्ट विल बी रोटेटेड लाइक दिस, बट काउंटर बैलेंस करेगी इसकी हिप. सो मे बी यू विल हैव दिस काइंड ऑफ शेप ओवर हियर. काउंटर बैलेंस से क्या मुराद है? द मीनिंग ऑफ काउंटर बैलेंस इज लाइक if these are the shoulders and these are the hip, they always try to counterbalance each other. Let's say मेरी आर्म कुछ यूं थी, स्ट्रेट थी, let's say मैं ये आर्म ऊपर लेके आना चाहता हूँ, so this arm will go up, तो चेस्ट क्या करेगी, अपर चेस्ट इसको सपोर्ट करेगी, and then we will get this kind of hip rotation. hip कुछ यूं रोटेट करेगी and then we will get this counterbalance kind of feel. So same for the spine. अगर हम spine को left side से देखें तो let's say this is straight spine which is very hard to achieve. तो जब हम ऊपर से रोटेशन करेंगे बैक की तरफ spine को, तो हमें नीचे से यूं रोटेशन भी देनी है इस तरफ, to really counterbalance that. Same अगर हम forward spine आपकी bend करती है नीचे की तरफ, so we have to have some movement down there. Let's say कुछ यूं अगर हम लोग इसको ऊपर से रोटेट करते हैं स्पाइन को, तो हमें नीचे से कुछ रोटेशन चाहिए काउंटर बैलेंस करने के लिए. तो हमेशा माइंड में रखते हैं हम लोग काउंटर बैलेंस को, और आई ऑलवेज ट्राई टू सपोर्ट योर आर्म विद द स्पाइन, अपर स्पाइन, चेस्ट, एंड राइट नो द हेड एंड नेक दे वर्क टुगेदर. तो किसी भी एक्शन को सपोर्ट करते हैं हम लोग उसकी स्पाइन के साथ, एंड देन वी विल फॉलो द सेम पाथ ऑफ एक्शन फॉर हेड. सो इट कुड बी लाइन ऑफ एक्शन. तो लाइन ऑफ एक्शन को आइडेंटिफाई करने के लिए लेट्स से राइट नाउ द लाइन ऑफ एक्शन इज फॉर योर पोज इज लाइक दिस. लेट्स चेंज द कलर. Over here your line of action will be like this, so you have to really bend that line of action. और यहाँ पे your line of action will be maybe head can come down और उसको मजीद push करो कुछ यूं. After that I think this movement is like not supported. We have the same issue over here. यहाँ से यहाँ जो आपकी टांग आ रही है, the body, the spine is not supporting that. तो आर्म को क्या करेगा, आर्म को अपर बॉडी सपोर्ट करेगी, लेकिन जो लेग्स है उनको लोअर बॉडी सपोर्ट करेगी, हिप सपोर्ट करेगी. So we have to have some movement to support this kind of big move. I can see आपकी spine और आपकी जो hip है, it is not affected by that. इसको हमेशा you can get that. Let's say ये टांग it cannot go up like this until we have a rotation down there. और जब ये रोटेशन आएगी तो अपर बॉडी भी काउंटर बैलेंस उसको करेगी. Let's say we add रोटेशन, कुछ यूं हमने रोटेशन ऐड की तो काउंटर बैलेंस बॉडी ने कुछ यूं किया. Then we can lift this leg. अभी जो लेग को लिफ्ट करेंगे तो उसके पाँव का एक वेट है, उसकी जो लेग का अपना वेट है. सो डोंट ट्राई टू मूव देम लाइक स्ट्रेट, उसमें कुछ ओवरलैप की फील्ड ऐड करो. सो मे बी यू कैन रोटेट दिस फुट डाउन देयर, मे बी कुछ यूं रोटेट करेगा, मे बी इट कैन कम डाउन, रोटेट लाइक दिस, इस साइड पे
बैकवर्ड रोटेट करेगा मे बी। सेम फॉर द कॉन्टैक्ट पोजीशन, अभी बहुत बिल्कुल फ्लैट यूं नीचे आ रहा है पाँव, सो यू हैव टू फाइंड अ नाइस कॉन्टैक्ट ओवर हेयर। सो मे बी इसकी जो टिप है, टो टिप है, वो पहले टच करेगी, इसकी हील ऊपर रहेगी एंड देन द फुट विल कम डाउन आफ्टर दैट। ट्राई टू फाइंड द कॉन्टैक्ट पोजीशन एंड देन कम डाउन लाइक दिस। अभी उस चीज़ों को फ्लैट नहीं लेके आओ। सेम फॉर द आर्म, ये जो हैंड है ये भी स्ट्रेट आ रहे हैं, तो पहले टिप को ले आओ एंड देन ब्रिंग द अदर पार्ट, उसको रोल करो, और मे बी यू कैन ब्रिंग लाइक दिस, इट्स अप टू यू। ऑलवेज ट्राई टू ब्रेक दिस थिंग बिकॉज दीज गाइज हैव वेट। सो इसको कुछ यूं हैंड को रोटेट करो, इसकी जो फिंगर टिप है ये पहले आएगी एंड देन इट विल रोल लाइक दिस, और उसके बाद ये वेट कैरी करेगी इसके शोल्डर। सो ये एक रिपल एक इफेक्ट बनेगा, फिंगर से मूवमेंट शुरू होगी एंड देन इट विल गो अप लाइक दिस। आई थिंक वी डोंट नीड टू रोटेट दैट मच, सो यू कैन रियली try to squash over here and maybe this much is enough, don't go that further। यहाँ पे ये काफ़ी देर रुक रहा है, यहाँ पे जैसे एक वॉल से हिट किया उसने। जब हम रेफरेंस को स्टडी करेंगे तो हमें फीलिंग आएगी कि ये यूं हमने स्क्वाश किया था, उसके बाद हमने ऊपर की तरफ उसको पुश करना है, तो जो पुश में हमारा हेड लीड करेगा, हेड विल लीड एंड देन आवर बॉडी विल फॉलो। सो वी विल हैव दिस काइंड ऑफ रिवर्स शेप इन द बॉडी। So try to add that and you can have nice overlap in the head and neck maybe। So the head नीचे की तरफ rotate करेगा, these arm will try to stay back maybe। तो ये पेंडुलम की तरह मूव करती हैं आर्म्स, जैसे पेंडुलम की एनिमेशन होती है इसी तरह you can move them like a pendulum। तो ये जो अपर आर्म है ये पहले रोटेट करेगा and then lower arm will follow and then hand will go there। तो ये यूँ आगे जाएगा and then will come down और ये सेटल हो जाएगा इस तरह से। तो हमें कुछ पेंडुलम टाइप मूवमेंट मिलेगी आर्म के लिए। आई कैन सी दैट यू आर शिफ्टिंग फ्रॉम IK टू FK ओवर हेयर, डोंट डू दैट। अगर आप IK से FK में शिफ्ट करना चाहते हैं तो दिस इज द सेफ प्लेस ओवर हेयर। जैसे ही आपने इसको छोड़ा, नाउ यू कैन शिफ्ट इनटू FK मोड। आई कैन सी अ सडन जंप ओवर हेयर, यहाँ पे आपने इसको मूव किया है। Yeah, and try to add moving hold like I told you, like body थोड़ा सा forward जाएगी and then it will come back। पहले hip को animate कर लो and then you can add more animation over here। torso में animate करो, फिर neck और head में animate करो। so ये भी एक pendulum की तरह movement आएगी। तो पहले आपकी hip move करेगी and then chest will follow that and then neck will head and will follow। so you will get this nice overlap kind of feeling। so right now it is like rigid, it is not that much। so try to have all the overlaps over here, drag add करो, overlap add करो and you will be fine। timing wise अगर हम देखें तो you have very slow timing over here and then it is going back, it is slow। I will prefer try to follow the reference में देखो कि आपने क्या टाइमिंग यूज की, उसको फॉलो करो, उसको 100% फॉलो करो फर्स्ट टाइम and then later you can exaggerate that, you can push that, but फॉर स्टार्टिंग यू हैव टू फॉलो द रेफरेंस। उसमें फिजिकलिटी देखो, उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा एम्बेडेड है, हमारा माइंड खुद से चीज़ें क्रिएट करता है विच आर नॉट रियल, विच आर नॉट फिजिकल। तो हम रेफरेंस को फॉलो ज़रूर करें। सो ऑलवेज स्टिक विद दैट। ओके, दिस इज नाइस मूव यू हैव ओवर हियर। आई थिंक वी डोंट नीड दैट। जब ये बाजू यहाँ से यहाँ रखता है तो पहले एल्बो जाएगी एंड देन हैंड विल लिफ्ट, और उसके बाद में भी हैंड पहले जाएगा देन एल्बो विल फॉलो। सो वी हैव दिस काइंड ऑफ मूवमेंट। या सुपर नाइस मैन, आई रियली लाइक योर फर्स्ट पास। कीप वर्किंग ऑन दैट एंड डोंट स्टॉप। ट्राई टू पॉलिश दीज थिंग्स। सबसे पहले पोजेस पे काम कर लो। पोजेस शुड हैव वेट, उसमें वेट होना चाहिए, उनमें बैलेंस होना चाहिए। पोजेस को अच्छा करो एंड देन यू कैन गो इनटू ब्रेक डाउन्स और उनको बेहतर कर सकते हो एंड देन यू कैन गो टू द मूवमेंट एंड ऑल दैट। बट पोजेस के लिए स्पाइन को यूज करो, अच्छे से यूज करो। स्पाइन के पोजेस अच्छे होने चाहिए, हेड और नेक के पोज अच्छे होने चाहिए। द ओवरऑल लाइन ऑफ एक्शन शुड बी देयर। सो पोजेस को अच्छा करोगे, योर बेस विल बी फाइन।
जैसे बिल्डिंग की बेस स्ट्रांग होनी चाहिए, इसी तरह आपके जो एनिमेशन है उसकी उसकी पोजेस जो है वो दे आर द बेस ऑफ योर एनिमेशन. सो ऑलवेज ट्राई टू पुट एफर्ट ऑन दैट. उन पे टाइम लगाओ. डोंट जंप इनटू मूवमेंट येट, बट रियली ट्राई टू पुश योर पोज. उनको फील करो कि क्या वो अच्छे लग रहे हैं. दे हैव वेट, दे हैव बैलेंस, दे हैव गुड लाइन ऑफ एक्शन. और वो जो कैरेक्टर जो फीलिंग है उसकी वो कन्वे हो पा रही है उसमें, उसका एटीट्यूड कन्वे हो पा रहा है. सो रियली ट्राई टू पुश योर पोज मैन. And then you can go into more detail and you can go into movement and breakdowns and all that, which are secondary thing. अगर आपकी एनिमेशन में कुछ जग्स भी हैं, it is fine, but your poses should be super nice. poses पे कोई compromise नहीं है. Okay, आज के लिए इतना ही. Okay man, take care, best of luck. Hello friends, today I will review this animation over here. तो आइए शुरू करते हैं. Let's play this. Super nice. सबसे पहले देखते हैं इसकी ओवरऑल बॉडी की मूवमेंट, उसके बैलेंस को, उसका बैलेंस कैसा है. आई फील लाइक कि यहाँ पे हम लोग इसको मजीद बैलेंस कर सकते हैं. राइट नाउ इट्स फील लाइक कि वो पीछे की तरफ गिर सकता है शायद, क्योंकि इसकी टांगे कुछ यहाँ पे हैं. अगर इसका रेफरेंस देखा जाए तो इधर हमें ट्रायंगल की शेप नज़र आ रही है जो हमें बता रही है कि ये करैक्टर टोटली बैलेंस्ड है. लेकिन अगर इसको कंपेयर किया जाए एनिमेशन के साथ तो हमें नज़र आ रहा है कि इट फील लाइक कि वो पीछे की तरफ गिर जाएगा. बट ओवर हेयर यहाँ पे इसका जो ओवरऑल वेट है वो कैरी करेंगी ये टांगे. तो इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट कर सकते हैं. मे बी इस फुट को आप पीछे ले आओ थोड़ा सा. Really balance that one. This one is super nice because होता ये कि ये जो टांगे हैं ये लॉक हो जाती हैं, खुद को लॉक कर देती हैं जब वो टोटल उस पर वेट डालता है. तो अगर इसको रेफरेंस वाइज देखा जाए तो वी कैन नोटिस ओवर है कि ये कैसे स्ट्रेट हो गई है, ये लॉक हो गई है यहाँ पे आगे की तरफ, कुछ यूँ लॉक हो गई है. यहाँ पे आप नोटिस कर सकते हो कि ये उसका नी तो कुछ आगे की तरफ है और इस तरह से खुद को लॉक किया हुआ है. तो यहाँ पे हम ये चीज़ ऐड अप कर सकते हैं, इसकी लॉकिंग मैकेनिज्म को ऐड अप कर सकते हैं. सेम फॉर दिस वन. तो इसको थोड़ा सा हमें आगे शिफ्ट करना पड़ेगा और उसके बाद हमें कुछ यूँ शेप मिल जाएगी सेम लाइक अ रेफरेंस. जब ये पाँव यहाँ पे लेके आता है तो ये अचानक से इसकी टांग यूँ झटके से आगे की तरफ आ रही है और यहाँ पे रुक रही है ये वाली टांग. इस पे हम लोग काम कर सकते हैं. तो इसकी स्पेसिंग वाइज इसको इम्प्रूव हम कर सकते हैं. राइट नाउ इट इज़ मूविंग वेरी फास्ट और सडनली रुक जाती है यहाँ पे और फिर वो नीचे आता है. लेकिन अगर हम लोग रियल रेफरेंस को देखें तो इसमें ऐसा नहीं है. तो ये यहाँ पे हवा में नहीं रुक सकता. देयर शुड बी अ कॉन्टैक्ट पोजीशन ओवर हेयर. लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये काफ़ी देर यहाँ पे रुका रहता है. तो हमें कोशिश करनी है कि उसके वेट की डिस्ट्रीब्यूशन को माइंड में रखते हुए इसको मूव करें. ये फुट थोड़ा सा स्लाइड हो रहा है, यू कैन जस्ट लुक इनटू दैट. और जब हम इन टांगों को थोड़ा सा पॉलिश कर लेंगे तो उसके बाद हम इसकी हिप पे काम करना शुरू करेंगे. राइट नो इसकी जो ओवरऑल हिप है वो काफ़ी स्टिफ है यहाँ पे. तो यहाँ पे इसकी हिप ऊपर आएगी और ये पाँव पे वेट आएगा तो इसकी ओवरऑल ये वाला पार्ट थोड़ा सा नीचे आएगा. तो कुछ यूँ हमें ओवरऑल कर्व मिलेगा इसकी हिप का. ये बहुत ज़्यादा नहीं होगा बट मे बी इतना स्मूथ भी ना हो. इट कुड बी लाइक गोइंग अप and flat over here and then down, something like that. और जब ये यहाँ पे वेट रखता है उसके बाद इसको मज़ीद थोड़ा सा आगे ट्रैवल करना है खुद बैलेंस को मेंटेन करने के लिए. राइट नो इट फील लाइक इट्स स्टक ओवर हेयर. यू कैन नोटिस सेम थिंग ओवर हेयर कि यहाँ पे इसकी हिप की ओवरऑल रोटेशन मिल रही है इस डायरेक्शन में. प्लस ये अगर टॉप से देखें तो वो उस डायरेक्शन में भी ट्रांसलेट एक्स कह सकते हैं उसको, उस डायरेक्शन में भी मूव किया होगा ऊपर की तरफ. तो अभी ये ना रोटेशन वाइज हम चीज़ें ऐड कर सकते हैं ओवर हेयर. सेम यहाँ पे जब वो पाँव रखता है तो पाँव रखने के बाद भी वो थोड़ा सा नीचे आ रहा है और फिर वो ऊपर जाएगा थोड़ा सा और मज़ीद आगे की तरफ ट्रांसलेट भी हो रहा है. अभी तक ट्रांसलेट हो रहा है. यू कैन सी दैट कहीं पर रुक नहीं रहा और यहाँ पे वो आप
बहुत क्लोजली जब हिप को देखें तो यहाँ पे जब वो पाँव रखता है तो इधर ओवरऑल यू कैन सी अ लॉट ऑफ डिटेल विच इज मिसिंग इन योर एनिमेशन. इस एरिया में डिटेल चाहिए हमें. जब ये पाँव उठाएगा रखेगा तो ओवरऑल इसकी रोटेशन उसकी ट्रांसलेशन इफेक्ट करेगी. सेम फॉर द अपर बॉडी. अपर बॉडी में भी अभी चीज़ें रुक रही हैं और फिर आगे की तरफ जा रही हैं. लेट्स प्ले दिस नाउ. ओवर हेयर इट इज स्टक एंड देन उसके बाद आगे जाना शुरू हो जाता है. तो इस चीज़ को हम लोग डबल चेक कर सकते हैं रेफरेंस के थ्रू. तो यहाँ पे ओवरऑल यू कैन सी दैट देयर इज लॉट ऑफ अप एंड डाउन, अ लॉट ऑफ डिटेल विच इज मिसिंग इन आवर एनिमेशन. जैसे इस टांग पे वेट था तो ओवरऑल रोटेशन मिल रही है यहाँ पे भी. और उसके बाद यहाँ पे आया और वी कैन सी कि कॉन्टैक्ट के बाद बॉडी उसकी नीचे जा रही है और यहाँ पर रोटेशन वाइज भी चीज़ें ऐड अप हो रही हैं. और उसके बाद इस टांग पे वेट जाता है एंड देन वो मज़ीद नीचे आ रहा है और उसके बाद ये पाँव उठाता है और उसके बाद रखता है. तो हम यहाँ पे डिटेल देख सकते हैं काफ़ी ज़्यादा. बट इन आवर एनिमेशन there is room to add that over here. You can see this part is not having much detail. अब आ जाते हैं उसकी ओवरऑल स्पाइन की बात करते हैं. लाइक यहाँ पे अगर हम स्पाइन को देखें रेफरेंस में तो इसमें काफ़ी ज़्यादा ओवरऑल शेप में चेंजेस आ रहे हैं. लेट्स प्ले दिस. इट इज़ गोइंग डाउन एंड देन गोइंग अप एंड देन डाउन. और यहाँ पे काफ़ी डिटेल है जो हमारी एनिमेशन में यहाँ पे मिसिंग है. इफ़ यू सी दिस पार्ट देयर इज़ नॉट मच डिटेल. कोई इसका शेप चेंज नहीं, हल्का सा आपने ऐड किया है बट इट इज़ नॉट इनफ. और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि बिकॉज दिस स्पाइन इज कनेक्टेड विद द हेड, तो जो हेड की मूवमेंट है वो इफेक्ट करेगी ओवरऑल स्पाइन की मूवमेंट को. और जो भी हेड में मूवमेंट आएगी उसको हम लोग आगे की तरफ कैरी थ्रू करेंगे, यहाँ तक लेके आएंगे. यू कैन सी ओवर हेयर उसकी हेड की मूवमेंट के साथ यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा डिटेल आ रही है. जब हेड रोटेट करता है दूसरी तरफ तो कंपनसेट कर रही है बॉडी उसकी मूवमेंट को, बिकॉज इट इज़ अ बिग थिंग, ह्यूज थिंग. तो उसकी जो ओवरऑल जो वेट है वो कैरी करेगी इसकी बॉडी उसको बैलेंस करने के लिए. तो जब वो यू रोटेट करता है तो ओवरऑल बॉडी इस पाँव पे वेट डाल रही है और जब वो इधर आता है तो इस टांग पे वेट आता है उसका. यू कैन सी दैट ओवर हेयर बिकॉज दिस इज सुपर हैवी थिंग. और यहाँ पे जो ट्रंक है इसका इट इज़ ऑल्सो लॉट ऑफ मसल्स ओवर हेयर. तो उसको कैरी करना है इन टांगों ने. नीचे हेड आ रहा है तो बॉडी भी थोड़ा सा आगे लीन कर रही है उसको बैलेंस करने के लिए. सेम ओवर हेयर. जब हेड ऊपर आ रहा है तो यहाँ पे हमें इफेक्ट मिल रहा है ओवरऑल बॉडी में. लेट्स गो टू नेक्स्ट पार्ट. ट्रंक की मूवमेंट को अगर देखें तो इट्स फील्स लाइक तुमने पोजेस वगैरह को डाल दिया है बट देयर इज नॉट फीलिंग ओवर देयर. फीलिंग से मुराद ये है कि लाइक इसका ट्रंक आगे की तरफ आता है, इसने उधर देखा, यूं कुछ किया उसने और यहाँ पे लग रहा है कि वो कुछ पकड़ रहा है, पीछे फेंक रहा है. बट बिफोर दैट you can really polish the overall timing and overall feeling of this trunk. इसके अलावा हम कनेक्शन वाइज देखेंगे. कनेक्शन वाइज इसकी चीज़ें कुछ मिसिंग है. लाइक दीज थिंग्स दे शुड बी कनेक्टेड टू ईच अदर. ये मसल्स हैं तो अगर इस मसल को ट्रिगर करना है तो ओवरऑल इफेक्ट हमें डालना पड़ेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा. लाइक इन द रेफरेंस में सुपर क्लियर है कि ये देखो स्पेशली ये एरिया इट इज सुपर इंपॉर्टेंट. लाइक ये जो मूवमेंट है वी कैन क्लियरली सी दैट कि उसने मिट्टी को पकड़ा, डस्ट को पकड़ यूं फेंका उसने और उसके बाद वो स्विंग बैक की उसकी और वहां पे दोबारा उसने पकड़ा और यूं फेंका. तो ये फीलिंग वी कैन सी दैट ओवर हेयर. ये ओवरऑल फ्लेक्सिबिलिटी जो हमें नजर आ रही है यहाँ पे it is missing over here. I know it is super hard to really animate this thing, but यहाँ पे especially इस part में there is a lot of jitteriness in that trunk area. तो इसको you can really polish that part.
The trunk is super hard, I know. This one is nice. यहाँ से यूं आ रहा है और यहाँ पे your trunk is not working together. तो उसको हम लोग रेफरेंस में स्टडी कर सकते हैं कि यहाँ पे कैसे मूव कर रहा है. जब वो उसको पीछे की तरफ फेंक रहा है, यू कैन सी दैट कि यहाँ पे मसल उसके ट्रिगर हुए हैं, जिसकी वजह से वो ये नीचे वाली मूवमेंट कर पा रहा है. Yeah, this part over here. But yeah, it is super hard to really get that feeling. You can maybe add a little bit of tension over here before he throws the dust. और यहाँ पे हम लोग ओवरऑल इसको कनेक्शन की फील दे सकते हैं. It is super hard, and you already did super awesome job. इसमें बस थोड़ा सा कनेक्शन ऐड कर लो, पॉलिश करो इसको थोड़ा सा मजीद, इसमें वो फीलिंग ऐड करो जो हम लोग रेफरेंस में देख पा रहे हैं. अब हम बात करते हैं इसके ईयर्स की. दे आर ऑलरेडी लुकिंग मच बेटर. कुछ जगहों पे हम लोग काम कर सकते हैं, वो हेड की मूवमेंट के साथ साथ मूव कर रहे हैं. तो ऑलवेज ट्राई टू ऑफसेट दीज थिंग. राइट नाउ द हेड इज मूविंग अप और उसके साथ बिल्कुल लकड़ी की तरह वो उसका ईयर भी मूव कर रहा है. तो उसमें हल्का सा ऑफसेट डाल दो, ग्रेविटी की फील डाल दो, सॉफ्टनेस डाल दो थोड़ी सी. इफ यू प्ले दिस रेफरेंस, या देयर इज लॉट ऑफ सॉफ्टनेस ओवर हियर. और हेड की मूवमेंट और ईयर की मूवमेंट आपस में ऑफसेट है, वो 1-to-1 मूव नहीं कर रहे. And also you can see there is like this shape going on. Same over here. यहाँ पे कुछ यूं शेप नजर आ रही है इसकी. बट यहाँ पे हमें मे बी ये वाला पार्ट हम थोड़ा सा नीचे ले आएंगे तो हमें वो वाली शेप मिल जाएगी जो हम चाह रहे हैं. तो ये हमें ग्रेविटी की फील देगी. हेड की मूवमेंट को देखा जाए, यू कैन रियली पॉलिश दैट राइट नाउ. इट फील लाइक अ लिटिल फ्लोटी. यहाँ पे रुक रहा है. डोंट फील ऑर्गेनिक ओवर हेयर. तो कनेक्शन की कमी है, बट यू कैन रियली पॉलिश दिस थिंग. लाइक जब हेड की मूवमेंट होगी तो उसकी नेक इन्वॉल्व होगी, उसकी जो चेस्ट है उसमें हल्का सा इफेक्ट आएगा, उसकी स्पाइन में इफेक्ट आएगा. या यू कैन सी ओवर हियर मैन, ये वेट की फीलिंग ना बहुत मुश्किल है ऐड करना. बट लाइक यहाँ पे ये जो चीज़ है यूं ऊपर गया फिर नीचे आया और ये ओवरऑल नेक को इन्वॉल्व किया. यहाँ पे कैन रियली सी दिस वेट इज शिफ्टिंग फ्रॉम हेयर टू हेयर. एंड ओवर हेयर लाइक यहाँ जब हेड नीचे आ रहा है तो कोई इफेक्ट नहीं है यहाँ पे. तुम इस कनेक्शन को सेल कर सकते हो, हेड के, नेक के और इसकी चेस्ट के कनेक्शन को. लेट्स टॉक अबाउट द टेल. टेल में काफी ज्यादा पॉलिश की भी जरूरत है. I think you can really study the arcs of the tip over here. Tail अपना काम कर रही है. You can see that the timing is super nice over here. Beautiful timing over here. Pendulum की तरह मूव कर रही है. यहाँ पे देखो मूवमेंट, एक्स्ट्रा मूवमेंट आ रही है इस पार्ट में टेल की मूवमेंट के साथ. But over here, I think you already added something, but it is not working together. So you can really work on this part. Also, यहाँ पे जो मज़ीद डिटेल की चीज़ें में तुम काम कर सकते हो. लाइक जो ही इसकी टांग आगे गई, you can see over here यहाँ पे हल्की सी वॉबलीनेस है, उसको तुम देख सकते हो. इसके स्टमक को तुम एनिमेट कर सकते हो उसकी मूवमेंट के साथ. You can see there is lot of movement, especially यहाँ पे पाँव रखता है. There is lot of jiggliness, softness, rotation. We can work on that one. Yeah, you add a little bit, but not enough, maybe. शुरू वाला पार्ट कदरे बेहतर है, बट एंड पे बिल्कुल ये वाला पार्ट डेड हो गया. तो इसको तुम इन्वॉल्व करने की कोशिश कर सकते हो. ओवरऑल हेड की मूवमेंट और उसका रिएक्शन और उसका फॉलो थ्रू, everything should be connected with each other.
Yeah, I feel like the head need a lot of attention, lot of detail, weight की feeling add करो, और उसकी eyes में maybe you can add a little bit of personality. Right now the personality is missing, but dead लग रही हैं इसकी आंखें ना. I don't know कि वहाँ पे कुछ है या नहीं है, और I don't know कि इसके mouth में controller है या नहीं है. Maybe we can add a little soft kind of feeling in the mouth too, अगर हम लोग add कर सकें तो. But yeah, overall it is looking super nice. The polish part is super hard actually, but इसी में मज़ा है. हम लोग फिजिकलिटी को ओवरऑल देखते हुए देखते हैं कि कौन सी चीज़ हम कहाँ पे ऐड कर सकते हैं, कौन सी चीज़ कनेक्टेड है, इसमें जिगलीनेस ऐड कर सकते हैं, इसमें कनेक्शन की फील ऐड कर सकते हैं, और कौन सा पार्ट क्या इफेक्ट करेगा. तो ओवरऑल थिंग इज द कनेक्टिविटी ऑफ एवरीथिंग. तो उस पर काम कर सकते हैं. अभी ट्रंक की मूवमेंट बहुत अच्छी लग रही है, बट देयर शुड बी अ फीलिंग ओवर देयर. उस फीलिंग को हम लोग ऐड कर सकते हैं, और हम लोग काम कर सकते हैं उसकी फिजिकलिटी पे ओवरऑल. बट यस, ओवरऑल इट इज़ सुपर ऑसम पीस. पे मज़ीद काम करते जाओ, इसको मज़ीद इम्प्रूव करो, पॉलिश करो इसको यहाँ पे नहीं छोड़ना. इसको मज़ीद पॉलिश करना है.